At the Samarkand summit, the presidency of the SCO will be handed over to India for the next year till September 2023. New Delhi will most likely host the next SCO summit. This is the first time after 2020 COVID pandemic that Prime Minister Modi, his Pakistani counterpart Shehbaz Sharif, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the two-day summit in person. Bureau Report, Republic TV. Prime Minister Narendra Modi arrived in Uzbekistan, Samarkand, to attend the Shanghai Cooperation Organization, the SCO Summit, which is set to deliberate on regional security challenges, boosting trade and energy supplies, among many other issues. The SCO is holding its first in-person summit in Samarkand in Uzbekistan after 2 years. The summit will also see the participation of Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. PM Modi is also expected to hold bilateral meetings on the sidelines of the summit, including with Putin and Uzbek President, among other leaders. Though there is no confirmation over his possible bilateral with Xi Jinping. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is also attending the summit. The summit is taking place amid the growing geopolitical turmoil largely triggered by the Russian invasion of Ukraine and Chinese aggressive military posturing in the Taiwan Strait. According to reports in Russian and Iranian media, PM Modi will hold separate bilateral meetings with Putin and Iranian President Ibrahim Raisi. The SCO summit will have 2 sessions, one restricted session which is only meant for the SCO member states, and then there will be an extended session that is likely to see the participation of the observers and the special invitees of the chair countries. This year's summit is set to deliberate on regional security challenges, boosting trade and energy supplies, among other issues. Agency Report, Republic TV. Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrived in Uzbekistan to take part in a meeting of the 8-nation Shanghai Cooperation Organization. Erdogan will be joining Chinese President Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin, and leaders from India and Central Asia. According to sources, the organization is a security group formed by Beijing and Moscow as a counterweight to US influence. Russian President Vladimir Putin met with leaders from Central Asia and Iran in Uzbekistan. The bilateral meetings come as delegates gathered for a summit of a security group formed by Beijing and Moscow as a counterweight to US influence. During the meet, Putin was hoping to break through his international isolation and further cement his ties with Chinese President Xi Jinping in a geopolitical alliance. President Joe Biden announced that a tentative railway labor agreement has been reached, averting a nationwide strike that could have been devastating for the economy before the pivotal midterm elections. According to sources, railroads and union representatives had negotiations for 20 hours at the Labor Department to hammer out a deal, as there was the risk of a strike starting on Friday that could have shut down rail lines across the country. It's a great deal for both sides, in my view. The agreement is also a victory for railway companies. And I want to thank the lead negotiators from the National Railway Labor Conference and our major rail companies. These companies also played a critical role in keeping America moving during the pandemic, and that's not hyperbole, it's a fact. With this agreement, railroad companies will be able to retain and recruit workers. They'll be able to continue to operate effectively as a vital piece of our economy. The European Union's executive arm has proposed a new legislation that would force manufacturers to ensure that devices connected to the internet meet cybersecurity standards, aiming to make the 27-nation bloc less vulnerable to attacks. According to EU data, a ransomware attack takes place every 11 seconds. It further added that the law, proposed to be called the Cyber Resilience Act, aims at taking off the EU market products with digital elements that are not well enough protected.
Typhoon Muifa, the 12th tropical storm this year, landed on China's Xinjiang province of Zhoushan city. Sources say that while Xinjiang province on China's eastern coast has ordered ships to return to port, thousands of fishing boats left their anchorage after landfall. Spain's Congress of Deputies voted in favor of Sweden and Finland's entry into the North Atlantic Treaty Organization, NATO, in Madrid. Here are the details. Spain's Congress of Deputies voted in favor of Sweden and Finland's entry into the North Atlantic Treaty Organization in Madrid. After a single reading of the debate, 290 MPs voted in favor of the bill, 11 voted against and 47 abstained. Votación directa y en lectura única de los convenios internacionales. Votación de conjunto del protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión del Reino de Suecia, hecho en Bruselas el 5 de julio de 2022 por tramitarse en lectura única. It will now go to the Senate, where it will be debated and ratified if approved. Spain now joins a number of NATO members to have ratified Sweden's and Finland's accession to the alliance. On September 9th, NATO Secretary General Jens Stoltenberg announced that 24 of the 30 members of the alliance had ratified the protocol on Finland and Sweden's accession to NATO. Agency report, Republic TV. And in sports, it's the end of an era as tennis legend Roger Federer announces his retirement. All the details coming up here on World This Morning. Stay with us. And in Pakistan, houses have been washed away. People are being seen to be in despair as floods wreak havoc. The US has sent 10 missions to aid the flood-devastated nation. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/globalstudy. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया. यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Welcome back to the world this morning. News now about the United States, which has said it has flown 10 missions into Pakistan to deliver over 1 million pounds of critical humanitarian supplies and equipment to the people devastated there in Pakistan by floods. Here's more. The US has said that it has flown 10 missions into Pakistan. The missions were sent to deliver 1 million pounds of critical humanitarian supplies and equipment to Pakistani people affected by the flood. The rain triggered catastrophic flooding that has killed nearly 1,400 people and washed away about 2 million homes and destroyed over 4 million acres of farmland. Miles of cotton and sugarcane crops, banana orchards, and vegetable fields could be seen submerged in floodwaters. Thousands of mud and brick homes caved in under the deluge, leaving people homeless and sheltering into tents alongside damaged roads. The Department of Defense is in support of the US Agency for International Development's efforts to provide assistance to Pakistan in the wake of massive flooding and the humanitarian assistance crisis there. Humanitarian relief supplies were transported, which includes emergency food, drinking water, sanitation supplies and equipment, portable shelters, bedding, hygiene supplies and kitchen sets. 2 more US military planes loaded with tons of aid for Pakistanis affected by flooding from deadly monsoon rains landed on Sunday in southern Sindh province, one of the worst affected regions in the impoverished country. Saifullah, the spokesman of the country's civil aviation authority, said that each plane was loaded with about 35 tons of relief aid that would be distributed in the province by the World Food Programme. The aircraft landed at Crore airport in Sindh, and Ullah said that the US operation that began Thursday would continue until September 16th. Pakistan has suffered under extremely heavy monsoon rains that started early this year in mid-June. Multiple officials and experts have blamed the rain and resulting floodwaters on climate change. UN Secretary General Antonio last week called on the world to stop sleepwalking through the dangerous environmental crisis. He has called repeatedly on the international community to send massive amounts of aid to Pakistan. Ullah said that 2 more flights bringing relief goods from the United Arab Emirates landed at Karachi airport. So far, UN agencies and several other countries have sent multiple plane loads of aid, and authorities say that UAE has been one of the most generous contributors. Pakistan's military chief General Qamar Javed Bajwa took stock of the badly affected district of Dadu in Sindh and its surrounding on Saturday. Dadu could suffer further flooding from the rising waters of the Indus River. He said constructing dams would help reduce electricity, curb pollution and decrease global warming, and that army engineers have been asked to conduct an initial study.
Since June, heavy rains and flooding have added a new level of grief to cash-strapped Pakistan and highlighted the disproportionate effect of climate change on impoverished populations. Agency Report, Republic TV. Twenty times Grand Slam champion Roger Federer announced his decision to retire from professional tennis, making several of his fans emotional. Fans have long since hailed him as the greatest ever player to grace the sport. Here's more. 20-time Grand Slam champion and tennis icon Roger Federer shocked the tennis world as he announced his retirement from the sport. Federer took to his official Twitter handle to issue a statement where he dubbed the announcement of his retirement as a bittersweet decision. Roger Federer has announced that his final professional tournament will be the 2022 Laver Cup in London. The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me, but at the same time, there is so much to celebrate. As soon as the tennis maestro announced his decision, sporting greats and fans flooded social media. His fans hailed him as the greatest ever player to grace the sport. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you. Roger Federer's longtime rival and friend Rafael Nadal also gave an amazing tribute to the 20-time Grand Slam champion. Taking to social media, Rafael Nadal wrote, and I quote, "A sad day for me personally and for sports around the world. It's been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you." Federer is one of the most successful men's players in the history of the sport, having won a whopping 20 Grand Slam titles in his career. The former world number one has a record 8 men's singles Wimbledon titles, 6 Australian Open titles, 5 US Open titles and 1 French Open title to his name. As Federer retires, the all-time Grand Slam record now has become a two-man fight between Novak Djokovic and Rafael Nadal. Roger Federer's decision to retire certainly means the end of an era that began in 2003 when the Swiss maestro broke onto the scene by winning his first Grand Slam title at Wimbledon. Agency Report, Republic TV. Time for a short break. That's all we have for you in the world this morning. Coming up after the break in the Morning Express, Delhi Liquor Gate explodes, ED to interrogate jailed AAP Minister Satyendra Jain. Also coming up, Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand. Regional security challenges, trade and energy top the focus for India. Bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में।
6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Jinping Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Jinping Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers there staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ It's time for the 3rd edition of the prestigious Ram Jethmalani Memorial Lecture. The biggest names on the most esteemed forum. Watch the unmissable Ram Jethmalani Memorial Lecture on September 17th only on Republic TV. Big focus on security, politics and economics at the SCO Summit 2020. Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand. Big bilaterals are lined up. The Delhi liquor gate explodes. ED to interrogate jail Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain. Tennis legend Roger Federer announces his retirement. Fans share heartfelt notes, said tennis won't be the same. And it's the nation's first countdown for the much anticipated Our Bharat Summit. Good morning and welcome. You are watching the Morning Express on Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. A day after 2 Dalit sisters were found hanging from a tree in Lakhimpur Kheri district of Uttar Pradesh, the National Commission for Protection of Child Rights took cognizance of the incident. The NCPCR chairperson Priyank Kanganu has said that the gruesome act should not have a place in any society. In a shocking incident reported from Uttar Pradesh, 2 minor Dalit girls were found hanging on a tree outside a village in Lakhimpur Kheri on Wednesday after being allegedly gang raped. इसी पेड़ पर इन दोनों जो लड़कियों को है मारकर लटकाया गया था और इसी पेड़ पर जो है वहां पर तकरीबन शाम के 4 बजे का वक्त था जब पुलिस यहां पर पहुंचती है और इस पूरे जगह का जो है वो मुआयना करती है, शवों को अपने कब्जे में लेती है। The Lakhimpur SP shared shocking details of the gruesome incident. उसके बाद इन लोगों ने कल बहला फुसला के इन लड़कियों को लेके गए हैं गन्ने के खेत में। वहाँ इनके साथ इन लोगों ने इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए हैं। The post-mortem report of the 2 minor sisters confirmed the cause of death as asphyxia due to ante-mortem strangulation. The report also confirmed rape before they were strangulated and killed. The father of the deceased minor girls demanded stern action against the accused who brutally killed his daughters.
इंसाफ होना चाहिए, उनकी फांसी की सजा होनी चाहिए बस। The Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government has assured the family strict action will be taken against the culprits. लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है। सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक व्यक्ति को मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी है। हम पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट दाखिल होगी। पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे और शीघ्र से शीघ्र न्याय मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। The Uttar Pradesh ADG Law and Order Prashant Kumar provided details of the progress in the Lakhimpur Kheri double murder case. सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए। The National Commission for Protection of Child Rights also took cognizance of the case. और इस तरीके के कृत्य करने वाले अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए। हमने अपने राज्य बाल आयोग से बात की है। राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष महोदय ने ये अवगत कराया है कि वहाँ पे सभी जो आरोपी थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और बड़ी त्वरित कार्रवाई उन्होंने की है। Within 24 hours, all accused Chotu, Junaid, Sohail, Hafizul, Karimuddin and Arif have been arrested. Meanwhile, further investigation into this heinous crime is underway. Bureau Report, Republic TV. Well, we're now getting an update in the 200 crore Punjab irrigation scam. The Punjab Chief Minister has given permission for a probe to be conducted against 2 ex-ministers and 3 former IAS officers. So, trouble seeming to mount for the Akali Dal ministers. The former Chief Secretary and 2 former IAS officers will now be probed. The 2 former ministers, of course, are Janmeja Singh Sekho and Sharanjit Singh Dhillon of the Shiromani Akali Dal. Now, just to give our viewers a bit of a backgrounder into this, it was in 2017 with the arrest of the contractor who went by the name of Gurinder, who then revealed that these ministers and bureaucrats were also involved. Amandeep is reporting on this. He now joins us. Good morning, Amandeep. Give us more details in terms of the action that we are seeing now. Well, Nupur, the point is that this FIR was registered in 2017, and in fact, after the interrogation of contractor Gurinder Singh, the names of 2 ministers and 3 IAS officers, including former Chief Secretary Sarvesh Kaushal and 2 other secretaries. And in fact, since then, the vigilance has prepared a file against these 2 ex-ministers as well as former IAS officers, and in fact, sent to the Punjab Chief Minister for the prosecution. But now, Punjab Chief Minister has given the nod to Punjab Vigilance Bureau to proceed with the further investigation with these 5 names, just because whenever the ex-minister or former IAS officers supposed to be join the investigation or to be named in the investigation, a CM prosecution sanction is very much necessary. So now that nod has been given to the vigilance to investigate the role of these 2 ex-ministers of Akali Dal, including Sharanjit Singh Dhillon and Janmeja Singh Sekho, and 3 former IAS officers, former Chief Secretary Sarvesh Kaushal, former Special Secretary KBS Sidhu and Secretary Kansing Pannu. They all were into the Irrigation Department and PW Department when the entire scam was happened during the tenure of Akali Dal government from 2007 to 2017. And since Congress came into power, they have registered the FIR, and now Aam Aadmi Party came into the power, they have given the nod to investigate against 2 ex-ministers of Akali Dal. So it is a trouble mounting situation. Basically, it is a 1200 crore scam of Irrigation Department, which is actually reveals that how the bogus contracts has been given by favoring contractor Gurinder. Crores of the contracts has been given to only contractor Gurinder by flouting all the norms, and even that amounts to 1200 crore. So this is how now the entire scam is unfolding. But yes, a trouble mounting situation for the Akali Dal ministers as well as former bureaucrats. Now vigilance will ask them to join the investigation and further their role will be probed. Yes. All right, Amandeep reporting on that, joining us from Chandigarh. Thank you very much. So as Amandeep is pointing out, trouble mounting, of course, for those 2 former ministers and 3 IAS officers who will now be probed in the irrigation scam.
Now, shortly after 8 out of 11 Congress MLAs in Goa jumped ship to join the BJP, the Chief Minister of Goa, Pramod Sawant, gave his first interview to Republic TV. He said that it was Prime Minister Modi's influence that was the reason for the MLAs to join the Saffron Party. What kind of mantra you have been preaching out here in Goa that from 11, now it's 8 MLA of Congress Party are joining BJP? I'll say the development mantra in the Goa. Under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, the double engine Sarkar, Bharatiya Janata Party Sarkar is doing the very well development in the state of Goa, so that the Congress 8 MLA, they have approached me and my central party and they are ready to join the Bharatiya Janata Party. So definitely we welcome them into the Bharatiya Janata Party, and yesterday morning the 8 of them have joined for the development of the state of the Goa to the Bharatiya Janata Party. So this is not the first time that it is happening. Before this, in the past also, there were several MLAs from Congress Party who supported in fact BJP and in fact later joined Bharatiya Janata Party. So don't you think these people get elected in fact against BJP? The people vote them against BJP and they joining Bharatiya Janata Party. Isn't it a betrayal of democracy? I'll say their wish for the development of their constituency, development of the state of the Goa. So when we are doing this much developmental work, which not had done for the last many years, so they have thought that only the way forward is the BJP, only the way forward is the double engine Sarkar in the Goa. So they joined the Bharatiya Janata Party. Now recently, your party chief, National Party Chief, Mr. JP Nadda had stated that we will discover all the state, in fact, and BJP will be conquering all the state. So is this a start? In fact, after Maharashtra, is this the start in Goa? No, I'll say in the Goa, the Congress Chodo Andolan had started from the state of the Goa. As you know, there are the few leaders have left in the Congress now, and the leader, Mr. Rahul Gandhi, is moving for the Bharat Jodo Andolan. And their own ex-chief minister, Mr. Digambar Kamath, and rest, all the senior leaders from the Congress have started the Congress Chodo Andolan from the state of Goa. This Congress Chodo Andolan will go all over the India, and rest all the Karyakartas will also join to the Bharatiya Janata Party or otherwise other national party in the national interest. But the question out here is, you mentioned about Digambar Kamath. Digambar Kamath and all the MLAs who were in fact fighting elections against BJP recently took in fact they swear in before Jesus Christ and several temples that they, on any cause they won't support BJP, neither they will join BJP. So what you done? What have you done that they have in fact forgotten all their promises and the oath they took before Jesus Christ or the gods? I not did anything. Just I'll say the development is the way forward. You can ask this for them only. No, but the question is, don't you think this is in fact betrayal to your party also? Because there are several, these are the people who won against Bharatiya Janata Party candidates. So how will you, convince your party members? Isn't it, taking away their rights and giving it to them? Bharatiya Janata Party is a national party. And those who are coming in the interest of the state, in the interest of the nation, for them we are welcoming. So definitely on the same line, these 8 MLA had asked me, we are ready to join for the BJP, we have welcomed them. What kind of deals have happened? Backdoor deals are something that, what kind of... nothing. I'll again say, without any conditions, they have joined Bharatiya Janata Party. And definitely they'll support me also in the state. And Honorable Prime Minister's vision of New India formation to support for the development of the Goa, they have joined the Bharatiya Janata Party. But the question is, will they be given any kind of post in cabinet? No, till now it is not finalized, not decided anything. They have joined unconditional. So no one will be given anything, that's what you're saying? At present, nothing is decided. Okay, but in future, you may think... With this consultation with the my central leadership, the decision will be taken.
All right, here's a look at what else is making news this morning. Prime Minister Modi is set to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit, which will deliberate upon regional security challenges, boosting trade and energy supplies, among other issues. The SCO is holding its first in-person summit in Samarkand in Uzbekistan after nearly 2 years. The Delhi police has grilled Nora Fatehi for 6 hours in connection with Sukesh Chandrasekhar extortion case. The actor was summoned for the second time for questioning along with Pinky Irani. The special CBI court judge Geetanjali Goyal has given the nod to the ED to quiz Delhi Health Minister Satyendra Jain inside the prison in the liquor scam. This comes after the ED had sought 3 dates to question him in the scam. Months after being passed in the Karnataka Legislative Assembly, the Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021, also known as the Anti-Conversion Bill, was passed in the Legislative Council. The bill was passed despite the opposition's attempt to block it. Following this, the Congress party has staged a walkout. Conversion in the state. We are not restricting anybody who voluntarily takes up any religion on his own, for which he has to give an application before DC, he has to make a statement before DC voluntarily. If forcible conversion is made, if some complaints are received, we are going to take action. Otherwise, there will be no restriction for a man to change his religion on his own. The Supreme Court will hear the demand for a CBI inquiry into the brutal killing of sadhus in Palghar. Earlier, the Maharashtra government had said that the guilty policemen have been punished in this case and the investigation has been completed. The CBI arrested Kalyanmoy Ganguly, a former president in the West Bengal Board of Secondary Education, in connection with the recruitment scam in government schools. The Central Bureau of Investigation has registered a case against 5 accused, including Ganguly. The NIA has arrested 3 more accused in the Mundra drug seizure case. The arrest was made for their involvement in smuggling of narcotics through the maritime route. PETA has released a video claiming that elephants leased by the Assam government to Tamil Nadu, especially the temple elephant Joymala, are being tortured. The principal chief conservator of forests in a letter admitted that Joymala was tortured, but her health is now fine. Now, Prime Minister Narendra Modi arrived in Uzbekistan, Samarkand, to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit, which is set to deliberate on regional security challenges, boosting trade and energy supplies, amongst other issues. The SCO is holding its first in-person summit in Samarkand in Uzbekistan after 2 years. The summit will also see the participation of Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping. PM Modi is also expected to hold bilateral meetings on the sidelines of the summit, including with Putin and Uzbek President, among other leaders. Though there is no confirmation over his possible bilateral with Xi Jinping. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif is also attending the summit. The summit is taking place amid the growing geopolitical turmoil largely triggered by the Russian invasion of Ukraine and Chinese aggressive military posturing in the Taiwan Strait. According to reports in Russian and Iranian media, PM Modi will hold separate bilateral meetings with Putin and Iranian President Ibrahim Raisi. The SCO Summit will have 2 sessions, one restricted session which is only meant for the SCO member states, and then there will be an extended session that is likely to see the participation of the observers and the special invitees of the chair countries. This year's summit is set to deliberate on regional security challenges, boosting trade and energy supplies, among other issues. Agency Report, Republic TV. Now, amid the buzz on meetings with the Russian President Vladimir Putin, Iran's President Ibrahim Raisi, there is still no confirmation yet on talks with Xi Jinping. Also, there is no confirmation whether the Indian Prime Minister will be talking to Shehbaz Sharif of Pakistan. All eyes, of course, are on the Prime Minister's visit today. Prime Minister Narendra Modi arrived in Uzbekistan's Samarkand to attend the meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization.
He will hold bilateral meetings with Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev and other world leaders on the sidelines of the SCO Summit, including Russian President Vladimir Putin. It will be the first face-to-face meeting between Prime Minister Modi and Putin since Russia launched its military operation in Ukraine. With the SCO Summit set to discuss various regional security challenges including terrorism, India said that there is a deeply held understanding in the grouping about the nature of menace and the source of the problem, in an oblique reference to Pakistan. At a media briefing, Foreign Secretary Vinay Quatra said the Shanghai Cooperation Organization has been focused on practical cooperation to deal with terrorism. The regional anti-terrorist structure of the SCO is focused on addressing key security challenges in the region, including that of terrorism and extremism. India is the current chair of the SCO RATS. The Foreign Secretary said India has been focusing very strongly on cooperation to combat terror. At the Samarkand Summit, the presidency of the SCO will be handed over to India for the next year till September 2023. New Delhi will most likely host the next SCO Summit. This is the first time after 2020 COVID pandemic that Prime Minister Modi, his Pakistani counterpart Shehbaz Sharif, Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the two-day summit in person. Bureau Report, Republic TV. Now, the 20-time Grand Slam champion Roger Federer announced his decision to retire from professional tennis, making several of his fans emotional who hailed him as the greatest ever player to grace the sport. Here's more. 20-time Grand Slam champion and tennis icon Roger Federer shocked the tennis world as he announced his retirement from the sport. Federer took to his official Twitter handle to issue a statement where he dubbed the announcement of his retirement as a bittersweet decision. Roger Federer has announced that his final professional tournament will be the 2022 Laver Cup in London. The Laver Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the tour has given me, but at the same time, there is so much to celebrate. As soon as the tennis maestro announced his decision, sporting greats and fans flooded social media. His fans hailed him as the greatest ever player to grace the sport. So I want to thank you all from the bottom of my heart to everyone around the world who has helped make the dreams of a young Swiss ball kid come true. Finally, to the game of tennis, I love you and will never leave you. Roger Federer's longtime rival and friend Rafael Nadal also gave an amazing tribute to the 20-time Grand Slam champion. Taking to social media, Rafael Nadal wrote, and I quote, "A sad day for me personally and for sports around the world. It's been a pleasure but also an honor and privilege to share all these years with you." Federer is one of the most successful men's players in the history of the sport, having won a whopping 20 Grand Slam titles in his career. The former world number one has a record 8 men's singles Wimbledon titles, 6 Australian Open titles, 5 US Open titles and 1 French Open title to his name. As Federer retires, the all-time Grand Slam record now has become a two-man fight between Novak Djokovic and Rafael Nadal. Roger Federer's decision to retire certainly means the end of an era that began in 2003 when the Swiss maestro broke onto the scene by winning his first Grand Slam title at Wimbledon. Agency Report, Republic TV. Prime Minister Narendra Modi, on the occasion of his birthday on the 17th, will release cheetahs in the Kuno National Park in Madhya Pradesh. The cheetahs have been brought from Namibia. Prime Minister Narendra Modi is set to release 8 cheetahs that are being brought from Namibia in the Kunko National Park in Madhya Pradesh on his birthday on September 17. At least 7 helipads are being constructed in and around the Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shiopur district, where the cheetah reintroduction project will be carried out. 20 साल से यहाँ से गांव विस्थापित किए थे और तब से प्रतीक्षा थी, लेकिन
अफ्रीका महाद्वीप से भारत एशिया महाद्वीप में जहाँ चीते समाप्त हो गए थे, उनका आना वाइल्ड लाइफ के लिए मैं सदी की सबसे बड़ी घटना मानता हूँ। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। Prime Minister Narendra Modi will arrive at the Crore National Park in Madhya Pradesh on September 17 to launch the cheetah reintroduction program. श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस इंतजार है पीएम मोदी का कि वो आएंगे अपने जन्मदिन के दिन और इस नेशनल पार्क के बाड़ों में चीतों को छोड़ा जाएगा। वो चीते जो पिछले करीब 70 साल से ज्यादा से विलुप्त हैं। इस देश की धरती से दक्षिण अफ्रीकी देश से चीते आ रहे हैं। The cheetahs arriving from South Africa will be released in the national park in Shiopur district the same day. हमारे देश के वन मंत्री जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हम स्वयं ने भी पहल करके बार बार साउथ अफ्रीका के अधिकारियों को हमने यहाँ बुलाया। जो उनको कंफ्यूजन था, हम लोग हमारे अधिकारी साउथ अफ्रीका गए, मैं स्वयं 10 दिन साउथ अफ्रीका में रहा और फाइनली अब प्रधानमंत्री का जन्मदिन एक नई सौगात लेके हिंदुस्तान में आ रहा है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी स्वयं जोहान्सबर्ग अफ्रीका से आने वाले चीतों को हमारे पालपुर कूनो के जंगलों में छोड़ेंगे। The cheetah is the only large carnivore that got completely wiped out from India, mainly due to use of coursing, sport hunting, overhunting and habitat loss. Attempts to bring cheetahs to the country were revived once more in 2009. 10 sites were surveyed between 2010 and 2012. The Crore National Park in Madhya Pradesh was considered ready for receiving cheetahs with the least management interventions, since a lot of investments were made in this projected area for reintroducing Asiatic lions, which is also an endangered species. ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो बाड़े की हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सभी तरह की व्यवस्था की गई है। अफ्रीकी देशों की तरह एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। यहाँ पर जब चीते पहुँच जाएंगे, इसके बाद उन्हें क्वारंटाइन अवधि जब वो खत्म कर लेंगे, उसके बाद उन्हें बड़े बाड़ों में शिफ्ट किया जाएगा। India signed a pact with Namibia in July for the reintroduction of cheetahs. 8 cheetahs, 5 females and 4 males have departed from Namibia's capital, will reach the Jaipur airport today, which is also the Prime Minister's birthday. Bureau Report, Republic TV. And 2 officials of Indigo Airlines have allegedly been involved in gold smuggling. They've been arrested at the Crore International Airport. The accused have been identified as Sajid Rahman, a senior executive, and Mohammed Samir, a customer service agent. According to reports, the accused were arrested for helping in smuggling of 4.9 kgs of gold from abroad. The gold is believed to have been worth about 2.5 crore rupees. The gold was found in the baggage of a passenger who left the airport and fled. Several incidents of gold smuggling have been reported from airports across the country. So the Customs Department has arrested 2 officials of Indigo Airlines for allegedly helping in gold smuggling at the Crore International Airport. The accused have been identified as Sajid Rahman, a senior executive, and Mohammed Samir, a customer service agent. What we're given to understand is that the 2 officials were arrested over about 4.9 kgs of gold that was being smuggled from abroad. It was worth about 2.5 crore rupees. The gold was found in the baggage of a passenger who'd left it at the airport and fled. Now, several incidents of gold smuggling have been reported from airports across the country. So that's the latest that we are getting on this one. This is the Kerala gold smuggling probe that's taking place. 2 arrests have been made. In this, 2 officials of Indigo Airlines have been arrested. You are watching the Morning Express on Republic TV, and up next, Delhi's liquor gate explodes. The ED is set to interrogate the jailed Aam Aadmi Party minister Satyendra Jain. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years.
Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। Big focus on security, politics and economics at the SCO Summit 2022. Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand, big bilaterals lined up. Delhi liquor gate explodes, ED to interrogate jailed AAP Minister Satyendra Jain. Tennis legend Roger Federer announces retirement. Fans share heartfelt notes, say tennis won't be the same. From Agnipat to cinema, India's biggest voices EDA today. The countdown for the much anticipated Our Bharat Summit has now begun. A very good morning. Thanks for staying with us on the Morning Express. I'm Nivedna Prabhu. First up, the Economic Offences Wing of the Delhi Police seized Jacqueline Fernandez's manager's superbike on September 15th in connection with an extortion case linked to conman Sukesh Chandrasekhar. Take a look. A massive discovery made by EOW. The Economic Offences Wing recovers a Ducati bike.
The bike was recovered from the manager of Jacqueline Fernandez, identified as Prashant. According to officials, the bike Ducati, which cost around 18 to 15 lakh, was given to Prashant by Sukesh Chandrasekhar with the proceeds of fraud. According to the sources in the Economic Offences Wing, they said that the focus is on the extortion racket allegedly run by Sukesh Chandrasekhar, where the proceeds of crime were used to splurge on gifts. Sukesh has admitted to giving expensive gifts to Bollywood actors, including Jacqueline Fernandez and Nora Fatehi. Meanwhile, Sukesh Chandrasekhar, a native of Bangalore in Karnataka, is currently lodged in a Delhi jail and faces over 10 criminal cases registered against him. Sources say that police had prepared around 100 questions for Jacqueline Fernandez in the 200 rupees crore money laundering case. Jacqueline Fernandez was quizzed for 8 long hours on Wednesday. Basically वही सवाल हैं जो ऑलरेडी सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में ईडी ने उनको चार्जशीट भी किया, तो वो सारी चीज़ें हमें अपने केस में जो मकोका का केस है उसके दौरान उसकी पूछताछ हुई है, और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सुकेश के थे उनको जैकलीन ने किस प्रकार यूज़ किया है, क्या गिफ्ट्स लिए, उन्हीं सभी इश्यूज़ पे पूछताछ हुई. No summons have been issued yet, but Jacqueline has reportedly been asked to stay in Delhi for the next few days. See, I cannot tell you what exactly was asked because the matter is under investigation. I can only tell you that Jacqueline has assisted the investigating agencies, that is the Delhi police. She was called today. Her statement has been recorded. She has submitted certain documents. Whatever questions were asked to her, she has completely replied to all the questions to the satisfaction of the agencies. That's what I can tell right now. Pinky Irani, who allegedly introduced Jacqueline to conman Sukesh Chandrasekhar and was also called for interrogation. Meanwhile, actress Nora Fatehi was also with Pinky Irani and was called in for interrogation. पिंकी ईरानी अभी आई हुई है, तो कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं इनके स्टेटमेंट्स में, तो दोनों को कन्फ्रंट कराने के लिए और क्या सच है उसको उगलवाने के लिए कल नोरा को बुलाया गया और पिंकी भी साथ में रहेगी, दोनों का इंट्रोगेशन होना है. This is the second time that she is being summoned by the agency in rupees 200 crore money laundering case. The Economic Offences Wing confronted Nora Fatehi with Pinky Irani, the woman who allegedly introduced the actor to conman Sukesh Chandrasekhar. During the interrogation, Nora has shared her WhatsApp chats with Sukesh. She also had shared the same with the ED. These chats are part of ED's first charge sheet. Nora continues to maintain that the BMW car that was given to her relative and she only received as the showroom wanted a celebrity to be present there. According to the sources, Sukesh purchased it through Shell Company and got it delivered to Nora in Mumbai. Meanwhile, Jacqueline Fernandez has now questioned the different treatment given to Nora Fatehi. As EOW turns up its heat in the 200 crore money laundering scam case, more details are awaiting. Bureau Report, Republic TV. Republic Media Network is determined to mark 75 years of independence with a keen belief and uncompromising resolve that as India goes forth, national unity and social harmony are paramount. With its journalism dedicated to the nation and in the true spirit of nationalism, Republic Bharat is hosting a nationwide summit today. Watch India's biggest names ideate from 9 a.m. onwards. Viewers, this is the biggest event of the year, the Rashtra Sarvopari Sammelan, and this is where after 10 a.m. in the morning, New Delhi, the national capital, we're going to see the biggest names descend here at the Republic Bharat Rashtra Sarvopari Sammelan. So this is going to be the very, very big event which will take place. In fact, the biggest names are going to come here. We'll start with Rajnath Singh, Yogi Adityanath, Piyush Goyal, Smriti Irani. The biggest names in politics and thought leaders will be coming here and sharing the view, sharing the vision for the nation. Now, this is in fact coming from the concept of
what is being called as Amrit Kal, which PM Modi spoke to. PM Modi had in fact spoken about this in 2021 during Independence Day speech, where he laid out the vision for the next 25 years of our nation, and where he said that the next 25 years, when India reaches the 100th Independence Day, viewers, 100th Independence Day, that's when a lot of unity should be in a country. That's when every citizen should know their duty. That is when social harmony should be prevalent in our country. PM Modi speaking about the 100th year of independence, and this is in fact also what PM Modi said, is India has already entered its Amrit Kal. We are in the age of Amrit Kal, and the entire concept of the Republic Bharat Rashtra Sarvopari Sammelan is all about that. How India will take the vision ahead for the country, for the youth of the country. And also PM Modi had also mentioned that it's also about how India is going to make sure that the divide between the rural and urban becomes less, and also how education is something that every man and woman in India is highly educated. Also making sure is that we welcome the latest technology in India in the next 25 years. So this is a very, very big event, a mega event today from 10 a.m. all the way to late evening. We will be reporting live. In fact, I'm here at the Sammelan, and it's going to be very interesting because once the chief ministers of many states, when the ministers holding the biggest portfolios in India, in the ministries and in the government will be coming here, I'll be speaking to them and asking them about the vision of a country, what they see ahead when it comes to defense, when it comes to women empowerment, when it comes to laying out the future in science and technology, whatever it might be, whatever will lead India to the next level in greatness, and whatever will lead India to becoming the developed nation that PM Modi envisions it to be by the year in the next 25 years. So I'm over here, and we will be getting you all the coverage, and we will be getting exclusive conversations with the biggest names and the visionaries of India. So this is going to start very soon, viewers. We will continue our rolling coverage from here from the national capital at the Rashtra Sarvopari Sammelan, the biggest event of the year, which is being hosted by our sister channel Republic Bharat. Back to the studios. Here's also the other stories that we're tracking at this hour. Prime Minister Narendra Modi is set to attend the Shanghai Cooperation Organization Summit, which will deliberate upon regional security challenges, boosting trade and energy supplies, among other issues. The SCO is holding its first in-person summit in Samarkand in Uzbekistan after 2 years. The Delhi police grilled Nora Fatehi for 6 hours in connection with Sukesh extortion case. The actor was summoned for the second time for questioning along with Pinky Irani. The special CBI court judge Geetanjali Goyal has given the nod to the ED to quiz Delhi Health Minister Satyendra Jain inside the prison in the liquor scam. This comes after ED sought 3 dates to question him in the liquor scam row. Months after being passed in the Karnataka Legislative Assembly, the Protection of Right to Freedom of Religion Bill 2021, also known as the Anti-Conversion Bill, was passed in the Legislative Council. The bill was passed despite the opposition's attempt to block it. Following this, the Congress party staged a walkout. Conversion in the state. We are not restricting anybody who voluntarily takes up any religion on his own, for which he has to give an application before DC, he has to make a statement before DC voluntarily. If forcible conversion is made, if some complaints are received, we are going to take action. Otherwise, there will be no restriction for a man to change his religion on his own. SC will hear the demand for a CBI inquiry into the brutal killing of sadhus in Palghar. Earlier, the Maharashtra government has said that the guilty policemen have been punished in this case and the investigation has been completed.
The CBI arrested Kalyanmoy Ganguly, a former president of the West Bengal Board of Secondary Education, in connection with the recruitment scam case in government schools. The CBI has registered a case against 5 accused, including Ganguly. NIA has arrested 3 more accused, Ram Hatullah, Ishwinder Singh and Jasbir Singh, in the Mundra drug seizure case. The arrest was made for the involvement in the smugglings of drugs through maritime route. PETA released a video claiming that elephants leased by the Assam government to Tamil Nadu, especially temple elephant Joymala, are being tortured. Now, Principal Chief Conservator of Forest in a letter admitted that Joymala was tortured, but her health is fine now. We're slipping into a short break right now, but on the other side, UK pays respects to Queen Elizabeth as her coffin lies at Westminster. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/globalstudy. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है
Big news coming in. Suspected explosion outside house of DDC member in Surankote in Poonch district. Now the explosion took place in Faisalabad area of Surankote outside residence DDC member Sohail Malik's house. Now the nature of the explosion is yet to be ascertained. No loss of life reported, but damage to vehicle parked outside, as you can see in those visuals on your screens as well. Now for more information on this, we're joined in by Gursimran. Gursimran, what we gather so far, of course, is that the nature of the explosion is yet to be ascertained. But what more details have we gathered? Where did this exactly happen? See, this is in the Faisalabad area of Surankote, which falls in the police jurisdiction of District Police Poonch, and it was reported late last night when a suspected explosion has taken place outside the residence of a DDC member from Surankote B DDC constituency, Sohail Malik. Important to mention that the nature of the blast is yet to be ascertained by the security forces. We are getting to know that today morning, in a short while from now, the FSL teams too will be reaching the spot since the explosion has taken late last night, and they will be collecting the samples from the explosion so that they can find out the nature of the explosion. We have seen that in the Pir Panjal and the Chenab Valley, there have been repeated attempts by the terrorists to revive the terror activities in the region, and that's why police is leaving nothing at chance. FSL team will be rushed, as well as the police has also gone on to verify all the details that how this has taken place and who all were the persons who have visited the vicinity of the house in the past 1 to 2 hours of the time when this explosion has taken place. So police is leaving nothing at chance to look into this suspected explosion that has taken place outside the residence of DDC Surankote B Sohail Malik. Now, in terms of course, this happening outside Sohail Malik's house, has there been any reaction on that front regarding this incident? See, the DDC member has got the complaint registered with the district police, and the police officials have reached the spot yesterday late night itself, soon after this incident was reported to them. And now the FSL teams too will be reaching the spot because the police don't want to leave anything at chance. We have seen the repeated attempts of terror infiltration by the Pakistani side, pushing terrorists into the Indian side, especially in Rajouri and Poonch. For more, stay tuned to Republic TV right after this short break. Is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया. यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है. Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Big news coming in, this one from Bihar. A youth accused of injuring 10 people and killing one by firing on the NH in Begusarai was arrested from the Jhaja railway station. The arrested youth has been identified as Keshav Kumar alias Naga father Ram Vinay Singh, a resident of the Bihar Begusarai. Now the youth was running to Ranchi in the Maurya Express train, which the police got information about the same, and as soon as the Maurya Express stopped at the Jhaja station, it was surrounded and the accused Keshav was arrested. Now the Begusarai police took the arrested accused with them to Begusarai. So this is the latest that we're learning right now, where a youth has been accused of injuring 10 people and killing one by firing on NH in Begusarai and was arrested from the Jhaja railway station. And what we're learning so far is that the youth was trying to catch the Ranchi in Mumbai Express train, which the police got information about the same and tracked him down. And as soon as the Maurya Express stopped at the Jhaja station, it was surrounded and the accused Keshav, the stills that we can also see on our screens, was arrested. Now the Begusarai police took the arrested accused with them to Begusarai is what we're understanding. Now the arrested youth has been identified as Keshav Kumar alias Naga father Ram Singh, a resident of Bihar Begusarai. And in this particular incident, he has injured 10 people and killed one. This is what he's been accused of. This incident happened in NH in Begusarai, and after the incident, he was arrested from the Jhaja railway station. And what we're also understanding in this is that Keshav was running to Ranchi in the Maurya Express train, or rather trying to escape by using the Maurya Express train, which the police got information about. Well, after a short break, we're going to take a look at UK paying respects to Queen Elizabeth. Stay tuned. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city.
Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Jinping here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Jinping here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। Big focus on security, politics and economics at the SCO Summit 2022. Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand. A lot of bilaterals are lined up. The Delhi liquor gate scandal explodes. The ED is set to interrogate jailed Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain. Rajasthan Minister Stokes Rao runs down own government. 48 hours after Begusarai shootout, accused now placed under arrest. From Agnipath to cinema, India's biggest voices ideate today. The countdown for the much anticipated Our Bharat Summit has now begun. Good morning and welcome. You are watching Republic TV. I'm Nupur Talwar Suri. The Republic Media Network is determined to mark 75 years of independence with a keen belief and uncompromising resolve that as India goes forth, national unity and social harmony are paramount. With its journalism dedicated to the nation and in the true spirit of nationalism, Republic Bharat is hosting a nationwide summit today, which India's biggest names ideate from 9 a.m. onwards. Viewers, it's Rashtra Sarvopari Sammelan. I am at the national capital at the Regency Hyatt where this event will take place. The biggest event of the year, viewers, and this place where I'm standing right now is going to witness one of the biggest thought leaders and the biggest names in India come and address the nation. We are talking about Rajnath Singh, Smriti Irani, Anurag Thakur, the Chief Minister.
Himanta Biswa Sarma, among many others. So this is going to start in just an hour right now, and we can tell you it's going to be a spectacular event. It's being hosted by our sister channel Republic Bharat. It's the Rashtra Sarvopari Sammelan, and that means putting nation first. It's all about putting nation first. It's all about being in line with the vision of PM Modi, who said in 2021, he had made it very clear that as India moves towards its 100th year of independence, we have to make sure that we are in line with the vision of our country. We're talking about social harmony, you're talking about unity, every citizen doing their duty, whether the citizen is a CM, whether the citizen is a Prime Minister or a citizen or an officer of the country, every citizen will work towards the development of this country. So this is the big event which is happening. We're going to have the biggest names coming in, and PM Modi had said as India is entering what he calls Amrit Kal, India has already entered Amrit Kal, the golden age, where it's all about making sure the divide between the poor and the rich is less, the divide between urban and rural becomes less, and every man and woman in India is educated, including we welcome the latest technology in our country. So as India hurtles towards the 100th year of independence, India will be a developed nation. That's the vision of PM Modi. And right now, viewers, I'm here at the biggest event of the year hosted by Republic Bharat. Very soon we will be joining me will be the guests which will be coming here at the summit, where we will share they will share the thoughts with us, they'll share about the vision for the country, and they will talk about here why it's important to put India first, put our nation first. This is where all the action will be. This is the biggest event of the year, the Rashtra Sarvopari Sammelan, which means Rashtra Sarvopari Sammelan, meaning the Sammelan, the summit where we will put our nation first. Back to the studios, and I'll get you all the details from here. The event will start in just under an hour. Oh yes, absolutely. We are at the very spot where you're going to see an action-packed day, and Shivangi and I are around each other because it's obviously a big location here. Nupur, if you can hear me, this is the highest regency in the national capital, and as you see, because we are expecting very important dignitaries through the day, now the security checks are underway, the excitement is building, and the momentum is slowly building. The Republic team, the Republic crew that is on its feet right now to ensure that we can put up a great show for you. I see a lot of familiar faces. Arnav will also be here in a bit from now, and I'm hoping to get a word from him to get a sense of how it's turning out. But you see, like I said, it is India first, and that has been the motto of Republic, very clear from day one. Republic Media Network is for the nation, and which is why when we started Republic Bharat, our sister channel, Republic Bharat, again, the motto, Rashtra Sarvopari, so it is nation first, and which is why we are standing here today. Like you see, again, Team Republic, all familiar faces for us, a lot of them behind the cameras, so probably you may not be able to recognize them, but if I can just give you a sense, Aishwarya is here. Aishwarya, I know you're very busy, and you're instructing the team right now, but a quick word from you. Aishwarya, what's planned for the day? Oh, we are all too excited. It's the Republic Bharat Summit. You have the BJP National President, you have Defence Minister, you have MOS Prime Minister's Office, and you have series of Chief Ministers, right from Yogi Adityanath to Mr. Khattar. And then you have Anurag Thakur, Smriti Irani. So it's a jam-packed day. Jam-packed day. And give our viewers a sense of, what's going to be discussed for the day. This is Swesha, we're in the 75th year of independence. well, absolutely. And as Arnav said, nation first. And that's the title of this summit as well, Rashtra Sarvopari. And that's why we are beginning with Raksha Mantri himself, who says nation first and is taking the Prime Minister's motto ahead. So that's the line, that Rashtra Sarvopari, nation first and everything else later, Swesha. So that's the tagline from the beginning point, that's 10 a.m. and the ending point we don't know. So that's how jam-packed it is. But the title and the whole, how do I say so, the motto is that Rashtra Sarvopari, nation first and everything rest later. Swesha. Aishwarya, because during COVID, obviously, for obvious reasons, we could not hold this summit. But right from 2017, when Republic TV launched, and then of course our sister channel Republic Bharat, and today Rashtra Sarvopari is the Republic Bharat Summit that is happening. Republic Bangla also came in. Yes, that was after, but this is what I'm getting to, that
while that motto of ours has been very clear for the network, it is nation first, no compromise. But and we've seen some very fruitful sessions happen through the years. But today, what is the breakdown like? What are going to be the topics of discussion? Prominent personalities we know, but you know, I know the day is only just beginning. Rajnath Singh is the keynote speaker. So Isha, if I could just request your video journalist to just pan the camera across, and you see, this is just the beginning. Yeah. This is the people, this is the crowd in waiting, and it has just not begun. It's still 60 odd minutes to begin, and this is the crowd in waiting here. So that's the buzz in the national capital and in the country for the Bharat Summit, for the Rashtra Sarvopari Summit, and that's in itself tells that people are here 60 minutes prior just to get a glimpse of what Republic Bharat Summit is going to be. So it's going to be a jam-packed day right from 10 a.m. till the ending point, Suesha. And you know, I was also telling our viewers that we usually like to give a glimpse of also what happens behind the cameras. And all these, exactly, the entire Republic crew that is here. This is the prep. Yes, this is just the prep. And we are giving our viewers now a sense of how the preparations are happening, the security deployment, and of course the checks that are happening. Oh, absolutely. Multi-layer checks. It's Raksha Mantri, it's Defense Minister Rajnath Singh who's beginning it. Then you have the BJP National President, so all high security personnel. How many sessions you are going to be holding? Oh, I have several panels, but it's just not about me. It's the whole unit, and right from day point one till, so from Asauddin Owaisi to Manoj Tiwari, from Smriti Irani to Malini Awasthi, from Hans Raj Hans to Waris Pathan. So you have everyone coming in. It's just not about the ministers. It's about getting everyone who matters at the Republic Summit, at the Rashtra Sarvopari Summit, Suesha. I wish you all the best, Aishwarya, and catching more voices. Yes, absolutely. Absolutely. So I think even our viewers at home get a sense of how it's going to look like. I'm going to get a quick word from Sohail. Sohail, I know you're in front of the camera. A quick word for Republic TV. Sessions lined up. How are you preparing? कैसी रही तैयारी? मुझे लग रहा है हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। ये जो भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं और जिस तरह से सब तैयार होकर आए हैं, सब सुनना चाह रहे हैं उन लोगों को जिनकी एक्चुअली जिम्मेदारी है राष्ट्र को सबसे पहले सर्वोपरि बनाने में, नेशन फर्स्ट की बात जो करते हैं, चाहे वो रक्षा मंत्री आ रहे हो, गृह मंत्री की बात हो, जेपी नड्डा हो, पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी जी हो, इन सबको सभी सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है एक एक्साइटमेंट न सिर्फ यहाँ बल्कि सोशल मीडिया के जरिए या हमारे प्रोमोस के जरिए लोगों में भी है। लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि कौन कौन आ रहा है और उनसे क्या कुछ सवाल होने वाले हैं। भारत एक्साइटेड है या नहीं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे बात कर रही हूँ। रिपब्लिक भारत के सभी चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। मेरे को पता है आपके कैमरास भी ऑन है। जल्दी से आपसे पूछूंगी तैयारी कैसे चल रही है इतने दिनों से एक अच्छा शो पुट अप करने की? किस तरह से टॉपिक्स डिसाइड किए गए, किस स्पीकर को कैसे अलॉट करना है, ये सब तैयारी? देखिए, बड़ी चीज है कि लोग उन्हें पहले सुनना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है देश के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है राष्ट्र के लिए। चाहे वो आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले वो आने वाले हैं, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। तो तैयारी इस हिसाब से, क्योंकि लोग भी इन्हीं लोगों को पहले सुनना चाहते हैं। और रक्षा मंत्री से शुरुआत इसलिए क्योंकि हमारे जो जवान हैं जब वो बॉर्डर पर हैं तभी हम लोग सुरक्षित हैं, महफूज हैं। तो पहले राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की जिम्मेदारी वो अपने बलिदान, अपनी कुर्बानी के जरिए दे रहे हैं। इस हिसाब से ही जो है तैयारी पूरी हुई। So here, I'm not going to hold you any longer because I know that your camera is up. You have to speak through the audiences, and Republic Media Network is what people are tuning into today. The action-packed day, like I said, and a lot of Republic Bharat faces also that I see. I'll try and get a word from Shazia. If you can quickly talk to me, Shazia. Come, Shazia. Shazia, of course, Shazia, मेरे को पता है कि आप भी कुछ सेशंस होल्ड करने वाली है और बहुत तैयारी चल रही है रिपब्लिक भारत टीम की। हम सोहेल से भी अभी बात कर रहे थे। तो शाजिया, जल्दी से बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसे होने वाला है? देखिए, बहुत कुछ खास रहने वाला है इस रिपब्लिक के समिट में। राष्ट्र सर्वोपरि की हम बात करते हैं हर बार, और एक बार फिर से इस बात का प्रमाण हम देने वाले हैं। पॉलिटिकल लीडर्स तो हमारे साथ रहेंगे ही, लेकिन बात होगी जर्नलिज्म पर भी, पत्रकारिता के क्षेत्र पर भी बात होगी और किस तरीके से पत्रकारिता में जो परिवर्तन आया है हमेशा उसको लेकर के भी बात होगी। तो आज का दिन बहुत ही ज्यादा हम सबके लिए खास रहने वाला है और उतना ही खास हमारे व्यूअर्स के लिए भी है स्वेशा। और इसीलिए शाजिया, हम बहुत एक इम्पोर्टेंट जंक्चर पे खड़े हैं, 75 साल आज़ादी के। एंड जैसे कि आपने बोला कि पत्रकारिता में किस तरह का चेंज आया है, बहुत एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये पॉइंट्स डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। और इसीलिए मैं आपसे खास करके जानना चाहूँगी कि अब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर्स है, राजनाथ सिंह की नोट स्पीकर है, बाय द एंड ऑफ द डे क्या क्या होने वाला है?
देखिए पूरे दिन आज तो आप हमारे पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे, राजनाथ सिंह का जैसे कि हमने बताया, जेपी नड्डा भी, योगी आदित्यनाथ भी, शिवराज सिंह चौहान भी, ये तमाम बड़े नेता, ये तमाम बड़े लीडर्स रिपब्लिक पर रहेंगे और अपनी बात रखेंगे। जनता के सवाल हम आपसे, आपके जो सवाल हैं वो हम पूछने वाले हैं आपके लीडर से, और उनके उन सवालों का जवाब आपके लीडर्स आज देने वाले हैं। तो बेसब्री से जिस तरह हमें इंतजार है, मुझे लगता है जनता को भी उतना इंतजार होगा। स्पेशल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, and which is why Shivangi is also standing at a very important vantage point, and I believe Abhishek is going to be in conversation with her. So Shivangi, over to you, Shivangi. Right. Well, Suesha, exactly. You know, there's a lot of buzz. There's a lot of buzz where you are, and because I'm at the same place, in a different vantage point, and we can feel the energy in the air. You know, I'm sure you can agree with me, Suesha. It's a big event. We're getting the biggest names, the biggest thought leaders in India. I'm also being joined by our senior executive editor, Abhishek Kapoor. Abhishek, this is a very big event. You know, we have the biggest leaders and thought leaders. It's all about nation first. It's all about making sure that when India reaches the 100th year of independence, we will be a developed nation, and can all call each other a proud citizen of India. Well, absolutely. We have to do that. We have to start already, you know, and we have to, as a nation, come together and work in that direction with that objective in mind. So, remember, the idea behind setting up Republic by our editor-in-chief Arnab Goswami was that you have to center this thought of nation first within the mainstream media in the country, which was not the case. Typically, you would see media as left liberal and compromising many times on a focused national agenda. So I think with that thought in mind, Arnab launched the network, first the English channel in 2017, and then, most importantly, for addressing the requirement of masses for that kind of centering of nation first thought, the Hindi channel. So we are having our first Republic Bharat Summit, Rashtra Sarvopari Sammelan. So nation first is Rashtra Sarvopari, and Honorable Defence Minister would be inaugurating it. So obviously you can imagine he would be talking about what's happening to make India a more secure nation, a more powerful nation as we head into our objective of becoming a developed nation by 2047. And then of course it would be capped by Honorable Piyush Goyal, the Minister for Commerce and Industries, apart from, of course, public distribution system and textiles. He's someone who's effectively India's brand ambassador when it comes to our trade negotiations. He has just returned from IPEF talks in the United States. He has been negotiating those free trade agreements with Australia, UAE, EU, United Kingdom. So you can expect that when he comes and speaks about India's trade position today and how comfortable we are as an economy, we just crossed a milestone of becoming 5th largest economy, going ahead of the United Kingdom. So I think a lot of things in between, Smriti Irani, in between Anurag Thakur, and on education, very important, Dharmendra Pradhan. So a big packed day of deliberations, thought exchange on what constitutes nation first. Exactly, like our senior executive put it, it's all about nation first. And also, Abhishek, you would agree with me, it's also about making sure that, we as journalists play a big role in the development of our nation. That's why we're hosting the event. I want to go across to Suesha, who also is at the summit, and she's where all the action is. Suesha, over to you. And Shivangi, yes, we are trying to get a lot of voices, especially from our special guest. Colonel Vian Thapar is with me, a very, very, very frequent voice on the channel, always sharing your views, no mincing of words ever. And today, when you stand at the Republic Bharat Summit, what are you expecting the day to look like? I'm at home, so I have no problems. And I expect a very high standard, which is always presented by Republic. And I hope the session is very fruitful. I have no doubt about it. There are no two ways about the motto of Republic Network. It is nation first, no compromise, and which is why all of us, including you, move together with that very clear thought. Today also, when we stand at a juncture, 75 years of independence, and I'm sorry, Major Gaurav is trying to cross the camera here. It's okay, I'll come to you in just a bit. But Colonel Vian Thapar, of the journalism that you see on Republic, and at a time when this is really a very frequent topic of discussion, today when it is important to talk about how India is moving fast, how
How do you share your views? How do you put everything together? No, I can see it in front of me, and the kind of progress that we are making is for everybody to see and appreciate. We must give full points to the things that are happening. And I, as a military man, feel that we are going through revolutionary and very evolutionary changes in the army with the Agniveer and all these things that are happening. And we have made the Vikrant, that is a big feather in our cap, and HF, the fighters are going to be made. And as a military man, I believe that this is going to be a very, today's session also will be a very informative session. I hope the defense minister gives us some lowdown. Even we are hoping for the same. A lot of news points coming in from the keynote speech. Thank you, Colonel V.N. Thapar. I'm not going to hold you any longer. Hope you have a great day. Looking forward to how it pans out. No, of course. You know, for me, coming to Republic is always a great pleasure. And I've known all the people here. And it's a part of my... Thank you. So I'm going to catch a word with you again in some time. You please make your way into the venue and I will catch you. Thank you. Thank you. And Shivangi, over to you. We are talking to a lot of people here, getting a lot of voices. Over to you. Right, well, Swesha, I'm also here, right over here, Swesha, and I also have a guest with me, Major General Rajan Kochar, who has come for the event, and I was thanking him right now coming for this event. I mean, if anybody would come here, they would understand that it's such a big event. I mean, still an hour to go, a lot of energy in the air, and Major General, I want to ask you, is that this entire event, Rashtra Sarvopari Sammelan, it means nation first. And for you, what does nation first mean? It's very important today to understand why nation first. We always look at ourselves. If you look at the motto of the Indian Military Academy, it is a service before self. So taking a cue from this, nation first is a service before self. And if each citizen of the country understand this, let me tell you, India can become a great superpower. We have so much of human resource with us. 65% of our population is less than 35 years of age. There is no country in the world which has this sort of a young population. So this theme which Republic has initiated, Nation First, is a very vibrant, and it should catch on into the imagination of the youth, because it is the youth power which will take our country towards nation first. Right. And also, Major General, there was something which PM Modi had said, which in fact touches every Indian. And he said that as India, reaches, it's on its way to its 100th year of independence, PM Modi has a great vision of India. But he's also saying that we have entered that Amrit Kal already, which means we have entered that golden age. A quick comment about how do you see things panning out in terms of India achieving its goals in the next 25 years? We are already started the process with Atmanirbhar Bharat and Make in India. A number of defense reforms have been initiated. Today the missile technology which we have is one of the best in the world. BrahMos is being exported to a large number of countries. So we see in the future space technology coming into India. Right. We have a space private organization for the first time initiated by PM Modi, and I'm sure with this kind of technology which is going to come to our country, there is no looking back for India. That's exactly, you said it right, we couldn't have said it better. It's all about also getting technology in our lives, in every citizen's life. I want to also go across to Swesha, who's right over here, and she's at a great point, because that's where all the action is. Switch over to you. And yes, Shivangi, I have with me Major Gaurav Arya, a veteran of Republic Media Network and a very important person today, who is going to be holding some key sessions. Yes. What's lined up? No, absolutely. Thank you. And I think it's an honor and privilege for me. This session is huge. We have 3 former chiefs. We have Air Chief Marshal Bhadoria with us. We have General Malik, who was the Army Chief during Kargil, and he was my chief too.
When I was serving, he was our chief, and we have Admiral Sunil Lamba. So I think what they're going to say, the questions are pretty much built around safeguarding one's borders and about Atmanirbhar Bharat and stuff like that. But when former chiefs say it, it becomes a message to the nation. And these are people with a lot of gravity, a lot of credibility, people who have spent more than 40 years in the uniform. And it's an absolute honor. I'm looking forward to learning from them. So am I. Absolutely. And action-packed days, what I continue to tell our viewers. Thank you, Major Gauravarya. I know I've been holding you, and it's time for you to go inside. We also have some breaking news lined up. Thank you so much. I'll meet you inside. And yes, like I have been saying, Shivangi and we've been getting a lot of voices. The preparations underway. A quick round over here. Like you see, the security checks have already happened. So I'm going to toss it back to the studio for now. Well, in fact, we're now getting a big lead in Delhi's liquor gate. Republic TV has learned that ED raids are underway across 40 locations. The ED is carrying out searches in Hyderabad, Chennai, Nellore, Bangalore, and Delhi. So this, of course, is linked to the liquor gate case. We are given to understand that multiple locations are being searched even as we speak. 40 locations is what we are learning right now. And these locations are spread across about 5 cities. They are being carried out in the cities of Hyderabad. Some searches also on in Chennai, others on in Nellore, Bengaluru, as well as the national capital, Delhi. So big development taking place there in the Delhi liquor gate scam. Do remember that even as this happens, permission has been granted for questioning of Satyendra Jain, who of course is currently in jail. So that questioning also takes place linked to the liquor gate. So right now, even as we are awaiting more information in terms of the exact places that are being raided, this is seen as a huge widening of this probe that is being carried out by the Enforcement Directorate into the liquor gate scam. Right now, of course, ED is raiding about 5 cities, 40 locations in all. Anuj is reporting on this. Let's go across to him. Anuj, give us more details of what's happening. Well, that's something what we have been told. This is at around 40 locations which is being raided by the Enforcement Directorate. Let me remind you earlier, this was CBI who was seen in action, and we had seen the raid that was done by the CBI at the residence of the Deputy Chief Minister Manish Sisodia and the other officials of the Excise Department, including the former Commissioner, including the other Commissioner of the Excise and the other officials also. They were called by the CBI for the inquiry, and now this is Enforcement Directorate who is in action, and that's something what we have been told, that this is around 40 locations and multiple locations, rather we should say, which is being raided by the Enforcement Directorate. We are waiting for the update what exactly is going to happen in this particular raid, because now when Enforcement Directorate is raiding, then this is regarding the money laundering, the financial irregularities. That is something what we do understand, and that is something what has been alleged by the Bharatiya Janata Party also. We have seen the war of words if we talk about the political ramifications of the same, and now this is big when on the liquor policy, on the excise policy, which was implemented by Aam Aadmi Party back in last year in November, and later it was withdrawal. But numbers of questions have been already raised. The FIR has been already registered, and main accused in the FIR is none other but the Deputy Chief Minister of the National Capital, that's Manish Sisodia. We have seen Aam Aadmi Party being vocal about the issue, targeting Bharatiya Janata Party and targeting the agencies. But this is all the procedure which will be taken ahead by the agencies. Yes. All right. So as Anuj is pointing out, raids being carried out across 5 cities, 40 locations that's being raided. You are watching Republic TV. We will get you more on the raids that the ED is conducting at 5 cities in the liquor gate scam. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada
or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया. यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया. ED news titans in Delhi liquor gate, pan-India searches underway. Hyderabad, Chennai, Nellore liquor gate scam explodes, mega raids now on. Delhi liquor gate explodes, ED to interrogate jailed up Minister Satyendra Jain. Big focus on security, politics and economics at the SCO Summit 2022. Prime Minister Narendra Modi arrives in Samarkand, bilaterals lined up. From Agnipat to cinema, India's biggest voices ideate today. The countdown for the much anticipated Our Bharat Summit has now begun. Thanks for staying with us on Live and Breaking. I'm Nivedna Prabhu. Starting off with some big news coming in. A big breakthrough and a big lead in Sidhu Moosewala's murder case. The most wanted gangster, Mandeep Singh Tufan, was finally arrested by the AGTF of Punjab police.
Now, Tufan had provided shelters to shooters. Tufan was arrested from Amritsar, and Tufan had provided the shelter to shooters before the murder of Sidhu Moosewala. So a big breakthrough coming in terms of Sidhu Moosewala's murder case, where we're understanding so far is that the most wanted gangster, that is Mandeep Singh Tufan, was arrested by the AGTF of the Punjab police. For more information on this, we're joined in by Amandeep. Amandeep, this is of course a big breakthrough coming in terms of Sidhu Moosewala's murder case. What we're of course understanding is that the most wanted gangster, Mandeep Singh Tufan, has been arrested. But what are the other details that we're gathering about this? Well, absolutely. This is a very big breakthrough for the Punjab police and the anti-gangster task force, who's actually working on this network of the gangsters. And in fact, Mandeep Singh Tufan, who's a notorious gangster involved in several murders and even provided shelter to those who killed Sidhu Moosewala on May 29th. And in fact, he's a resident of nearby Amritsar, and he has been arrested from Amritsar. Basically, Mandeep Singh Tufan has provided the shelter to the team of the shooters who are actually staying nearby the border areas to collect the weapons through drones. And Mandeep Singh Tufan is the one who has actually provided them the places for their hideouts and to procure the weapons as well. And even Mandeep Singh Tufan was equally involved and very much aware about the conspiracy that was hatched to kill Sidhu Moosewala. And even his name has been revealed by a team of shooters, including Kashish. And even they have told that how Mandeep Singh Tufan has helped them to make their hideouts before killing Sidhu Moosewala. And he was aware that they are planning something big. And even he helped them to get the weapons that was dropped through the drones from the cross border. Just because Mandeep Singh Tufan was very much aware about the international border area, he was very much aware about the villages nearby the international border, and he was very much aware that how to pick up the weapons that was dropped through the drones from the side of the Pakistan. This is how Mandeep Singh Tufan has been involved into this entire case. And even now, the Mandeep Singh Tufan's interrogation is very much important, just because he knows the network of the cross-border drug smuggling as well as the weapon smuggling that is happening in the western borders in Punjab. And even he is the one who actually knows the location where the drone drops the weapon and the drugs. And after the interrogation, major nexus in the network will also get exposed of these drugs and the weapon smugglers who are sitting across border and trying to create unrest in Punjab as well. So far, anti-gangster task force has arrested Mandeep Singh Tufan, and further the investigation will be done in the multiple angles, just because his involvement is not very much restricted to Sidhu Moosewala's murder case. He was involved in several murders, dacoities, weapon smuggling, cross-border drug smuggling, and even several kind of terror activities. Yes. All right. Amandeep, thank you so much for that information. The latest on, of course, like Amandeep has said about the Sidhu Moosewala murder case, the big breakthrough is that Mandeep Singh Tufan has finally been arrested. Now, of course, there will be more developments in this particular case that we will continue to track right here. But moving on to big news coming in, getting in a big lead in the Delhi liquor gate. Now, Republic has learned that the ED raids are underway across 40 locations. Now, the ED is carrying out searches. What we're understanding so far is in Hyderabad, Chennai, Nellore, Bengaluru and Delhi. Now Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh and the NCR. Now these raids are currently underway at 40 locations. This is in connection with the excise policy case. Now remember, this also comes at a time where simultaneously that Satyendra Jain, who is lodged inside the Tihar jail as well, the permission has been given in terms of interrogating him as well. But this is the big breakthrough that is coming in terms of the fact that raids are being carried out at 40 locations. Now this includes places like Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh and NCR. This is in connection with the excise policy scam. So this is of course a big lead that is coming through in terms of ED searching underway across 40 locations. This comes at a time when of course the fact that Special Judge Geetanjali Goyal has also allowed the application moved by ED, which is seeking permission to question Satyendra Jain in the excise policy case. So in terms of that, of course, a big breakthrough coming in. For more information on this, we're joined in by Shravan Sen, who's joining us on the phone lines. Shravan, we understand that these raids are happening across 40 locations, but what else are we gathering?
Well, in fact, what we can confirm right now that the searches are being carried out at 40 locations. The states concerned are Telangana, Andhra Pradesh, in the Delhi NCR region, and also in Karnataka, where these searches are being carried out. This is linked to the liquor excise policy. Important to point out here is that focus largely right now in Nivedana is on the companies based out of Hyderabad and also a few other places in Karnataka is what we are being told. So largely the concentration is on those liquor companies operating out of the southern states who had got L1 licenses here in the national capital. That's the primary focus at this point in time. And remember, in the liquor excise policy, the Enforcement Directorate is carrying out the searches for the second time. The first time when the searches were carried out, remember they were pan-India searches, where searches were also carried out in Punjab. But as of now, what we are picking up is that these searches are primarily restricted right now to the southern states and most of the companies which have been operating out of Karnataka and Telangana. Shravan, this also comes at a time where the special judge Geetanjali Goyal has allowed the application moved by the ED to question Satyendra Jain. So to draw things into perspective for that, where these raids are happening simultaneously, if you could talk to us about that. Well, at this point in time, Nivedana, it would be difficult to perhaps bring in any parallel with regards to the fact that Satyendra Jain, the minister in Arvind Kejriwal's government, is also going to be questioned in the excise policy and whether it all is linked to the searches that are being carried out today. In all likelihood, what is largely to perhaps. All right. Thanks, Shravan, for joining us with all that information. Now, this, of course, the big breakthrough coming in terms of the excise policy scam, where the ED raids are being carried out in 40 locations, which we understand also in places like Andhra Pradesh, Telangana, Bengaluru and NCR. But we're also getting other news coming in, where a video has surfaced which shows a vegetable shop owner harassed and threatened by Congress workers for not contributing enough amount to fund collection for the Bharat Jodo Yatra in Kollam. Now, what we're also learning is that they threw away the vegetables, intimidated the shopkeeper and created ruckus. They had allegedly demanded rupees 2,000, but the owner was only able to give 500 rupees. Now, the activist is seen threatening by saying nobody will go alive without giving the amount demanded. Now, the Youth Congress State General Secretary H. Anish Khan is said to be involved in this video that we see right now on our screens. The shop owner S. Fawaz has filed a complaint with the Kozhikode police. Now, in those visuals that we can see on our screens as well, Congress workers have harassed a vegetable shop owner. Now, this was because of the fact that they were asking for money to be given to the fund collection for the Bharat Jodo Yatra. This was in Kollam. Now, they threw away the vegetables. They also intimidated shopkeeper about and created ruckus. Now, for more information on this story, we're joined in by Ashwin. Ashwin, we're learning so far that, of course, these Congress workers were, harassing the vegetable shop owner for not providing enough fund for the Bharat Jodo Yatra campaign. But what are the other details that we've gathered so far? What details we've gathered is that Youth Congress State General Secretary H. Anish Khan is said to be involved in this video. And he has demanded after Yatra, which is resuming today, 16th of September today, it resumes his Yatra from Kollam and it will move further north of Kerala, where it will spend 20 days in Kerala. Now, as part of this, the Congress workers have been collecting funds from local resources wherever the Yatra is going on. The Congress local leaders have been collecting funds. And the video which has emerged shows the shopkeeper has denied, he said he will be only able to Okay, give it seems 500. like we're having a little bit of an issue with your audio, Ashwin. We'll get that checked. But this is, of course, in terms of the particular story that we're tracking at this hour, where a video has surfaced which shows a vegetable shop owner harassed and threatened by Congress workers. Now, the Youth Congress State General Secretary H. Anish is said to be involved in this video that we can see on our screens right now, who was harassing the vegetable shop vendor.
party merger with BJP on Monday. Now, captains PLC to merge formally into BJP on Monday in New Delhi. Now, the merger has been scheduled after marathon meetings between the captain and senior BJP leadership. This is what we're understanding so far. This is the big breaking that we have coming in right now in terms of Amrinder Singh and of course the merger with BJP, which we understand is going to be happening on Monday. Now the captain's PLC to merge formally into BJP on Monday will be in New Delhi. We're also understanding that the merger has scheduled after marathon meetings between Captain Amrinder Singh and senior BJP leadership. So captain's party to be merging with BJP leadership, and we also understand that this will be happening on Monday in New Delhi. Now this is the big exclusive break that we have on Republic, where we're understanding that this captain's PLC to merge formally with BJP on Monday, and we're also understanding that this merger has come after marathon meetings between the captain and of course the senior BJP leadership. Now moving on, Republic Media Network is determined to mark 75 years of independence with a keen belief and uncompromising resolve that India goes forth, national unity and social harmony are paramount. With its journalism dedicated to the nation and in the true spirit of nationalism, Republic Bharat is hosting a nationwide summit today. Watch India's biggest names ideate. All right, viewers, we are at the Rashtra Sarvopari Sammelan, and this is a huge event today. It's going to start, it's just in 15-20 minutes, and the inauguration is going to be by the Defence Minister, Rajnath Singh. You can just understand how big this event is. This is the biggest event of the year. It's hosted by our sister channel, Republic Bharat. It's all about putting our nation first, where we'll have the biggest thought leaders, and we will have the biggest names in politics to talk about India's vision for the future as India approaches the 100th year of independence. So right now there's a lot of buzz in the air. My colleague Suresh is also here, where we have spoken to the guests which are coming here, and of course when it comes to the list of names, I mean, we boast a huge when it comes to names, the biggest names are coming. Smriti Irani and Amit Shah is expected to come soon. This is a very, very big event at this point of time. And I also want to go across to Swesha, who is also joining us. She's at a different vantage point. Swesha, what is happening where you are? Okay, obviously, Shivangi, now we see things settling a little bit. And for our viewers outside of New Delhi, it's raining slightly. The weather is nice, and you see how the security is being heightened right now because some very prominent personalities expected today, politicians, union ministers, actors, and influential voices in the country. So now we are slowly seeing Arnab is there. If my camera can pan, I don't know if he'd be able to talk right now. Arnab, sorry, possible to get a quick word? Yes, absolutely. I understand last minute preparations. We're about set to begin. Yeah. But our viewers want to hear from you. Well, How are you preparing? This is one of our big events in the post-COVID period, hopefully. So we're really looking forward to it. We have a fantastic attendance. The Defence Minister will be here shortly. We have several cabinet ministers, important panelists today. But it's more than that. It's the getting together and celebrating the success of Republic Bharat, which has emerged as one of the most popular channels in the country, and we're really looking forward to it. The whole team is here, so very excited. Absolutely. And Arnab, again, I know you're in a rush, but quickly, how did the plan come about in terms of the sessions we are having, the guests we have? How did you break down everything and bring it together? Well, it's pure simplicity to it, in the sense that we thought that the most obvious theme is nation first, and we have achieved so much as a nation. We are acknowledged to be moving towards economic superpowerdom. Strategically, we have truly made our mark,
and in the post-COVID world, and say a quarter, maybe a quarter of a decade from now, things will really move up in this country to a point where we will look back at this event and say it was the setting stage of a conversation about how far India will really go. So it's simple. Nation first is the theme, and I am looking forward to the chats we have today. What a wonderful day with the way we began. Thank you. I'm not going to hold you anymore because I know you have to make your way inside. Yes. Thank you. Absolutely. Thank you so much. So like you see, all the faces of Republic right here, and Arnab talking to our sister channel Republic Bharat, the Republic Bharat Summit, Nupur, and slowly you see the crowds from here are clearing. They're all making their way inside. If I can just ask my VJ to follow me to give you a quick sense of how the venue is looking like at this point. You see most of the defense experts, the political analysts who would be a part of this session today have made their way inside. The LEDs are lit up now, and I don't want to show you too much because let's also hold it for when the sessions begin. But yes, in some time from now, the keynote speech that will begin, Union Minister Rajnath Singh will be here. So on that note, we'll slip into a very short commercial break right now. We'll be back on the other side and tell you more about what's going to happen. Not very long until we have to wait. Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. आरोपी इस पूरे And yes, we are here at the Republic Bharat Summit. Like you see that any minute now, the show is going to begin. A long day lined up, an action-packed day for our viewers. This is the Republic Bharat Summit. Rashtra Sarvopari is the theme, a very important juncture at which these discussions are going to take place. 75 years of India's independence, Azadi ka Amrit Kal, and which is why you'll hear the most prominent names, the most prominent faces in the country who will all gather here in the national capital at this very venue. Nation first, no compromise, a clear motto of Republic. And like Arnab also put it very aptly that, you know, our motto is very simple. We are nationalists. We stand with everything and everyone who is for the nation. And Team Republic really doing the last minute preparations here. Some of our cameras that are outside, a lot of our teams inside, last minute coffee sessions that are happening. Arnab, Abhishek Kapoor, my colleague Shivangi here, my colleague Ankit here, Shazia here. So yes, this is really to give you a sense of what it is looking like right now. And you know, we always show you behind the scenes of what is happening. So this is that very moment where in some time from now, I can already hear the audio levels increasing bit by bit, because the show is set to begin anytime now. We're not really going inside for a reason, because we also want to keep in store of what is going to happen and how it's going to look like. But all our cameras that are already standing inside, and security, Aishwarya is also
telling us. Any moment, Rajnath Singh is going to arrive. So I'm just going to request you to stop this, and we have to move inside the hall because of the RM security. So the Republic Summit is just going to begin, the R Bharat Summit, Rashtra Sarvopari Summit. Any moment. So can't get clearer than that. Any moment is when we are going to start, and the security is obviously taking over. So we're being asked to go inside. Nupur, if you can hear me, I know that our cameras are live 24/7, and that is how we do it. But if I can just show you, is getting ready with the steady cam, because every moment of our keynote speaker, Union Minister Rajnath Singh, will be captured on that camera. So like you see, literally last minute preparations. Everybody has signed up. The security checks have happened. This entire area has been cleared out, and now we're going to be making our way inside. I'm really hoping we can take the camera inside, but for now we're being told that since the preparations are happening, let's not disturb that very much. But like you know, Union Minister Smriti Irani, Anurag Thakur, Rajnath Singh are going to be a part of today's sessions that are going to happen. Team Republic Bharat that are already inside. A lot of our anchors, Syed Sohail, Shazia, all of them are already inside. They are now doing the last minute audio checks, and you see how we are just getting ready. So any moment we're about to start. And for our viewers, again, like I've been saying, it is an action-packed day. It is an action-packed day. Rashtra Sarvopari, that is always the motto that Republic Bharat has functioned on, and exactly what the Republic Media Network is going to be talking about today. How India has been growing at a steadfast pace, and all of our achievements that need to be spoken about, all of how the youth is moving forward, the direction in which the country is moving ahead. The celebration of 75 years of India's independence, and how we are heading towards a change. So Shazia, in fact, also spoke to Arnab a while ago, like he spoke to us. Republic Bharat, Rashtriya Sarvopari. Let's listen into how the day is looking like. Well, you know, this is one of our big events in the post-COVID period, hopefully. So we are really looking forward to it. We have a fantastic attendance. The Defence Minister will be here shortly. We have several cabinet ministers, important panelists today. But it's more than that. It's the getting together and celebrating the success of Republic Bharat, which has emerged as one of the most popular channels in the country. And we're really looking forward to it. The whole team is here, so very excited. Absolutely. And Arnab, again, I know you're in a rush, but quickly, how did the plan come about in terms of, the sessions we are having, the guests we have, how did you break down everything and bring it together? Well, it's pure simplicity to it, in the sense that we thought that the most obvious theme is nation first, and we have achieved so much as a nation. We are acknowledged to be moving towards economic superpowerdom. Strategically, we have truly made our mark, and in the post-COVID world, and say a quarter, a quarter of a decade from now, things will really move up in this country to a point where we will look back at this event and say it was the setting stage of a conversation about how far India will really go. So it's simple. Nation first is the theme, and I'm looking forward to the chats we have today. What a wonderful day with the way we began. Thank you. I'm not going to hold you anymore because I know you have to make your way inside. Yes. Women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal, assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside
Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagya Lakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। And like you see, our keynote speaker, Union Minister Rajnath Singh has just arrived. He's accompanied by Arnab Goswami and Aishwarya Kapoor. They're slowly making their way inside. So this will literally give you a sense of the fact that we're just about to begin any second now. He's making his way right to that very door which will lead to the dais. And Arnab Goswami accompanying our keynote speaker, Union Minister Rajnath Singh, who has just made his way inside Republic Bharat and the summit with the motto Rashtra Sarvopari Sammelan that is just about to start any second now, and I can already hear the cheering sounds to welcome our keynote speaker. Let's quickly cut into the session and listen in to what Rajnath Singh has to say. देश की सीमाओं को सशक्त बनाने में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो अहम रोल है, जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका है, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का। और मुझे लगता है कि इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में सर्वप्रथम राष्ट्र है और राष्ट्र को अनुमोदन के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एक उम्मीद और प्रयत्न का दीप जलाना जरूरी है। माननीय रक्षा मंत्री जी, आपसे अनुरोध करेंगे।
मुझे लगता है कोई भूला नहीं होगा कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था जिसने किस तरह से पाकिस्तान तक में हड़कंप मचा दिया था, सनसनी मचा दी थी कि कैसे हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे पास हो पर शक्ति स्वरूपा शारदा जी का धाम एलओसी के पार हो। ये हो नहीं सकता है। और माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके उस बयान ने सबको याद दिला दिया कि अभी क्या करना है आगे। मुझे लगता है इसी बयान से, जहां एक तरफ पाकिस्तान में हड़कंप मचा, वहां सेनाओं को इस बयान ने और सशक्त किया और कैसे रक्षा मंत्री जी तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं और उन्हें और सशक्त बना रहे हैं। आइए देखते हैं। अपनी सरहदों की सुरक्षा को लेकर भारत विश्व को स्पष्ट संदेश देने में सफल रहा। नया भारत दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद करता है। इस संदेश का बड़ा श्रेय जाता है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को। भारत का सुरक्षा तंत्र अभेद्य, सीमाएं सुरक्षित करने के साथ ही श्री राजनाथ सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व में हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल 7वें आसमान पर है। भारत की बढ़ती हुई सैन्य क्षमताएं, सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ ही हमारे लिए गर्व की बात है। आज दुनिया के तमाम देश भारत में निर्मित हथियारों का प्रयोग भी कर रहे हैं। इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की राह में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। यह दो ऐसे पिलर्स हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स और एकेडमिया आदि के बीच भारत की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सहयोग और समन्वय की यह राह प्रशस्त करते हैं। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में रक्षा क्षेत्र का अग्निपथ, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को। सर। श्री राणो जी और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं अपनी इस खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि आप लोगों ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा आयोजित कार्यक्रम, जिसकी थीम है राष्ट्र सर्वोपरि, उसमें विचार करने के लिए आमंत्रित किया है। रिपब्लिक मीडिया समूह के बारे में जितनी हमारी जानकारी है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि थोड़े समय में ही इस रिपब्लिक मीडिया समूह ने जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में जो कामयाबी हासिल की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मुझे यह भी बताया गया है कि देश भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोगों तक रीच बनाने में यह मीडिया समूह ने अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं समझता हूं इस मीडिया समूह के लिए बहुत ही एक गौरव का विषय है। और रिपब्लिक भारत द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम न केवल आयोजन की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि मैं यह मानता हूं राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जिस पृष्ठभूमि में यह कार्यक्रम हो रहा है, वह भी अपने में महत्वपूर्ण है। और थीम का जहां तक प्रश्न है, थीम तो अपने में महत्वपूर्ण है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश प्रगति के पथ पर जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देशवासियों का राष्ट्र प्रेम की भावना जो उनके अंदर है, इस भावना के परिणाम स्वरूप एकजुट होकर वह कार्य कर रहे हैं।
बिना राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना और बिना एकजुटता के दुनिया का कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता है, यह हमारी मान्यता है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि थीम पर यह आयोजन मैं मानता हूं कि अपने संकल्पों की और साथ ही साथ अपने उद्देश्यों की भी यह अभिव्यक्ति है और साथ ही देश की जनता की भावना, राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में भी एक यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। और रिपब्लिक भारत मीडिया समूह के इस प्रयास के लिए मैं पुनः रिपब्लिक भारत मीडिया को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, राष्ट्र सर्वोपरि मैं समझता हूं कि यह हमारे राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक यह महामंत्र है। हम अपने मन, वचन और कर्म से राष्ट्र को केंद्र में रखें और उसके हित के अनुरूप कार्य करें। यही राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है, यही राष्ट्र को ऊंचाइयां हासिल करा सकता है। यहां राष्ट्र सर्वोपरि के संबंध में मैं समझता हूं मेरे दो अर्थ हैं। एक यह, जैसा कि मैंने अभी कहा कि राष्ट्र को सदैव हम अपने केंद्र में रखें और उसे अपने से ऊपर रखें, और दूसरी बात कि अपने राष्ट्र को हम पूरी दुनिया में सर्वोपरि बनाने के लिए हम भगीरथ प्रयास भी करें। हम अपने सम्मिलित प्रयासों से न केवल देश को विकसित बनाएं, बल्कि चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, नॉलेज टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में भारत को अग्रणी बनाने का हम सबको संकल्प लेना होगा। और मैं कह सकता हूं कि इस समय भारत में जन सामान्य में यह भावना पूरी तरह से व्याप्त है कि हमको भारत को विश्व गुरु के पद पर पुनः स्थापित करना है। इस भावना के साथ संपूर्ण देशवासी इस समय काम कर रहे हैं। और मित्रों, आज भारत की आजादी के 75 वर्ष का लंबा समय गुजर चुका है और आने वाले 25 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने इसे अमृत काल का नाम दिया है। और इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही और उनकी हर बात से जब भी उनका कोई भाषण होता है एक बात निश्चित रूप से सामने आती है, नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र सर्वोपरि। और नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर चलकर ही मैं कह सकता हूं कोई गवर्नमेंट हो यदि वह काम करेगी तो उस देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। मैं नेशन फर्स्ट की भावना को अपने दिल में संजोए हुए हमारी सरकार ने कितना काम किया है, अधिक किया है, कम किया है, इस विवाद में न पड़ते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करके भारत नेशन, यह हमारा भारत डेवलप्ड नेशन बन सकता है। यह हम सबका एक विश्वास है। मित्रों, आप यह कह सकते हैं कि जब हमें आज़ादी मिली उस समय भारत कमजोर था और इस सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता। गरीब था, इसलिए उसे विकास की राह पर रफ्तार पकड़ने में समय लगा। सहज रूप से मैं भी इसे स्वीकार करता हूं, मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1950 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। और यह बात जो मैं कह रहा हूं हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। 1960 में वह लुढ़क कर 8वें स्थान पर आ गई और 1970 में वह 9वें स्थान पर आ गई और 1980 में वह टॉप 10 की सूची से बाहर हो गई। और 90 के डिकेड में थोड़ा सुधार हुआ, मगर टॉप 10 की रैंकिंग में तब भी भारत बाहर ही था। बदलाव की शुरुआत प्रारंभ हुई अटल जी या थोड़ा उसके पहले कह सकते हैं कि शासन में आने के बाद जिस तरीके से अटल जी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया, हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कों से क्या लाभ होता है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, जन सामान्य को इसका एहसास हुआ। केवल चौड़ी चौड़ी सड़कों का ही निर्माण नहीं किया, चाहे रेलवे हो, चाहे रोड्स हो, अथवा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का मामला हो,
इसमें आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले प्रभावी पहल यदि किसी प्रधानमंत्री ने की तो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था उन्होंने किया। गरीब कल्याण के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की थी और उसी का परिणाम था कि देश की अर्थव्यवस्था ने जीडीपी की ग्रोथ रेट उस समय 8% को क्रॉस कर गई थी। 8.4% उस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट थी। दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की वापसी मैं मानता हूं पिछले 10 वर्षों में हुई, जब वह 9वें पावदान पर आया। और आज 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में आकर ये हमारा भारत खड़ा हो गया। यानी पिछले 75 सालों में हम जहां से चले थे वहीं अब जाकर हम पुनः वापस लौट आए। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद अर्थव्यवस्था न केवल विकास की दर बढ़ी है उसकी, बल्कि उसके पहले की तुलना में एक डायनेमिक और स्ट्रांग भी हमारी इकोनॉमी को हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। और ये क्यों संभव हुआ? वह इसलिए संभव हुआ कि पिछले 8 वर्ष में जहां कई प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए गए, वहीं पर कई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए। इतना ही नहीं, 1000 की संख्या में या उससे अधिक ऐसे पुराने कानून थे, सारे कानूनों को हमने समाप्त किया। और इन्वेस्टमेंट के लिए सारे देश में एक अच्छा वातावरण बनाने का काम भी इस गवर्नमेंट ने किया। और इसके लिए मैं कह सकता हूं बड़े पैमाने पर प्रयास हुए हैं, प्लान्ड वे में इसके लिए प्रयास किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और 2017 की मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं, जिसको लेकर हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने भी और कुछ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने भी जिसका विरोध किया था। जिस समय 2017 में हम लोगों ने जीएसटी रिफॉर्म किया था, और आज देश में मैं कह सकता हूं इस रिफॉर्म के कारण एक टैक्स बायंसी भी आई है और उसमें जीएसटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अभी अगस्त में आपको जानकारी होगी 1.43 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और अनुमान है कि अक्टूबर में ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। इस बात की संभावना है। आप सोच रहे होंगे कि टैक्स कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, यह कौन सी हमारी मेजर अचीवमेंट है, लेकिन इस सच्चाई को कौन नहीं स्वीकार करेगा। यह जो टैक्स कलेक्शन होता है इसी से डेवलपमेंट होता है। और इतना ही नहीं, इन्हीं सब टैक्स कलेक्शन के द्वारा आई जो धनराशि होती है उसी से गरीबों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। जहां तक बिजनेस की रफ्तार पकड़ने का सवाल है, बिजनेस में सुविधाएं मुहैया कराने का सवाल है, आप सभी जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, और जीएसटी जैसा बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया गया और भारत का कैश बेस्ड इकोनॉमी को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट भी हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है। साथियों, पहले लोग यह मानते थे कि अर्थव्यवस्था जैसी चीजों में केवल बड़े बड़े पूंजीपति में अब ये शब्द ही बहुत पुराना हो गया, क्योंकि मैं पूंजीपति कहकर जैसे पहले लगता था लोग इस देश के लिए काम करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे सब सारे लोगों को जिस सम्मान के नजरिए से देखा जाना चाहिए था और नहीं देखा जाता। लेकिन आज मैं कह सकता हूं ऐसे हालात हम लोगों ने पैदा किए हैं कि आज हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो लोग लगे हुए हैं उनको भी आज हिंदुस्तान सम्मान की नजरियों से देख रहा है और यह गवर्नमेंट उनके प्रति भी एक विश्वास का भाव अपने अंदर रखती है। और मैं कह सकता हूं पहले यह धारणा थी वही हमारे देश की अर्थव्यवस्था के स्टेक होल्डर हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में हमने भारत के गरीब से गरीब आदमी को भी देश की अर्थव्यवस्था का स्टेक होल्डर बनाया है। याद दिलाना चाहता हूं आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना की, और इस योजना के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहला टेन्योर जब था उसमें मैं भारत का गृह मंत्री था। बैठक प्रधानमंत्री ले रहे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, कुछ और मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज मौजूद थे, मैं भी उस बैठक में मौजूद था।
जब यह प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात चलने लगी तो स्वयं, क्योंकि इसके पहले हमारी चर्चा नहीं हुई थी, मैंने पूछा तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनाथ जी, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो हम लागू करने जा रहे हैं यह करिश्मा है। मुझे यह कल्पना नहीं थी, विश्वास नहीं था, लेकिन बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो यह पहल की थी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, वह केवल गरीबों को अकाउंट होल्डर ही नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था में भारत के गरीबों को स्टेक होल्डर भी बनाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू की है। जनधन, आधार और मोबाइल, यह त्रिमूर्ति ने देश में डिजिटल इकोनॉमी को एक मजबूती दी है। और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के दूसरे देश इस पर आश्चर्य भी व्यक्त कर रहे हैं। आज भारत में डिजिटाइजेशन की रफ्तार 30% से अधिक है। जो डेवलप्ड और उभरती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, मैं कह सकता हूं उन सारी अर्थव्यवस्थाओं से भी यह अधिक है। मित्रों, इस स्वयं की रणनीति का यह परिणाम हुआ है कि जो देश का डिलीवरी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सुधार हुआ है, और केवल सुधार ही नहीं हुआ है बल्कि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी आई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने देश की जीडीपी में सब्सिडी का प्रतिशत बढ़ा दिया है, ऐसा भी नहीं है। 2000 में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, टोटल सब्सिडी जीडीपी की 2% थी, और 2022 में भी यह केवल 2% के ही आसपास थी। मगर अंतर इस बात का है कि हमारा डिलीवरी सिस्टम पहले के कंपैरिजन में ट्रांसपेरेंट हुआ है और काफी इफेक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से सब्सिडी का वास्तविक लाभ जिन बेनिफिशियरीज को, जिन लाभार्थियों को मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। अब बैंकों में यह अकाउंट खुल जाने से भारत के गरीबों को हर योजना का सीधा लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आज तक कभी मैंने आलोचना नहीं की है और मैं करना भी नहीं चाहता हूं। और राजीव गांधी जी की भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है और मैं सम्मान की ही अभिव्यक्ति करता हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने एक चिंता व्यक्त की थी। क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा नीचे के लिए भेजते हैं, लेकिन बामुश्किल नीचे 15 पैसा लोगों की जेबों तक पहुंच पाता है, यह राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं मित्रों, यदि आज हमारी गवर्नमेंट 100 पैसा ऊपर से भेजती है तो 100 का 100 पैसा यह गरीबों की जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी उधर उधर नहीं जाने पाता। भ्रष्टाचार की चर्चा होती है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि भ्रष्टाचार को आमूल चूल हम लोगों ने समाप्त कर दिया, लेकिन उसको मिनिमाइज करने की दिशा में हम लोगों ने इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, यह बात मैं कह सकता हूं। और मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो केवल भाषण देकर कम नहीं किया जा सकता, बल्कि सिस्टम में बदलाव लाकर ही उसे कम किया जा सकता है। और हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है, मैं कह सकता हूं आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते तो निश्चित रूप से उन्हें यह देखकर सुखद अनुभूति होती, मेरा यह मानना है। साथियों, कभी कैश लेन देन के ऊपर पूरी तरह से जो भारत निर्भर रहता था, मैं कह सकता हूं आज सिर्फ एक महीने में 6 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से 10 ट्रिलियन रुपयों का लेन देन यही भारत कर रहा है। और एक गैर सरकारी रिपोर्ट बीसीजी फोन पे के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, 2026 में भारत में 65% लेन देन यानी ट्रांजैक्शन ये डिजिटल होंगे और इसका मूल्य करीब $10 ट्रिलियन का होगा। एक नॉन ऑफिशियल एक एजेंसी है, उसी ने ये आंकड़े दिए हैं। और इसी तरह मिशन गति शक्ति के अंतर्गत केंद्र सरकार ने
$1.5 ट्रिलियन की व्यवस्था की है। यह नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करने का निर्णय हमारी गवर्नमेंट का है, इसलिए किया है, लगभग 100 लाख करोड़ रुपए का। इसके अंतर्गत एक ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है जो देश में हाईवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, मेट्रो रेल बनाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहा है। और मित्रों, एक समय था जब केवल अमीर आदमी ही हवाई यात्रा कर सकता था, लेकिन उड़ान योजना के बाद एक करिश्मेटिक काम हुआ है कि आज हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी इस उड़ान योजना लागू होने के बाद 5 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से आज वह भी हवाई यात्रा कर सकता है। पहले मेट्रो कलकत्ता में थी और बाद में फिर दिल्ली में हुई, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि छोटे छोटे महानगरों में भी अब आपको मेट्रो रेल की सुविधाएं जो है देखने को मिलेंगे। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस दिशा में हमारी गवर्नमेंट तेजी के साथ काम कर रही है। आज इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन संभवतः चीन को छोड़कर शायद दुनिया में कहीं और नहीं है, परंतु चीन में भी अभी स्लो डाउन चल रहा है। और भारत में यह बात भी आप कह सकते हैं, कभी कोई कल्पना नहीं करता था 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर पर डे हाईवेज का निर्माण हो रहा है। मुझे याद है कि जिस समय अटल जी ने इस कैंपेन को प्रारंभ किया था तो उस समय 18 सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस समय मैं ही था, 10-11 महीने के लिए पहले मैं ही बना था। 18 किलोमीटर 19 किलोमीटर सड़कें यदि बनती थी पर डे, लोग कहते थे क्या बात है। आज वह करिश्मा हो गया कि 37 किलोमीटर रोड्स प्रतिदिन बन रही हैं। साथियों, उसी के साथ देश में एक डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हुआ है। आप सबको जानकारी होगी इस बात की, जागरूक आप सब लोग हैं कि 2014 और 15 में जहां पर 400 to 500 स्टार्टअप्स थे, आज आप जानते हैं 8 वर्षों के अंदर ही क्या करिश्मा हुआ है। 8 वर्षों के अंदर ही आज 75,000 स्टार्टअप्स हमारे भारत में, और इनमें से 105 फिगर थोड़ी हो सकती है, 1-2 का इधर उधर हो, अप्रॉक्सीमेटली 105 ऐसे स्टार्टअप हैं यूनिकॉर्न बन चुके हैं, यानी जिनकी $1 बिलियन की से अधिक की वैल्यूएशन है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, यह प्रमाण है इस बात का कि आज देश में पहले की अपेक्षा कोई भी व्यवसाय या उद्योग शुरू करना आसान हुआ है। मैं पहले के कंपैरिजन में मैं कह रहा हूं, और 2014 में भारत की गिनती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में जो की जाती थी तो हमारा भारत 147वें पायदान पर था, लेकिन आज आप कह सकते हो आपके हमारा भारत 147वें पायदान से उछलकर आज 63rd यानी 63वें पायदान पर आ गया है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, और यह नीचे जाने वाला है। और इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारी सरकार और प्रधानमंत्री का फोकस इस देश में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर भी इस समय बना हुआ है। कोशिश है कि ईज ऑफ लिविंग इसको कैसे बढ़ाया जाए, और इसके अंतर्गत हर नागरिक तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जानकारी आप सबको होगी ही कि 2014 में आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद 18,000 ऐसे कुछ विलेजेस थे जहां तक बिजली पहुंची ही नहीं थी, जिस गांव के लोगों ने बिजली की रोशनी देखी ही नहीं थी कभी अपने गांव में। उसे करने का काम तो हमारी गवर्नमेंट ने किया। उसके साथ ही साथ हर व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री बनने के साथ ही मोदी जी ने कहा था
कि हम 2022 समाप्त होते होते यह प्रयत्न करेंगे कि हिंदुस्तान में एक व्यक्ति भी शेष न बचे जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। और आज मैं कह सकता हूं शायद ही कोई बचा हो। प्रयत्न की बात कही थी उन्होंने, संकल्प था, लेकिन उस संकल्प को भी हम लोगों ने पूरा किया है। हर व्यक्ति चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, उसके घर में जल पहुंचना चाहिए। तो जल के लिए उसने किलोमीटर 2 किलोमीटर जाकर और सिर पर घड़ा भरकर माताओं बहनों को न लौटना पड़े, बल्कि जल पहुंचना चाहिए तो उसके घर में पहुंचना चाहिए और नल से जल पहुंचना चाहिए। इस अभियान को भी हमारी गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है और बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों के घरों में यह जल नल के माध्यम से आज पहुंच रहा है। कई राज्यों में मैं स्वयं गया हूं, पब्लिक मीटिंग में खड़े होकर मैंने पूछा है कि आपके यहां ये व्यवस्था मुहैया हो गई। कुछ राज्यों ने कहा काम हो रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों ने यह कहा कि नहीं, हमारे यहां यह व्यवस्था काफी हद तक पूरी हो गई है। इसी प्रकार माने यह सब सारे जो काम हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका भी एम्पावरमेंट होना चाहिए। जब तक समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों का एम्पावरमेंट नहीं होगा तो हम भारत को जैसा भारत बनाना चाहते हैं वैसा भारत बनाने में हमें कठिनाई होगी। एक समस्या है इलाज की। गरीब बीमार हो जाता था, आप भी जानते हैं, दिल्ली में भी आपने देखा होगा, पैसे के अभाव में अपना इलाज वो नहीं करा पाता। आयुष्मान भारत योजना जो यह लागू की गई है, गरीब से गरीब व्यक्ति, सबसे समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि वह बीमार हो जाता है तब दवा के अभाव में अथवा ट्रीटमेंट के अभाव में वह दम तोड़ने नहीं पाएगा। इस बात की पक्की गारंटी है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने एक हेल्थ सिक्योरिटी की एक योजना लागू की है जिसे हमने आयुष्मान भारत की योजना कहा है। इसी तरह जब देश में कोरोना का संकट गहराया और गरीब परिवार थे उनके समक्ष आजीविका का संकट आया, इस बात की भी आप सबको जानकारी है कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को फूड सिक्योरिटी कवर देने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है। आज तक ऐसा न भारत के इतिहास में कभी हुआ है न दुनिया के किसी देश के इतिहास में कभी हुआ है। और मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था को डायनेमिक और इफिशिएंट बनाने का ही यह परिणाम है कि आज जब दुनिया में बड़े बड़े विकसित देश, डेवलप्ड कंट्रीज, रिकॉर्ड महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं महंगाई भारत में बढ़ी है, लेकिन महंगाई भारत में बेकाबू नहीं होने पाई है। आंकड़े मैं देना चाहता हूं। आज ब्रिटेन में 18% के आसपास रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, अमेरिका में अप्रॉक्सिमेटली 9 to 10% है। और मैं इन देशों का नाम ले रहा हूं, ब्रिटेन और अमेरिका की, कई डिकेड तक, कई वर्षों तक उन्होंने महंगाई के कभी दर्शन नहीं किए थे। भारत ने तो अपनी इस आजादी के काल में कई बार महंगाई के दर्शन किए हैं और कई बार महंगाई के संकट से भारत जूझा है। लेकिन जबकि भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन अप्रॉक्सिमेटली 7% है। मित्रों, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में महंगाई पर काबू रखने और आर्थिक सुधार करने का ही यह परिणाम है कि आज फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की तरफ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, 2021-22 में $83 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। पहले के भी आंकड़े उठाकर देखिए आप। और अभी केवल अगस्त महीने में $6 बिलियन का FDI यह भारत में आई है, भारत की स्टॉक मार्केट्स में। और जब दुनिया में बाजारों में पूरी मंदी की आशंका थी, बनी हुई थी, यानी कह सकते हैं कि मंदी की आशंका जोर पकड़ रही थी, तो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में एक उम्मीदों का यह केंद्र बनी हुई थी। और आपको जानकर यह सुखद आश्चर्य होगा कि 2021-22 में भारत से होने वाला एक्सपोर्ट जो $400 बिलियन था,
वह बढ़कर $418 बिलियन हो गया है। और आज मैं इस कार्यक्रम में आपको आश्वस्त करके जा रहा हूं कि यह एक्सपोर्ट आगे $418 बिलियन से और अधिक आगे बढ़ने वाला है। आप ये कहेंगे कि आप कैसे भविष्यवाणी आप ये कर रहे हैं? मैं स्वयं डिफेंस से जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने डिफेंस में ही देखता हूं कि हम कितना एक्सपोर्ट करने की हम तैयारी कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं। इस आधार पर मैं कह रहा हूं। साथियों, इन सब सारी बातों के साथ आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्था में जो स्लो डाउन आया है उस संकट से वो जूझ रहे हैं, उसका वो सामना कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट 2022-23 में जो रहने का अनुमान लगाया है कि ग्रोथ रेट कितनी रहेगी जीडीपी की, ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ रेट, वो बतलाया है कि अप्रॉक्सिमेटली 2.9% रहेगी। जबकि भारत की ग्रोथ रेट के बारे में उसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया है कि वो 8.2% रहेगी। क्या हम सबके लिए गौरव की बात नहीं? और मित्रों, पहली तिमाही की जो आंकड़े आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, और भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट, हमारे जीडीपी की ग्रोथ रेट अप्रॉक्सिमेटली 13.6% निकल कर आई है। 13.6 की ग्रोथ रेट के बारे में तो कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। और दुनिया के सारे विशेषज्ञ हैरान हैं इस बात से कि जहां दुनिया में विकास का सूखा पड़ा हुआ है, भारत में यह जीडीपी अपने झंडे गाड़ रही है। साथियों, मगर हम इतनी सफलता के बावजूद अपने प्रयासों को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण कदम उनके नेतृत्व में उठाए गए हैं। कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और इसमें हमारी नीति है राष्ट्र सर्वोपरि। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को संबोधित करते हुए यह कहा था कि जिस देश में 18-20 साल का होते ही आम परिवारों में नवयुवकों को आत्मनिर्भर बनाने की अपेक्षा रखी जाती है, वहां भारत की आत्मनिर्भरता सुरक्षित करने के लिए एक बड़ा लंबा इंतजार किया गया है। यह बात उन्होंने कही थी और इस इंतजार को खत्म करने की घड़ी अब आ चुकी है। यह विश्वास भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त किया था और वही हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में भी स्पष्ट कर दिया था, भारत को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना है। यदि अन्य देशों पर हम निर्भर रहते हैं तो यह देश हित में नहीं है। भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में ही इन चीजों का निर्माण होना चाहिए। यह संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय दिया था। मित्रों, कई बार लोग यह पूछते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आप ऐसा क्या करेंगे कि कोई करिश्मा हो जाएगा। रक्षा मंत्री होने के नाते मैं बतला सकता हूं, कुछ अन्य विभागों के बारे में भी बतला सकता हूं, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक समय की सीमा होती है। मैं हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, केवल भारत की ही प्राइवेट इंडस्ट्रीज को नहीं, दुनिया के कई देशों में डिफेंस मिनिस्टर रहने के कारण मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। आपको खुशी होगी कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी डिफेंस में सेक्टर में भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। अभी डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों हमारी अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ऑस्टिन के साथ बात हुई, शायद वह समाचार पत्रों में आपने देखा होगा। उन्होंने मैं बताऊंगा नहीं किस चीज की टेक्नोलॉजी, एक बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की उन्होंने अपनी सहमत दे दी है। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण करना होगा तो हम भारत की धरती पर। अब उस टेक्नोलॉजी की मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा और आपको अखबारों के माध्यम से इस बात की भी जानकारी मिली होगी। एज ए डिफेंस मिनिस्टर हमने 310 आइटम्स ऐसे आइडेंटिफाई कर दिए हैं
और आइडेंटिफाई करके कह दिया है ये 310 आइटम्स, कुछ आइटम्स 22 तक, कुछ आइटम्स 23 तक, कुछ आइटम 24 तक, कुछ आइटम 25 तक भारत में हम बनाएंगे। किसी भी सूरत में अब दुनिया के दूसरे देशों से हम इसे इंपोर्ट नहीं करेंगे। 310 आइटम्स ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारी जो चल रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, आपको आश्चर्य होगा 3500 ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में हमने फैसला किया है और इसको कहा यह पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट है कि हम एक निर्धारित समय के बाद कुछ 22, 23, 24, 25 स्टेप बाय स्टेप हम भारत में बनाएंगे, किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से नहीं मंगाएंगे। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। मोर देन 3500 ऐसे आइटम्स आइडेंटिफाई किए हैं कि उनका इंडिजिनाइजेशन करेंगे, भारत में ही बनाएंगे। और आपको जानकर यह खुशी होगी कि बहुत सारे ऐसे मेजर पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं कि अब बहुत मेजर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, अब वो इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, उनका निर्माण भारत में होगा। हम लोगों ने कहा है आइए भारत में बनाइए, भारत के लिए बनाइए, और केवल भारत मेक इन इंडिया ही नहीं, आइए मेक फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए भी भारत की धरती पर बनाइए, भारतवासियों के हाथों से बनाइए। मैं भारत के मिसाइल प्रोग्राम की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, भारत के का पूरा मिसाइल प्रोग्राम इस बात का गवाह है कि भारत के वैज्ञानिक और यहां के विशेषज्ञ यदि ठान लें तो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमारा भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। और मैं कह सकता हूं हमारे देश के वैज्ञानिकों का हौसला बुलंद है, यह बढ़ा हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी भारत में बन रही है। मिसाइल हम दुनिया के दूसरे देशों से लाते थे और आज मैं कहना चाहता हूं 1-2 देशों के साथ तो डिसीजन हो चुका है, कुछ अन्य देशों के द्वारा भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मांगी जा रही है, हम उसका एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। आज हमारे भारत के पास मिसाइल कैपेबिलिटी है, यहां तक कि अंतरिक्ष में भी मिसाइल के सहारे दुश्मनों के एसेट्स को हम खत्म कर सकते हैं। यह ताकत भारत के अंदर है। मिशन शक्ति की सफलता ने यह पूरी दुनिया में इस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया है। और इस देश में भी आधुनिक रक्षा सामग्रियां बन सकती हैं, इस संबंध में मेरा ही विश्वास नहीं है, हमारे मंत्रालय का विश्वास नहीं। जो लोग भी इस प्रकार की सामग्रियों के निर्माण में लगे हुए हैं, सबको पूरा विश्वास है। और मेरा मानना है कि अगले 10 वर्षों में जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में कारगर जितने डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता इस देश में है, हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर लगने की आवश्यकता है। मैं एक उदाहरण यहां देना चाहता हूं, INS विक्रांत, जिसकी कमीशनिंग प्रधानमंत्री ने भी कुछ ही दिनों पहले की है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में बनेगा, आज के कुछ वर्षों पहले यह कोई कल्पना भी नहीं करता था। और जो INS विक्रांत, यह जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें 76% इंडिजिनस कंटेंट है। और आज अब एयरक्राफ्ट कैरियर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने तो नहीं देखा होगा। मैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर रात को जाकर रुका भी हूं और आपको खुशी होगी जानकर मैं 19वीं अथवा 20वीं मंजिल पर जाकर उस कैरियर पर मैं रुका था। कितनी मंजिलें उसमें होती हैं। और आज हमारा भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है। इंडिजिनस कंटेंट 76%। और आगे कुछ और हम लोगों ने सोचा है, उस दिशा में भी हमारा काम प्रारंभ कर दिया है हम लोगों ने। पहले भारत का जहां तक सवाल था, हम मिला जुलाकर कभी 800-900 करोड़, बाद में बढ़कर 1900 करोड़ हो गया है। ये हम डिफेंस आइटम्स, डिफेंस इक्विपमेंट से एक्सपोर्ट करते थे दुनिया के दूसरे देशों में। आज इतने ही वर्षों में हम वो बढ़कर 13,000 करोड़ का हो गया है।
और आप आश्वस्त रहिए 2025 समाप्त होते होते 35,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे भारत की धरती पर। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक भारत में सिर्फ डिफेंस सेक्टर में करीब 1.7 लाख करोड़ का यह बिजनेस हो सके, यह हमारा प्रयास है। और कम से कम $5 बिलियन के डिफेंस इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट करने की क्षमता भारत में पैदा कर सकें। जैसा मैंने कहा, यह काम आसान नहीं है। अभी तक की असंभव से लगने वाले काम को संभव बनाने की इच्छा शक्ति का, विल पावर का जो अभाव था, मित्रों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं अब वह विल पावर का अभाव भारत से समाप्त हो चुका है। भारत ने कभी सोचा नहीं होगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी हम लोगों ने फंडिंग करने का फैसला किया। प्राइवेट नेट से हम आपको भी फंडिंग करेंगे और आपके साथ मिलकर, आपके कोऑर्डिनेशन के साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, नई नई आइटम्स जो है हम ईजाद करेंगे। और आप भी हमारी बात से सहमत होंगे कि भारत को सशक्त और स्वाभिमानी यदि भारत बनाना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। मित्रों, कभी कभी लोगों के सामने इस रूप में बात पेश की जाती है कि आत्मनिर्भर भारत का यह संकल्प यह आइसोलेशन को बढ़ावा देगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत पूरी दुनिया के लिए उम्मीद और राहत देने वाला यह संकल्प है। और आज पूरे विश्व में यह बात चल पड़ी है कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब किसी एक देश में ही नहीं होना चाहिए। और अभी तक ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती थी, मगर बदली हुई परिस्थितियों में मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नए ठिकानों की तलाश कर रही हैं। और उस नए ठिकानों में आकर्षण यदि किसी देश का बढ़ा है तो हमारे और आपके देश भारत के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। और आज जब ग्लोबल इकोनॉमी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए नए ऑप्शंस की जब तलाश कर रही है तो भारत उस तलाश को न केवल पूरा करता है बल्कि यह उम्मीद भी जगाता है कि यह मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को नई लिफ्ट भी देने की क्षमता रखता है। साथियों, आज दूसरे नंबर पर मोबाइल फोन यदि कहीं बनता है तो भारत में बनता है। अब तो एप्पल जैसी भी कंपनी भी भारत में मोबाइल फोन बना रही है। 2 दिन पहले मैंने मीडिया में खबर देखी थी कि कुछ चिप मेकिंग कंपनियां भी भारत में चिप बनाना चाहती हैं, क्योंकि चिप का संकट हमारे भारत में है। हम लोगों के समक्ष भी यह संकट आता है। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं आज भारत ग्लोबल ऑप्टिमिज्म, वैश्विक आशावाद का केंद्र है, क्योंकि इस देश में अपॉर्चुनिटीज हैं यानी अवसर का भंडार है, ऑप्शंस हैं यानी विकल्प का भरमार है, ओपननेस है यानी खुलेपन का विस्तार है। और मित्रों, भारत में जन, मन और सारा तंत्र यह खुलेपन का प्रतीक है। आत्मनिर्भर भारत खुले मन से नए दरवाजे खोलने का नाम है। हमारे दरवाजे बंद नहीं हो रहे बल्कि और खुल रहे हैं। बस शर्त इतनी है कि मैन्युफैक्चरिंग करिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, हमारे देश में करिए, सारी दुनिया के लिए करिए, केवल भारत के लिए मत करिए। यही हमारा उनसे कहना है। भारत के बड़े बाजार की चर्चा अब हर तरफ होती है, पहले भी होती थी चर्चा, खूब धड़ाधड़ माल सारी दुनिया के भारत में बिकते थे। और यहां जो मौका है वो कहीं और नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि हमारे लिए बनाना है तो इसी देश में बनाइए, हम यही कहना चाहते हैं। मित्रों, विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। जो देश अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहेगा वो सशक्त और स्वाभिमानी देश कभी नहीं बन सकता है। और मैं कह सकता हूं, आप भी आश्वस्त रहिए कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। अब मैं उदाहरण दूंगा तो मैं समझता हूं फॉरेन मीडिया भी उसको उठा लेगी।
लेकिन हमारा संकट है कि हमारी कुछ सीमाएं हैं, मैं उदाहरण नहीं दे सकता हूं। समझौते ऐसे ही नहीं हुआ करते। समझौते जो हो रहे हैं पहले क्यों नहीं होते थे? समझौते ऐसे ही नहीं हुआ करते। कमजोर के साथ समझौते नहीं होते, बराबर वालों के साथ समझौते होते हैं। मैं समझता हूं अक्लेमंद इशारा काफी। क्या क्या बातें लोगों के द्वारा की जाती हैं। बहन भाइयों, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का जहां तक सवाल होगा, देश की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी का जहां सवाल खड़ा होगा, भले ही हमारे विपक्ष की गवर्नमेंट हो, हमारे जैसे व्यक्ति कभी एक लफ्ज भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। देश का मनोबल किसी भी सूरत में नहीं तोड़ेंगे। क्या हो रहा है? चिंता का विषय है। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, भारत अब कमजोर भारत नहीं है और भविष्य में भारत की नींव आत्मनिर्भर भारत की मजबूती पर निर्भर है। जंग के मैदान से लेकर खेत खलिहान तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने की कुवत हासिल कर ले, यही आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है और यही संकल्प ही भारत को राष्ट्र, सर्वोपरि राष्ट्र बना सकता है। साथियों, हम बाहर से कितना मजबूत हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अंदर से कितना मजबूत हैं। अंदर की मजबूती बहुत आवश्यक होती है और जंग लड़ने के लिए तो केवल हथियार ही नहीं चाहिए, हौसला चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारे आत्मनिर्भरता का आह्वान, इसी हमारी आंतरिक मजबूती के विजन पर ही आधारित है। और मित्रों, भारत की जीवन शक्ति इतनी मजबूत है कि वह विपरीत परिस्थितियों में भी नई राहें खोजने की क्षमता रखता है। महामारी के दौरान जो कुछ भी हुआ है, कोविड पैंडेमिक के दौरान, वो आप जानते हैं, पीपी किट्स, टेस्टिंग लैब्स, सबका संकट था। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन प्लांट्स नए नए लगाने की दिशा में प्रयत्न हो रहा है। लेकिन विस्तार में नहीं जाऊंगा, जो कुछ भी भारत ने कोविड पैंडेमिक के दौरान किया है, आपने देखा होगा रिपोर्ट में, यदि किसी देश की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चर्चा की है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की सराहना की है। तो कोविड पैंडेमिक को जिस तरीके से हैंडल किया, 215 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दे देना दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ है, इवन चाइना में नहीं हुआ। वैक्सीन जो बनती नहीं थी भारत में, वैक्सीन बनाया, और बनाया ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को, 100 कंट्रीज को मुहैया कराया। यह है भारत। मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख और विश्वसनीयता सारी दुनिया में बढ़ी है। पहले जब भारत कुछ बोलता था ना, तो दुनिया सुनती नहीं थी, और आज जब भारत बोलता है ना, तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, रशिया और यूक्रेन या क्राइसिस के बारे में। आवाज उठती थी भारत के उन परिवारों से जिन परिवारों के बच्चे वहां के मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। बाहर उनको लाओ, बाहर लाओ। लेकिन जो काम भारत ने किया है, दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। और मैं इसे अपने प्रधानमंत्री की एक साख, क्रेडिबिलिटी जो सारी दुनिया में बनी है, उसको श्रेय देना चाहता हूं। कौन है कि वार जोन को वार को रुकवा दे? 4.5 घंटे तक वार जोन में कोई युद्ध नहीं होगा। न यूक्रेन हथियार छोड़ेगा, न रूस हथियार छोड़ेगा। और यह फैसला कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर ली, अमेरिका कहीं बीच में ना आ जाए इसलिए मिस्टर बाइडेन से भी बात कर ली, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात कर ली। और थोड़ी देर के लिए वार जोन में युद्ध रुक गया और 22,500 अपने छात्रों को लेकर हम भारत की धरती पर आए।
अरे भाई कोई बात हमारी काटे तो कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मैं कह सकता हूं। और केवल कोई ताकत बाहुबल के कारण यह ग्लोबल लीडर के रूप में इमेज बनी हो, ऐसा नहीं है। हम बहुत बाहुबली नहीं है, और बाहुबली हम बनना भी चाहेंगे तो केवल अपने कल्याण के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम बाहुबली बनना चाहेंगे। मैं कह सकता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर की ग्लोबल लीडर के रूप में जहां पर इमेज बनी है, वहीं पर क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेंस भी सारी दुनिया में बनी है। यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और पिछले कुछ वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा जो सारे देश और दुनिया में बनी है, उससे आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इतना अब तो हम विश्वास पक्का हो गया है कि यदि ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे तो भारत की दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन आप कहेंगे क्या टॉप 3 तक ही रहना चाहते हैं? टॉप 3 नहीं, हम तो टॉप 1 ही रहना चाहते हैं। लक्ष्य वही है, लक्ष्य वही है। हम करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी। मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा इसी युग में, इसी अमृतकाल में मार्ग प्रशस्त होगा, आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है भारत एक ऐसी महाशक्ति बनेगा जहां वेल्थ भी होगा और विजडम भी होगी। केवल वेल्थ रहने से काम नहीं चलेगा, विजडम भी होगा। एक संकल्प लेकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैं पुनः रिपब्लिक भारत मीडिया, अर्णव जी, अशर जी, या पूरी टीम, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने, आपकी मीडिया ग्रुप ने एक साख बनाई है, एक आपने विश्वसनीयता बनाई है। आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी जब बातें लोगों तक पहुंचती हैं तो लोगों का एक विश्वास पैदा होता है कि हमारे अंदर भी कोई क्षमता है, हम भी कुछ कर सकते हैं। मनोबल ऊंचा करके, तो आपने देखा होगा जब युद्ध होते हैं तो नारे लगाए जाते हैं हौसला बुलंद करने के लिए। हम आगे बढ़ें, भारत निश्चित रूप से वह दिन आएगा जो फिर से महाबली नहीं, विश्व गुरु बनेगा। और भारत दुनिया का अकेला देश है, इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस देश की धरती से, जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दुनिया की किसी एक धरती से गया है, तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से सारी दुनिया को गया है। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, हसरत यही है, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए हम बनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद रक्षा मंत्री जी, आपके इस संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत विश्व गुरु बने, उसकी ओर प्रयत्नशील है देश के युवा, और उस प्रयत्न को पुनः प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत पुनः स्वागत। माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक बात बोली कि समझौते ऐसे ही नहीं हुआ करते। तो एक सैनिक होने के नाते मैं कुछ भाव अपने व्यक्त करना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिखा गया है, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। इसका मतलब क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि जब अगली बार माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जाएं, किसी से भी बात करें, वो राजा हो किसी देश का, वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो दोस्त हो, वो दुश्मन हो, तो उस दूसरे व्यक्ति को, दूसरे हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि मोदी जी के पीछे INS विक्रांत भी है, INS अरिहंत भी है, तेजस भी है, राफेल भी है और 13 लाख भारतीय सेना खड़ी है।
समझौते ऐसे ही नहीं हुआ करते। भारत अगर विश्व गुरु बने तो कैसे बने? शस्त्र और शास्त्र दोनों का इस्तेमाल करना होगा। मैं शस्त्र की बात करूंगा। एक जमाना था जब कारगिल की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी बोफोर्स से, और जबरदस्त हथियार था, इसमें कोई शक नहीं है, जबरदस्त हथियार। जो सफेद चोटियां थी, बोफोर्स ने इतना मारा पाकिस्तानियों को कि चोटियां काली हो गई बारूद से। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आज की तारीख में वो हथियार 40 से लेकर 45 साल पुराना है। नए हथियार अब आना शुरू हुए हैं। तेजस का प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन एक्सेप्टेंस आज की तारीख में मिला। अर्जुन का प्रोग्राम मैं जब 1994 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी थी, जब मैं अपनी यूनिट में आया था, तब मैंने देखा था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। लेकिन अब बोला है कि 2-3 रेजिमेंट्स और खड़ी करो। आज की तारीख में राफेल आया है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स, जब हम बात करते हैं M777 155 mm होविट्जर्स, ये आए। AK-203 कारगिल की लड़ाई हमने लड़ी थी 5.56 mm इंसास राइफल से। मैं उस राइफल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, जिसके दिल पे बीतती है उसी को पता चलता है। मैं कारगिल पे नहीं था, लेकिन वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर वेपन्स। विक्रांत अपने आप में एक जादू है, एक करिश्मा है। विक्रांत अपने आप में एक ऐसी चीज है जो कि भारत का सबसे बड़ा वेपन्स प्लेटफॉर्म है, और विक्रांत जहां जाएगा वहां युद्ध बदल देगा। अंत में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं माननीय रक्षा मंत्री जी से, सर, विक्रमादित्य, विक्रांत, सर अब विराट। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने शब्दों से राष्ट्र सर्वोपरि को एक नया आयाम दिया। माननीय रक्षा मंत्री जी का संबोधन, जिसने एक बार फिर से हम सबको बतौर भारतीय प्रेरित किया है कि विश्व गुरु बनाना है, इस देश को आगे ले जाना है। और अब हमारे साथ राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में जुड़ रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। नड्डा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि वो राष्ट्र सर्वोपरि को परिभाषित करें, 2 शब्द कहें। मुझे जानकारी मिली है कि रिपब्लिक टीवी राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अर्नब गोस्वामी जी के और हमारे रिपब्लिक टीम को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। हम जानते हैं कि रिपब्लिक टीवी उच्च मूल्यों के साथ पत्रकारिता जगत में एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है और देश में समाचार जगत के माध्यम से एक जागृति लाने का काम कर रहा है। जब वो उच्च मूल्यों के साथ पत्रकारिता जगत में काम कर रहा है, तो यह जो उनका मोटो है, यह जो उनका उद्देश्य है, यह जो उनका मंत्र है, राष्ट्र सर्वोपरि, मैं इससे बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। और डिजिटल इंडिया में, इंग्लिश मीडिया में भी रिपब्लिक टीवी ने बहुत कम समय में अपनी एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है, एक पहचान बनाई है। ये राष्ट्र सर्वोपरि उद्देश्य को लेकर के जो वो चले हैं, इसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी नड्डा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने अपने शब्दों से प्रोत्साहित किया और देश को आगे ले जाने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए एक और मुख्यमंत्री हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, और हम चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी 2 शब्द कहें और बताएं वो राष्ट्र सर्वोपरि के बारे में, नेशन फर्स्ट के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार। एक समसामयिक मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने के लिए
रिपब्लिक भारत और श्री अर्णव गोस्वामी जी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं, भारत का वैदिक उद्घोष माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का रहा है। ये भारत की सनातन संस्कार भी रहा है और इसलिए हर भारतवासी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, खान पान सब कुछ अलग अलग होते हुए भी भाव और भावना के साथ एक भारत की परिकल्पना के साथ सदैव जुड़ा रहा है। आदि शंकराचार्य केरल से चलकर के एक सन्यासी देश के 4 अलग अलग कोनों में 4 पीठों की स्थापना करता है। यह उसी भाव को प्रदर्शित करता है जो भारत का सनातन वैदिक उद्घोष है। और नेशन फर्स्ट, यह हमारा सौभाग्य है कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, उस पार्टी का उद्घोष भी यही है कि राष्ट्र प्रथम, पहले राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर कोई अन्य, यानी परिवार उसके बाद आएगा। और रिपब्लिक भारत ने श्री अर्णव गोस्वामी जी ने भी आज इस कॉन्क्लेव का विषय राष्ट्र सर्वोपरि रखा है। याद रखना, अगर हम राष्ट्र सर्वोपरि के भाव के साथ कार्य नहीं कर सकते, इसका मतलब हमारा कोई स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ होगा वहां परमार्थ नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हर नागरिक का प्राथमिक दायित्व है और हर भारतवासी ने उसके अभिव्यक्ति आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर भी व्यक्त किया। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का आह्वान किया कि हर घर तिरंगा फहरना है, और देखते ही देखते पूरे भारत के अंदर करोड़ों घरों के ऊपर भारत की आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। मुझे इस दौरान कई राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि तिरंगा के प्रति और किसी राष्ट्रीय आयोजन के प्रति, राष्ट्रीय पर्व के प्रति जन भागीदारी का इससे अच्छा उदाहरण और अब तक देखने को नहीं मिला जो आज इस बार हम लोगों ने 15 अगस्त को देखने को हमें प्राप्त हुआ। ये राष्ट्र सर्वोपरि के भाव को ही ध्यान में रख करके भारतवासियों ने अपने नेतृत्व के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हुए इसे प्रस्तुत किया। और मैं इस बात को मानता हूं कि रिपब्लिक भारत राष्ट्र सर्वोपरि के इस भाव को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है, इसको एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना रही है। रिपब्लिक भारत को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पत्रकारिता को भी वह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ आगे बढ़ाने के इस अभियान को एक निरंतरता देता रहेगा। इस पूरे कॉन्क्लेव के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। लगातार
Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by Well, the picture on your screens is of the Prime Minister, the Chinese President, the Russian President, the Pakistani Prime Minister, as well as the Uzbek President and other leaders in Samarkand for a group photograph at the Shanghai Cooperation Organization Summit in Uzbekistan. There are, of course, a number of bilaterals also that are lined up for today. The one that's been confirmed so far is between Prime Minister Modi and Russia's President Vladimir Putin, which takes place later today. The agenda of the Samarkand summit of the SCO, of course, is broadly around regional cooperation and security. So there you can see it, all the leaders in Samarkand at a group picture that's being taken ahead of the summit. The Prime Minister, of course, arrived yesterday at Samarkand in Uzbekistan
to attend the first in-person summit that's being held after 2 years. As we are pointing out, of course, there are a number of bilaterals, of course, that are lined up. The biggest amongst them, of course, and on which there will be a lot of international focus as well, is the one between Prime Minister Modi and the Russian President Vladimir Putin. There was talk about Prime Minister Modi also holding talks with the Chinese President Xi Jinping, but that's not been confirmed as of now. The Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif is also in Samarkand for the SCO Summit meeting. Whether a bilateral takes place or not and what is going to be the agenda for that bilateral, we are still waiting and watching out for. Obviously, these bilaterals take place even as there is a core agenda for the Shanghai Cooperation Organization Summit that's taking place, and the core agenda for the summit itself is regional security and also economic development of this entire region. Niranjan also with me right now. Niranjan, the Prime Minister, of course, was part of that group photograph that was taken. But the key one bilateral which the world will also be watching very, very closely is the one between the Prime Minister and President Putin. And that one's been confirmed. Well, you know, what's happening now is on the sideline. There is another very, very interesting fight that's broken out. And you know, right now in this photo op, the Prime Minister has just, you know, that's a photo op between all the member nations of the SCO. The Prime Minister is attending the first in-person summit of the Shanghai Cooperation Organization. This is the first time in 2 years, and all eyes will be on that big engagement, you're right. And not just that, we're watching closely whether there is any, you know, take a side or pull aside or any sort of an engagement with either the Pakistan Prime Minister or even Xi Jinping. But nothing as of now, because earlier there were reports that there could be some sort of an engagement with Xi Jinping, the Chinese, president. But all eyes will be on what the Prime Minister does, because there is a view in India that you know, you can't really engage with China until there is real improvement in the situation in Ladakh, until there is a complete pullback. Of course, there was a pullback in the Gogula Hot Springs area, and we will be watching very closely whether he meets Xi Jinping, because he has not met Xi Jinping. He just, of course, they shared a photo opportunity, but they have not met. He has not met Xi Jinping. He has not met Shehbaz Sharif. And the only bilateral that we know of so far is with Vladimir Putin, and that is the only bilateral that we know of officially. But absolutely no confirmation on whether he will be meeting Xi Jinping separately or Shehbaz Sharif, whether that there will be any engagement. Let me go across to Major General Giri Bakshi and you can take it forward. I'll ask General Bakshi the first question, and then you can take it from there. General Bakshi, coming on the back of, with all these three countries, I mean, with Pakistan, less said the better. China, of course, Ladakh. There was some optics of a possible thaw, but unsure whether you can actually call it a thaw. And then with Russia, of course, with whatever is happening in Ukraine, what is your takeaway, sir, of this meeting, and what are you expecting? Major General Giri Bakshi, what should India watch out for in this summit? As far as China is concerned, China is now feeling the heat in the Taiwan Straits. Quite obviously, it would like a de-escalation in Ladakh because it would not like to get into a two-front situation. Hence, it has been making these noises of disengagement at Petrol Point 15, which has been achieved. But it is still not what we have asked for, and we had asked for a return to status quo ante as on April 2020.
That has still not been achieved. That is still some way off. So I don't think we can relax our guard. Going by past precedent, you have to see not what the Chinese say, but what they do, which is far more important. So I would reckon that we will have to wait and watch. I am not very hopeful of a meeting, crystallizing between Xi Jinping and our Prime Minister, given this backdrop that this is only partial and cannot be taken as a complete thaw till such time as the status quo ante is restored in the Ladakh region. That is as far as China is concerned. Our relationship with Russia is critical. They are still supplying us about 70% of our heavy weaponry and equipment. And we are keen to know what exactly are their plans in Ukraine. This is affecting the whole world because, as you are aware, the world is now staring at a recession and stagflation. The American economy, the worst hit is the European economy. And a lot of countries like, who were teetering on the brink, like Sri Lanka, Pakistan, are going to feel the heat more. There is a food crisis which is on in Africa, in the Middle East, in Latin America. So it is in the interest of all that this conflict ends soonest. But as per the existing plans of both NATO and the Americans, as also the Russians, they are all set for the long haul. As you were aware, what was happening was that the Ukrainians had heralded an offensive in the Kherson region in the south with 4 to 5 brigades. They actually launched it, but that made very slow progress. The Russians then decided that they would finish the delayed business in Donbass. They pulled out troops from the Kharkiv-Izium front, and the American satellites picked it up, and as the troops were moving out, the Ukrainians rushed in to give the feel of a great massive victory, which is mostly an optical illusion. Now the Russians are going for Bakhmut, and next year they have plans to induct another 135,000 fresh troops and carry on with their offensive. So this conflict is not ending anytime soon. That has consequences for the whole world. So it would be very natural for us to ask the Russians what exactly do they have in mind. What exactly do they have in mind? That will be one of the primary purposes of this summit. The second is that the economic sanctions largely seem to have boomeranged so far. And the Russians and the Chinese, their economic relationship is now getting cemented because most of the surplus energy reserves will now be pushed towards China. India has also, decided to buy cheaper Russian energy imports in terms of, crude oil and gas. Because quite obviously we have to look after our own economy. We are not supposed to be guided by the exhortations of Europe, which wants us to stop buying gas and oil from Russia, but has continued to merrily buy the gas and oil from Russia. And now Russia is imposing sanctions in turn in terms of stopping the gas exports, which is going to cause a very harsh winter in Europe. And just before Putin came here, the president of France and the chancellor of Germany had both had very long conversations with Putin because they thought that he had been sufficiently chastised in Kharkiv and he would perhaps sue for peace. But there seems to be absolutely no chances of that on the horizon. Looks like he is getting set for the long haul, and so is NATO and the United States. And the people who will suffer the most are Europe. Now they have to decide how much they want to back the United States at their own cost.
So all these things, will Absolutely. get clarified now, of course, with the Shanghai Summit, and they want to induct more nations. More nations want to join this grouping, which is seen as some kind of a counterbalance to US-NATO combination. Right. Major General G.D. Bakshi, appreciate your speaking to us on Republic TV. As you're pointing out, of course, the summit takes place even as the geopolitical turmoil that we see across the world is only increasing. Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. वहां उसकी पूर्ति की गई। ये ना पूछा गया कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है। ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार इलेक्शन में वोट किसको दिया था। तो ही हैज ऑल्सो इन अ वे introduced a new political culture, a new work style in the polity of India. इसी प्रकार उनका दूसरा बयान था कि देश के वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं उस तरह से विकसित ना हो पाए जैसे कुछ अन्य राज्य, उनको विकसित करके विकसित राज्यों के स्तर पर लाने का प्रयास रहेगा। एंड ही गेव अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि भारत माता का समूचा विकास तभी संभव है जब दोनों भुजाओं का एक समान विकास हो। यदि एक भुजा दुर्बल रहे और दूसरी बलवान हो जाए तो समूचा विकास संभव नहीं। एंड आई थिंक द एग्जाम्पल इज नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर। ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू दीज पेरिफेरल टेरिटरीज। नॉर्थ ईस्ट टुडे इज बीइंग साइटेड एज अ डेवलपमेंट मॉडल ऑफ मोदीज गवर्नेंस। If you just look back 8-10 years, Northeast was in news for all the wrong reasons. Insurgency, violence, road blockades. I think now the new generation there would even hardly recall what was it like. Now it is known for the state-of-art bridges and state-of-art highways. There was a time when the youth from Northeast felt apprehensive walking down the streets of Delhi. Today, the youth of Northeast have virtually flooded the aviation industry, the tourism industry, the hotel industry across the country. So that is the equitable growth that he was referring to. और उनका तीसरा कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जमीनी लोकतंत्र, the grassroots democracy. And I think
One of the most striking example is what was being said in the introductory remarks, जम्मू कश्मीर। 70 वर्ष के बाद जिला परिषदों का गठित जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल के साथ हुआ। मुझे विश्वास है आने वाले समय में कुछ इतिहासकार, कुछ विश्लेषक इस बार पर भी विचार करेंगे, आकलन करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि जब देश के हर राज्य में, हर प्रदेश में जिला परिषदें थी, जम्मू कश्मीर को उससे क्यों वंचित रखा गया। और विडंबना ये कि सरकारें उन राजनीतिक दलों की रहीं जिनका नारा था सेल्फ रूल। और यदि सेल्फ रूल का लोकतंत्र में अर्थ यह है कि ऐसा रूल जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं सेल्फ रूल की जब जिला परिषदों का वजूद ना हो, जब पंचायतों के चुनाव ना होते हों। सो सेल्फ रूल फॉर हुम? आई थिंक पहली बार मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को सेल्फ रूल क्या होता है इसका परिचय दिया। इसी प्रकार कमिटमेंट टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक और उदाहरण कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को 65-70 वर्ष के बाद भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे which would have such a state of affairs. If you go and reside in a country, you get citizenship automatically after a couple of years. लेकिन ये वो वर्ग था जिसने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, उप प्रधानमंत्री दिए। इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, LK अडवाणी भी कराची से आए थे। लेकिन चूंकि इस वर्ग का कुछ हिस्सा जाकर के जम्मू कश्मीर में बस गया, तो तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के स्वार्थ के कारण इनको नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया। देश भर में अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाज नॉट अकॉर्डेड टू दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मैं ये कहने का तात्पर्य कि आई थिंक व्हेन यू लुक बैक, मोदी एंड हिज team led by him have reasonably walked the talk। और ये आरंभिक बयान है, क्योंकि अक्सर मैं क्या समझता हूं कि जब मोदी जी ने ये बात कही होगी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने इसको गंभीरता से सुना होगा, कि उस समय देश में इस प्रकार का आलम बना हुआ था, निराशावाद का, पेसिमिज्म का। आम नागरिक के मन में सिनिसिज्म था, उसे पता था कि नेता आते हैं, भाषण करते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है क्या बोला, और जनता भी समझती है कि इज मोस्ट फॉरगेटेबल। लेकिन why I am recalling is that we have the evidence of having walked the talk under Prime Minister Modi. And when you talk of governance, when you talk of the different success stories that India has gone through in the last 8-9 years, I'm sure one day somebody would like to research on what were Modi's strengths, which were the secret of these success stories. और संक्षेप में देखें तो सबसे पहले हिज कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। आपको मालूम नहीं, याद है कि ना हो कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही सितंबर 2014 में मोदी जी ने एक आदेश जारी करके बरसों से चली आ रही अंग्रेज राज की कुरीति को समाप्त किया, टू गेट योर सर्टिफिकेट अ गेजेटेड ऑफिसर। और हमारे जैसे लोग जो सेमी रूरल पृष्ठभूमि से आते थे, जब 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते तो कहा जाता था गेस्टेड अफसर से दस्तखत कराओ, तो ये नहीं समझ आता था गेस्टेड अफसर उपलब्ध कहाँ होगा, वो कैसा प्राणी होगा, 2 नाक होंगे, 4 कान होंगे। कितनी बड़ी दुविधा से उसको निजात दी गई। And a message was sent across the nation that look, this is a government headed by Prime Minister Modi which has the capacity to trust the youth of this country. And in a nation with more than 70% population below the age of 40, how are we going to get along? How are we going to do business if we don't learn to trust this large section of below 40 society? His second strength and the trait which might have contributed to this sustainable model is his capacity to break the taboos of the past. आमतौर पर एक प्रवृत्ति रहती है, स्वभाव रहता है सरकार में कि स्टेटस को चल रहा है तो चलने दीजिए, कि 5 साल बाद चुनाव भी होना है।
लेकिन here was a head of state who could by conviction take decisions and then leave it to the people to decide कि वोट किसको देना है इलेक्शन के समय। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और विभाग जिसके साथ मेरा संबंध है, अंतरिक्ष का। कई वर्षों से अंतरिक्ष विभाग गोपनीयता में काम कर रहा था। कभी कभी आप भी अखबारों में पढ़ लेते कि श्रीहरिकोटा से कोई लॉन्चिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि श्रीहरिकोटा किस प्रदेश में कहाँ है, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ बाउंड्स। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मोदी जी ने स्पेस डिपार्टमेंट को, इसरो को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। एंड इन लेस देन 3 years वी हैव मोर देन 60 स्टार्टअप्स in the space department, and they are preparing for the Gaganyaan. And this has been possible because of the impetus given by him, which could have done earlier also, but nobody had the courage to break the taboo. And next year possibly we'll have the first non-human mission going up, then second unmanned, and followed by the first manned mission maybe by 2024 or so. We had one earlier. One of the Indians went called Rakesh Sharma, but the mission was Soviet Union. So this will be purely indigenous. Similarly, atomic energy again was working in a wheel of secrecy. It's been open to joint ventures now. They can engage in partnerships for the time being with the PSUs so that they can expand their establishments. His third strength, which is again very unusual, to convert a government campaign into a mass campaign. लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री आह्वान देते हैं और देश की जनता उसको अपना लेती है। जो उनका पहला संबोधन था स्वतंत्रता दिवस 2014 के अवसर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया और देश की जनता ने इसे अपना लिया। मेरे अपने क्षेत्र में एक छोटे से गांव में 9वीं कक्षा की बालिका ने अपने माता पिता से कहा कि चूंकि मोदी जी ने लाल किले से कहा कि बच्चियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए, इसलिए मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक मेरे यहाँ टॉयलेट ना बने। जब हमें उसकी सूचना मिली तो मैंने कलेक्टर के साथ संपर्क किया। उसके घर में तो टॉयलेट बना ही बना, लेकिन उसकी जागरूकता के चलते जब सर्वे किया गया तो 200 और इस तरह से घर वहां पर पाए गए। ये दलित बस्ती थी। इसी प्रकार कोविड के दौरान मोदी जी ने कहा कि दिया जलाइए तो सबने दिया जलाया। मोदी जी ने कहा ताली बजाइए तो सबने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू करिए तो सारे जनता कर्फ्यू किया। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ डीपली दैट मीन्स, जस्ट रिकॉल सम ऑफ द अदर गवर्नमेंट कंपनीज। 1960 में शुरू हुआ था हम दो हमारे दो। आज देखिए घर घर जाके कितने दो हैं। सो इट्स अ ग्रेट एसेट टू हैव अ हेड ऑफ स्टेट, एंड दैट इज बिकॉज उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी परिश्रम से उस प्रकार की विश्वसनीयता कमाई है, विच इज बिकम एन एसेट फॉर द नेशन। एंड चौथा, आई हार्डली नीड टू से, इज नेशन फर्स्ट। एंड अगेन लिंकिंग इट टू जम्मू एंड कश्मीर। 2018 में गठबंधन सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। कभी आपने सुना? कोई मजबूरी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उस गठबंधन सरकार से हट करके सरकार से बाहर निकलने का फैसला किया, जब ये लगा कि इस गठबंधन के जारी रहना देश के हित में नहीं है। सो दैट इज नेशन फर्स्ट, इवन अबव पावर, इवन अबव पार्टी। और इसी प्रकार अनेकों ऐसे जब नए कानून बनाए गए, आई डोंट नो हाउ मच हैज इट बीन रियलाइज्ड। हियर वाज अ गवर्नमेंट हेडेड बाय मोदी which was doing away with the earlier rules and the earlier laws. हर सरकार इस बात का श्रेय लेती है, हर अधिकारी, हर मंत्री के साथ मेरे समय में ये नया कानून आया, ये नया नियम बनाएगा। Here is a government which will take pride in saying that so far we have done away with 1600 rules, which also includes this attestation or JSA, which also includes the abolition of interviews for selection so that we provide a level playing field. And then
as was being said by the Raksha Mantri ji, technology. I think the singular contribution of Prime Minister Modi is that he has enabled the technology to enter every Indian household. और ये इसलिए संभव हुआ कि सभी मंत्रालयों के साथ, क्योंकि मैं 6-7 विभाग विज्ञान के भी देखता हूं, बैठ करके ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, मंथन हुआ, कहां पर किस विभाग को किस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वेयर इट कैन स्टेप इन एंड हाउ बेस्ट. आज चाहे रेलवे है, चाहे सड़क है, चाहे स्मार्ट सिटीज है, हर जगह टेक्नोलॉजी. एंड कमिंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, which is hardly talked about, because when we talk of technology, we talk of infrastructure. We sometimes we tend to overlook that the governance today also is highly technology based. Almost all the 80 ministries, 60 ministries are now online functioning, and that's the reason even during COVID time, the functioning, the working of the government of India did not get interrupted even for a single day. And the Ministry of Personnel with which I am linked, though we had 50% of work from home, and I used to review every week. At the end of 1 week, of a given week, one of the junior officials told me, sir, the new dictum should be minimum attendance and maximum output, because some of them were working more when online. They were working on the weekends, they were working on Sundays, they were working on holidays. वो 10 से 5 का स्वभाव जाता रहा. And another striking example is the concept of aspirational districts, a novel concept. पहले ज़माने में होते थे backward district, तो मंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी जिले को बैकवर्ड की कैटेगरी में शामिल करवा लेता कि वहां कुछ एक्स्ट्रा फेवर मिल जाते. नाउ दिस वाज अ साइंटिफिकली बेस्ड ऑब्जेक्टिव पैरामीटर बेस्ड ऑन 41 इंडिसेस, हेल्थ का इंडिसेस, सैनिटेशन का, एजुकेशन का, एक्सेसिबिलिटी का. अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कुड बी number 1 in the country in education but be lower down in health. So there was a competitive mode introduced, how best to bring this district at par with the best district performing district of the state, and then with the best performing of the nation. This was again technology at its best, leading to governance. And again linking it to Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir में एक प्रथा थी दरबार मूव की, 6 महीने श्रीनगर, 6 महीने जम्मू. It is our department, the administrative reforms and public grievances in the Ministry of Personnel, which helped the government of Jammu and Kashmir to totally shift online, as a result of which rupees 6,200 crore, which they were spending each time the capital moved from one city to the other, has been spared. So 200 crore रुपया उनका लग जाता था ट्रांसपोर्ट का, फाइलें जम्मू से श्रीनगर पहुंचानी, and all the other related expenditure. And this has also been possible because of the technology push given by Modi and the government headed by him. And if you talk of Jammu and Kashmir, I think broadly speaking it's been at 2 levels. A, the development level, B, the governance level. अक्सर ये शिकायतें वहां रहा करती थी क्षेत्रीय भेदभाव की. एक क्षेत्र कहता था कि दूसरे को ज्यादा मिल गया, दूसरा कहता था कि पहले को ज्यादा मिल गया. आज, in the last few years, particularly after 5th and 6th of August 2019, the statistics bear out there has been an equitable distribution of resources, equitable distribution of funds, and equitable scale of development. 2 एम्स बन चुके हैं, 8 केंद्रीय राशि से मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, रिंग रोड श्रीनगर और जम्मू में सड़कों का जाल बिछ गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल एलिफेंट टावर से 35 मीटर ऊंचा, वो निर्माणाधीन है इत्तेफाक से मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसके माध्यम से कश्मीर घाटी बाकी देश के साथ रेल लिंक से जुड़ जाएगी. एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से लेकर के कटरा तक, वंदे भारत ट्रेन वाराणसी के बाद दूसरी कटरा तक शुरू हुई. IIT, IIMs, एजुकेशन हब, एक छोटा सा कस्बा किश्तवाड़ का जिसका इन्होंने फिल्म में दिखाया, कीरू प्रोजेक्ट was being mentioned. That small township has nearly 8 projects put together, which will be generating as much as 6,000 megawatt of electricity, and would be possibly the biggest hub in North India. And this has been possible also because the peace was restored in Jammu and Kashmir.
Because peace and development share an reciprocal relationship. If peace is hampered, the development doesn't happen. If development doesn't happen, it leads to unrest. And today, as was being mentioned in the short film that was shown, just before, if you recall the newspaper headlines before August 5, 6, 2019, तो क्या headline थी? कहीं से ये बयान आता किसी विपक्ष के नेता का कि यदि 370 को छेड़ दिया तो इतनी हिंसा होगी कि खून की नदियां बहेंगी. जनरल जे सिंह इज देयर हु सीन वेरी क्लोजली बोथ कश्मीर एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट. कभी ये कहा जाता कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा. But now when you look back in the last 2-3 years, the prophets of doom have been proved wrong. हर घर में तिरंगा भी लग गया. जो पत्थरबाजी होती थी समाप्त हो गई. And immediately after the revocation of Article 370 on the 5th and 6th of August 2019, if you just see the first 6 months, beginning from August to January, there were 4 important festivals: Vijayadashmi, Deepavali, Eid, Muharram. 2 Hindu festivals and 2 Muslim festivals, and went absolutely uneventful, without any untoward incident. पहला ऐसा कभी नहीं होता था. त्योहार पर कहीं ना कहीं आतंकी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई इस प्रकार की घटना अंजाम देते हैं. And that is because the common man walking in the streets and lanes of Srinagar wants peace. He wants to be a part of the development journey led by Modi. And let's not forget, the youth of Jammu and Kashmir is highly aspirational. And that is borne out by the fact that in spite of militancy, you have among the toppers in the civil services from Kashmir Valley. The most terror-affected districts have produced toppers in IIT JEE. In the NEET recently reported result of the NEET, you had the 10th topper for Chopia. That is just about a few days back. So that shows the level of the aspiration that the youth have, and they don't want to miss the bus. And they are very conscious of the enormous opportunities, enormous avenues that have been made available by Prime Minister Modi in the rest of the country, and they want to be a part of that. And then, in the concluding part, when we sum up all this and look at it at a totality, and then of course in the next 25 years, as was being mentioned in the introductory remarks before I came in, what is Modi's futuristic vision, which again would be linked to each one of us, every Indian, and also Jammu and Kashmir. Now again I take back, because I'm trying to speak everything with evidence. If you recall the Independence Day address of Modi on 2015, 15th August, he said, "Start up India, stand up India." And the same day so many people asked me, "Ke matlab kya hai iska?" The concept was so alien to us. But this was his futuristic vision. He could foresee that if India has to move forward, this is one area which has to be given priority. And if you go by the figures, before this government came in 2014, there were just 300 startups in India, or 350. Today, it is more than 75,000. The number of unicorns is more than 100. And India's startup ecosystem ranks among the first 3 in the world. And even across the world, even in the most developed European countries, startup groups prefer Indian boys and girls. तो प्रतिभा थी, क्षमता थी, परिश्रम करने का मादा भी था. But that motivation, that opportunity, the milieu was lacking, which has been provided by Prime Minister Modi. Biotech is another sector. By 2025. And why I'm saying so? Because when we say, हम कहते तो कि अमृत काल है, 25 वर्ष के बाद हिंदुस्तान शिखर पटल पर पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचेगा? वो तभी पहुंचेगा कि उन रिसोर्सेज को, उन सरमाए को, उन साधनों को हम जुटा पाएं जो अनएक्सप्लोर्ड रह गए. जब बाकी सारे सैचुरेट हो गए तो ये अनसैचुरेटेड. दिस इज वन एरिया, बायोटेक्नोलॉजी. इंडियाज बायो इकोनॉमी इन द ईयर 2014 was just about $10 billion. Today it is $80 billion, and it is projected to be $150 billion by 2025.
And these are the sectors which remain unexplored. The biotechnology, because we have a huge biodiversity. The biofuels, the agriculture startups, the agri-tech startups, the dairy sector, and the ocean resources, which were never actually thought about. The other day I was sitting with a group of scientists from Australia. I said, look here, you come from a place which is a country, which is also an island, which is also a continent. But the ocean around you is not named Australian Ocean. But I come. Rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city.
Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद Prime Minister Narendra Modi is at the Shanghai Cooperation Organization Summit, which is set to deliberate on regional security challenges, boosting trade and energy supplies, amongst other issues. Arunachal Pradesh's Chief Minister Pema Khandu has dismissed the opposition's claims of the Chinese forces entering the Indian territory and said that the Congress leader Rahul Gandhi raised the issue but himself lacks thorough knowledge about the Northeast. On the 17th of September, Prime Minister Modi will release 8 cheetahs at the Kuno National Park in Madhya Pradesh. The cheetahs are being brought from Namibia as part of an intercontinental translocation project. Well, the big SCO Summit, of course, is taking place in Uzbekistan. A lot of bilaterals also lined up. Stay with us, we'll bring you more. Bike rally is being led by the Union Minister Jinping here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Jinping here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने न सिर्फ ओवैसी साहब, इस ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसको ज़रा दुरुस्त करा लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि हाल के समय में ओवैसी साहब ने बहुत से मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जिसने बहुत सी सुर्खियां भी बटोरी हैं। बस कुछ ही क्षण में जो ऑडियो की दिक्कत है उसे ठीक कर ले। जानते हैं कि ओवैसी साहब मुखर हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और कई बार उनकी राय से ही खबरें बन जाती हैं। मैं बस इस इंतजार में हूं कि ओवैसी साहब की आवाज हम तक पहुंचे और उसके बाद हम बस इस सेशन को शुरू करेंगे। एक बार आपको दिखा देते हैं कि भारतीय राजनीति में किस तरह से पैठ बनाई है असदुद्दीन ओवैसी ने। आइए देखते हैं। बयानों से सहमत या असहमत, लेकिन इनके बयानों को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। अपने बेबाक बयानों से
is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है।
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। You're watching Live and Breaking. The headlines at this hour. ED News tightens in Delhi Liquor Gate. Pan-India searches underway. Hyderabad, Chennai, Nellore Liquor Gate scam explodes. Mega raids now on. And ED to quiz, interrogate jailed Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain. Big focus on security, politics and economics at the SCO Summit 2022. Prime Minister Narendra Modi in Samarkand, bilaterals lined up. From Agnipath to cinema, India's biggest voices live at Republic Bharat Summit. And at this point, we are getting you a big lead in Delhi, in the Delhi Liquor Gate scam. Sources have now informed Republic that CBI has taken cognizance of the sting operation and video linked to Delhi liquor policy scam. This comes after BJP released a video of accused Amit Arora allegedly explaining irregularities in the liquor policy. The 7-minute video of Arora is being examined by the Agency for New Facts. Remember, Amit Arora is named as an accused in the FIR registered by the CBI, and the central agency has already questioned Arora, searched his company. Amit Arora is a close associate of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. In a parallel development, ED raids are underway across 40 locations. And ED is carrying out searches in Hyderabad, among other places, in Chennai, Nellore, Bangalore and Delhi. And Shaman joining us at this point to take us through this breaking development. Shaman, the CBI taking cognizance now of the sting operation, the video linked to the Liquor Gate scam, that and all other developments in major breakthroughs at this point on the part of the CBI. It's over to you. Well, in fact, Rukma, as far as the recent testing is concerned, this has raised a lot of questions about the role that has been played by the Excise Department itself. The fact that there are direct allegations that have been leveled, and more importantly, the fear that there was a quid pro quo seems to have been established from the sting itself. But for the CBI, there is a larger battle in front of them. The fact that they will have to now find out the quid pro quo who exactly is the beneficiary. But having said that, what we can confirm is that the sting has been taken note of by the Central Bureau of Investigation. In fact, I'm given to understand that Amit Arora has already been questioned by the Central Bureau of Investigation. So they've certainly made a headway. In the days to come, we're expecting some more developments to take place with the Central Bureau of Investigation now upping the ante. And Chavan, when we talk about the entire issue so far, the entire case so far, what would you say are the major points to take note of at this point? What will be the developments that we will need to observe the most, that the public of India, that the public of Delhi will need to observe the most? Because, well, Aam Aadmi Party has continued to completely evade all questions
They fobbed off all questions related to Liquorgate. Well, in fact, as far as the Aam Aadmi Party is concerned, they have been on the front foot by saying that if you have evidence, please come forward and arrest me. That is exactly what Manish Sisodia, Deputy Chief Minister and also accused number one in this particular case, had to say soon after this thing was, which went viral on social platforms. But as far as the Central Bureau of Investigation is concerned, remember they have a larger concern at this point in time. The concern essentially being is that no arrest can be made without gathering enough evidence. And that can only happen following the examination of all public servants in this particular case, which is roughly about 12 of them is what we are given to understand. And also the private individuals who have come under the scanner who are being questioned by the Central Bureau of Investigation. Once that is over, only then perhaps can we expect the CBI to take the next step. The next step essentially would be also calling in for questioning Deputy Chief Minister Manish Sisodia. So one could certainly expect that summons would be sent out to the Deputy Chief Minister once the first stage of the investigation is over. Well, many thanks, Shawan, for joining us there and for pointing out the major details in this breaking information. So ED raids across many other states as the Liquorgate scam explodes. And moving on to other breaking news stories at this hour, you're watching live and breaking in the Sonali Phogat murder case, getting in a big lead. A team of CBI officials have already landed in Goa. They landed late last night, and a forensic team will be coming to Goa in an hour or two to inspect the crime scene. So, the latest development in the Sonali Phogat murder case. CBI officials to inspect the crime scene location. Forensic officials, a forensic team likely to arrive any time in the next few hours. So CBI officials back in Goa once again after Goa police did arrive in Haryana and conduct searches at various locations and speak to various people who are part of the entire murder mystery surrounding the death of Sonali Phogat. And now CBI officials are in Goa after the CBI was roped in to crack the case and to investigate further after appeals from the family of Sonali Phogat. Now CBI officials in Goa to inspect the crime scene location. So CBI officials in Goa, a latest developments coming in here in the Sonali Phogat murder case. CBI officials landed in Goa late last night and a forensic team is likely to inspect the crime scene location any time in the next few hours. सोलह सितंबर की सुबह लखनऊ के लिए एक दर्दनाक खबर लेकर के आई है। मैं इस वक्त उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ से वो खबर आई है। मैं इस वक्त लखनऊ के दिलकुशा गार्डन एरिया के पीछे का एरिया, ये कैंट एरिया स्थित है और यहाँ पर ये जो दीवार है, ये सामने की तरफ से उधर से आपको वो दीवार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये दीवार, और ये दीवार सुबह तकरीबन 3 बजे एक सूचना आई जब यहाँ पर इसके किनारे कुछ लोग सो रहे थे जिनके ऊपर ये दीवार गिर गई और तब ये दर्दनाक हादसा हुआ जब मौके पर ही कहा जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई। जो लोग रह रहे थे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, फाइनेंशियली इतने कमज़ोर हैं कि ये घर और कहीं रह के रह नहीं सकते, इसलिए इन्होंने इस टाइप झुग्गी झोपड़ी बना ली और इन्होंने ये महसूस नहीं किया कि दीवार गिर सकती है और इनके साथ ये हादसा हो गया। मतलब किनारा जो है उसका थोड़ा किनारा का सपोर्ट लेके उसका थोड़ा हट बना के बैठा हुआ था, तो ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये दीवार गिर गए और तो
More breaking news. An enforcement directorate team has arrived at Tihar jail to question Satyendra Jain, Aam Aadmi Party minister, who is in Tihar jail. And as we had been reporting since this morning, as the ED continues to probe the money laundering angle in the liquor scam, a latest development, they are now at Tihar jail to question Aam Aadmi Party minister Satyendra Jain. And a latest development in the liquor gate scams, a special CBI court had allowed earlier the ED to question Delhi Health Minister Satyendra Jain, and now we are hearing that the ED officials have arrived at Tihar jail to question Delhi Health Minister Satyendra Jain, who is lodged in the jail. And Shawan, to take us through all these developments as they are happening. Shawan, breaking news coming in of the ED team arriving at Tihar jail to question Delhi Health Minister Satyendra Jain. It's over to you. How should we look at this? What does this mean for Satyendra Jain himself? Well, straight away, it certainly means more trouble for Satyendra Jain, who was being probed by the enforcement directorate in the disproportionate assets case, and now it seems that the enforcement directorate is also looking at his role in the excise policy. Now, it is not very clear at this stage, Rukma, because the investigation is still underway. But what we gather from our sources is that, remember, the question here is also about whether at all the cabinet was taken into consideration, and was it the case that the deputy chief minister had taken the approval in a post-dated manner as far as the approval of the excise policy from the cabinet itself is concerned, and that's where perhaps the role of Satyendra Jain also comes into the picture. We'll have to perhaps wait for some more time, because right now all that we can confirm at this stage is that the enforcement directorate officials have already reached Tihar jail, where Satyendra Jain is being questioned by the enforcement directorate. Right, Shawan, many thanks for joining us there. INS विक्रांत लॉन्च करा गया और देश में बहुत एक हर्षोल्लास का माहौल था, एक कॉन्फिडेंस सा बढ़ा कि हम लोग वो सलाहियत रखते हैं, वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना दें। मेरा सवाल आपसे है सर कि क्या आपको लगता है कि भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है मीडिया में। फाइनली सर जो सरकार निर्णय लेगी वो लेगी, जो नेवी निर्णय लेगी वो लेगी सर, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है? डू वी नीड अ थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर? थैंक यू जयंत। मेरे राय में देयर इज़ नो डाउट कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर देश को चाहिए और इंडियन नेवी को चाहिए। जो कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं होता, एक टास्क फोर्स होती है, एक यू कैन कॉल इट द कैरियर टास्क ग्रुप और कैरियर टास्क फोर्स। विल हैव अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर को मिला के वहाँ 6 से 8 पूरे जहाज पूरा ग्रुप होता है। जो कैपेबिलिटी कैरियर टास्क ग्रुप और कैरियर टास्क फोर्स ब्रिंग्स टू द नेशन इज ह्यूज। It can be used in diplomatic roles, in force projections across the entire Indian Ocean, has sustenance power, एक particular area of Indian Ocean में रहने का sustain there. So in my opinion, without a doubt, the nation needs maritime capability, जो हमारी देश की economic progress, we are dependent on energy which is imported into the country from overseas to 90% से ज़्यादा, plus trade links. Then the world आज जैसे रूस, Russia, Ukraine war, there is a geostrategic flux. So we need to develop maritime capability to ensure the future of India as a rising power. It is maritime capability will take India forward. Thank you, sir. General J.J. Singh, sir.
सर आपको पता नहीं, याद होगा नहीं होगा, हम लोग ये दूसरी बार स्टेज पे हैं सर। 1998 से यू वर जीओसी पाइंडेव, आप पू आए थे सर, यू हैड कम टू पू सर, माई यूनिट वॉज इन पू, और आपके लिए एक फंक्शन करा गया था, वहां पे मैं मास्टर ऑफ सेरेमनीज था सर। आज इतने साल के बाद वी आर मीटिंग अगेन ऑन स्टेज। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हम लोग हथियारों की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आपकी क्या राय है कि जो देश, और ये बड़ा सीधा सा सवाल है सर, कि जो देश रॉकेट बना सकता है, जो देश एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, जो देश सैटेलाइट्स बना सकता है सर, वो राइफल क्यों नहीं बना सकता सर? वो राइफल क्यों नहीं बना सकता सर? Why can't we have a rifle better than the 5.56 mm इंसास सर? इसका क्या कारण है? गौरव, बात आसान है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक हमें सक्षम होना चाहिए था स्मॉल आर्म्स बनाने में, क्योंकि हमारी सरहदों में इन्फेंट्री लड़ रही है। इन्फेंट्री ज़्यादातर पे डिफेंस अख्तियार करके रहती है, और इन्फेंट्री के हथियार ही अगर हमारे ठीक ना हों तो इसका मतलब हम अपने सोल्जर्स को डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं। तो मैंने देखा कि जब भी हम चाहते थे कि हमारे अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों को कहा गया कि आप हथियार बनाओ, वो वर्ल्ड क्लास हथियार नहीं बना पाए, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमज़ोरी थी। दूसरी बात यह है कि हम लोग ने आर्मी को एक एक्सक्लूसिव बनाया हुआ था ऑर्गेनाइजेशन, एक्सक्लूसिव। कोई प्राइवेट कंपनी वाला हमसे बात करता था तो शक के नज़र से लोग देखते थे। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट आर्मी पार्टनरशिप, ये दूर की बात है। अगर हमारे साथ ये होता, ये सहयोग होता जैसे कि बाहर वाले मुल्कों में हैं, तो हमारे पास जरूर स्मॉल आर्म्स वर्ल्ड क्लास के होते। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि फ्रांस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं डेलीगेशन जनरल des armements। दैट मीन्स जितने आर्मामेंट इंडस्ट्रीज हैं सबका एक हेड, एंड ही नीड नॉट बी ए मिलिट्री मैन, he could be a civilian, a well accomplished engineer, scientist, not necessarily a military man. अब जब वैसा अगर कोऑर्डिनेशन हो तो आप जरूर जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक हथियार बनाएंगे। और अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि हमारे DRDO वालों ने एक वेपन प्रोड्यूस किया है, वो फिर भी वर्ल्ड क्लास से नीचे है। इन्फेंट्री वालों को जो क्लोज कॉम्बैट बैटल लड़ना होता है, गुत्थम गुत्थे की जो लड़ाई लड़नी होती है, उसमें हम अपने सोल्जर्स को डिसएडवांटेज पे नहीं डाल सकते। और आप यहाँ पे इतनी ऑगस्ट ऑडियंस हैं, आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया भर में माना गया है कि हिंदुस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के मुकाबले में दुनिया में कोई और फौज नहीं है। वी आर नंबर 1। देयर इज नो डाउट। जो कारगिल से हमने खदेड़े उनको, अमेरिकन एम्बेसडर ने खुद कहा कि ये सिर्फ हिंदुस्तानी फौज है, हिंदुस्तानी एयरफोर्स है और हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि ये कुछ कर सकते थे। तो एक और चीज कहना चाहता हूं जी, आप गलवान ले लीजिए, उससे पहले डोकलाम ले लीजिए। इंडिया और चाइना का मुकाबला चल रहा है। आई वांट टू रेज इट टू अ लिटिल हायर लेवल। मुकाबला क्या है कि हिंदुस्तान का जो हमारा फिलॉसफी ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज नाउ अ डेमोक्रेटिक सेटअप। वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी and we are following a different path. China, on the other hand, is a unitary party ruled government, and they want the Chinese Communist Party to continue. If India succeeds, मान लीजिए जी जिनपिंग खत्म हो जाएगा। इसलिए Chinese are scared that India model should not succeed, and that is why there is an ideological struggle going on. Whatever we want to achieve, somebody is playing
the mischief, and they are using Pakistan and they are using other means. But one thing I must tell you, General Malik has mentioned about changes. Changes are not only in the weapons, Gaurav, as you know very well, and the other two chiefs are here. Changes are in 5 dimensions. एक तो kinetic weapon warfare, एक है information warfare, एक है electronic warfare, एक है psychological warfare, एक है economic warfare. I mean, today we are getting stronger and stronger than before, because at that time we did not know that there are so many dimensions in warfare. So I feel India is in a much better position today, and we are amongst the top league in the world in many dimensions, and I'm sure the Air Force and the Navy chiefs will also tell you. But I must give you one example to quote why we are better now than 20 years ago or 2 decades back. Proposal was made to get a heavy lift helicopter, but a gun which is a light, ultra light gun to be carried by that. Now this is a package deal. If you need that gun, which we needed in our mountains where there are no roads to fight the Chinese, we needed a heavy lift helicopter. And I'm the one who made that proposal in 2006. It kept on being dragged for 10 years, and that this government came in and they moved it. So today when we are proudly showing our Chinook helicopter carrying an underslung ultralight howitzer, these are very major changes in our capability. I can be strong in my mind, but unless my wrist is strong, my कहता है ना फौलादी मुट्ठी नहीं है, तो I cannot achieve results. So today we are moving on the right lines to become a world's major power, and for which you need, if you want to save your core values of your country, and this is a very old civilization, you need to be militarily strong. If you are militarily strong, economically also. Otherwise, you take the example of Japan. Japan was economically very strong, but now they have realized they have to be stronger militarily also. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया सर, मैं आपके पास जा रहा हूं सर। जय हिंद। मेरा सवाल यह है सर कि हम बड़ी दुखद चीज़ें सुनते हैं सर MiG-21 के बारे में, और हमारे जांबाज पायलट्स, और बात सिर्फ उनको ट्रेनिंग करके जो पैसा खर्च करा है वो तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये यंगस्टर्स हैं सर, हु आर अमंग द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। बात फिलहाल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की भी नहीं है, जिस पर मैं बाद में आऊंगा सर, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम MiG-21 को पूरी तरीके से फेज आउट करें, और अगर सिंगल इंजन फाइटर भी है या तेजस है कोई और है, उसमें हम जल्दी से प्रोक्योरमेंट करके या मेक इन इंडिया करके फटाफट हम उनको रिप्लेस क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सर हर महीने खबर मिलती है और बहुत दुख होता है सबको, जो एयरफोर्स की टेक्निकलिटीज, जो तकनीकी बातें नहीं भी समझते, आम हिंदुस्तानी को बड़ा दुख होता है जब हमें यह खबर मिलती है कि MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया है और हमारा एक होनहार पायलट अब वीरगति को प्राप्त हो गया। बड़ा दुख होता है सर, इसके बारे में जरा इस पर रोशनी डालिए। प्रणाम। MiG-21 का आपने जो केस बताया है ये कॉम्प्लिकेटेड है। ऑब्वियसली द फ्लीट इज़ वेरी ओल्ड, पर जब भी हम फ्लीट को टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ एक्सटेंड करते हैं, उसको मॉडर्नाइज करते हैं, ये मॉडर्नाइज फ्लीट है, 15 साल पहले इसमें मॉडर्नाइजेशन हुआ था, नए वेपन्स, नए रेडार, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ लाइफ ये एक्सीडेंट रेट कई बार देखा गया कि बढ़ता ही है फॉर ऑब्वियस रीजंस। बहुत वर्षों से हमारा ये प्रयास रहा है कि इसकी रिप्लेसमेंट्स को जल्दी से जल्दी किया जाए, एंड उसका प्रयास में कोई कमी नहीं थी, बट उसको एक्टिवेट करने में, उसको फ्रैक्टिफाई करने में ज़रूर टाइम लगा। और LCA जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी 2 स्क्वाड्रन हम ले चुके हैं, 4 के ऑर्डर और हो गए हैं, तो अगले जो 4 MiG-21 फेज आउट करने हैं उसको फेज आउट प्लान भी थोड़ा सा एक्सपीडाइट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स। एंड LCA को जल्दी से जल्दी इंडक्ट करने के लिए जो करंट रेट ऑफ प्रोडक्शन 8 पर ईयर है उसको 16 करने का डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया था। अब वो 16 1 या 2 साल में पर ईयर प्रोडक्शन रेट होना चाहिए।
जब अगले 4 स्क्वाड्रन LCA के आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमारी ज़्यादातर सॉल्व हो जाएगी। पर इसके साथ में मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर आप रेट देखते हैं तो इसकी ज़्यादातर हमें ज़्यादा दुख होता है बिकॉज ऑफ स्टेज ऑफ द फ्लीट। फ्लाइंग एक ऐसा प्रोफेशन है एंड फाइटर फ्लाइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सारे प्रिकॉशंस एंड सारी एक्शंस के बावजूद बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ एक्सरसाइज, हमारी पीस टाइम एक्सरसाइज एंड वॉर टाइम एक्सरसाइज में बहुत कम फर्क होता है। हमारी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वॉर टाइम में सिर्फ एक वेपन फायर करना रह जाता है। तो जो रिस्क लेवल्स होते हैं काफ़ी हाई होते हैं एंड एक्सीडेंट्स एक लाइफ का पार्ट बन जाते हैं हर एक कॉम्बैट फ्लीट में। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि ये कम से कम हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख जो होता है किसी को खोने का वो एयरफोर्स को ही होता है, वो सारी हमारी पूरी फैमिली होती है। इसलिए इस पर कंटिन्यूस काम रहता है एंड ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं होता फ्लाई करने के लिए जो एयरवर्दी ना हो। एंड रिसेंटली जो एक्सीडेंट्स हुए थे इसके बावजूद मैं आपको बता दूं जितनी रेट ऑफ फ्लाइंग होती है आज भी MiG-21 का एक्सीडेंट रेट दुनिया में कई फ्लीट्स कॉम्बैट फ्लीट से कम है आज भी। ये बिकॉज इतनी इसके लिए प्रिकॉशंस ले ली गई हैं, बट फिर भी हकीकत ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इसको फेज आउट करके नए कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयरफोर्स में लाने चाहिए और उसके लिए LCA के बहुत तेजी से काम हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वापस जनरल मलिक सर आपके पास आता हूँ। जनरल JJ सिंह सर ने बात करी थी, इन्फेंट्री का इन्होंने जिक्र करा था। आजकल लोग बात कर रहे हैं सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्मी इज वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर, साइबर की बात हो रही है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की जनरल JJ सिंह सर ने बात करी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आपको क्या लगता है सर कि कितना रेलेवेंट आगे चल के आज से 10 साल 20 साल के बाद इन्फेंट्री सोल्जर कितना रेलेवेंट रहेगा सर? क्योंकि मैं तो मानता हूं रेलेवेंट रहेगा, लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इन्फेंट्री सोल्जर कितना रेलेवेंट रहेगा। रोबोटिक्स की बात हो रही है सर, ड्रोन स्वॉर्म्स की बात हो रही है, मैं आम इन्फेंट्री सोल्जर पैदल सैनिक की बात कर रहा हूं, वो कितना रेलेवेंट रहेगा सर? गौरव, चाहे हम डिफेंसिव में हों या ऑफेंसिव में हों, दोनों प्रतिक्रियाओं में इन्फेंट्री का रोल हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आप ऑफेंसिव में हैं तो दुश्मन को एक जगह से हटाने में, उसको हराने में इन्फेंट्री को लास्ट में जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर अपना झंडा भी गाड़ना पड़ेगा कि ये अभी भारतीय झंडा यहाँ पर पहुँचा है। और डिफेंसिव में भी ये है कि जब गुत्थम गुत्था लड़ाई होती है तो उसमें आपने देखा होगा कारगिल की लड़ाई में हमने ऑफेंसिव ऑपरेशन किए जी, और जो हमारे पास जगह थी बनी हुई थी, चाहे वो चाइना बॉर्डर था या कहीं और था, वहाँ पर हमारे डिफेंसिव भी मजबूत थी। सो इन्फेंट्री का जो रोल है वो कभी कम नहीं होगा। और बाकी आपने टेक्नोलॉजी की बात की है तो ये मेरा मानना है कि ये सबके दिमाग में है कि जो इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं उनमें भी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो अभी अग्निपथ की स्कीम आप देख रहे हैं उसमें जो जवान हमारे ITI से आएंगे या और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आएंगे तो उनको बोनस पॉइंट दिए जाएंगे। और कोशिश हमारी यही है कि चाहे वो इन्फेंट्री का हो या किसी भी आर्मी में तो है ही होता है, इन्फेंट्री वाले जवान भी जो हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकली क्वालिफाइड जवान लेके आएँ जो नए हथियारों में जिसमें AI वगैरह का इस्तेमाल होता है तो वो उनको भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एडमिरल लांबा सर, मैं आपके पास जाता हूं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि आपने बोला कि एयरक्राफ्ट कैरियर हमें तीसरा चाहिए और हम सब लोग ही चाहते हैं कि चाहिए, क्योंकि एक नेशन का एक फोर्स प्रोजेक्शन, एक स्ट्रेंथ प्रोजेक्शन भी होता है। उसके अलावा बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं। ब्लू वाटर नेवी की जो हम बात करते हैं सर, भारत अभी कहां खड़ा है और ब्लू वाटर नेवी तक पहुंचने के लिए भारत को और क्या कदम उठाने पड़ेंगे आपके हिसाब से सर? कितने शिप्स चाहिए होंगे, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी और कितना समय लगेगा ब्लू वाटर नेवी अचीव करने के लिए, अगर ब्लू वाटर नेवी हमारा एम है सर तो? गौरव, द इंडियन नेवी इज ऑलरेडी अ ब्लू वाटर नेवी। ओके,
जो नेवी का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान जो 15 साल 25 साल का प्लान है, द प्लान वाज टू हैव 200 शिप की नेवी. जो द इंडियन नेवी हैज स्टॉप्ड काउंटिंग नंबर्स ऑफ शिप. वो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड मैरीटाइम कैपेबिलिटी की बात करते हैं. तो जैसे अभी भी जो मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है इंडियन नेवी का, जो इंडियन ओशन है यूनिक ओशन है कि जो इनकी अंदर आना और बाहर जाना, एंट्री एंड एग्जिट इज़ थ्रू चोक पॉइंट्स जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स, हॉर्मुज का, रेड सी. यहाँ अभी भी मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट में सब जगह एक ब्लू वाटर शिप दैट इज़ लॉन्ग रेंज शिप कैपेबिलिटी है, जो डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट बड़ा साइज का, इज़ परमानेंटली डिप्लॉयड. One in Andaman Sea in Malacca Straits, on the west side in the Gulf of Aden. So this deployment is there. Plus जो long range maritime aircraft है वो पेट्रोल करता है. तो जैसे हम नेवी में बोलते हैं maritime domain awareness और what is happening पानी पे, पानी के नीचे and above the water is there available picture. So we are, the Indian Navy is already a blue water navy. और जो पर्सपेक्टिव प्लान है, जैसे आज भी 40 जहाज अंडर कंस्ट्रक्शन है इंडिया में, इन इंडियन शिपयार्ड. सो स्लोली एंड स्टेडीली कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो रही है. एंड वी विल हैव इवन टुडे, आज भी इंडियन नेवी सबसे बड़ी नेवी है इंडियन ओशन में, डिप्लॉयबल. And we are the main maritime force, resident maritime force in the Indian Ocean. So it is a force to be reckoned with, not only in the Indian Ocean, but also in the Indo-Pacific. And जैसे General Malik and General आत्मनिर्भरता, Make in India, it's an old story, पुरानी कहानी इंडियन नेवी की. The first ship made in India was made way back in 1960. A small ship of 300 ton का. अब 62 years later, you have INS Vikrant, which is a 43,000 ton ship made entirely of Indian steel. Yes, sir. Over 23,000 ton of marine grade Indian steel has gone into making in the ship. So the Indian Navy and India as maritime capability has come a long way. काफ़ी तरक्की हुई है. एंड इन द फ्यूचर द इंडियन नेवी एंड इंडिया विल बी अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद इन द मैरीटाइम डोमेन. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. मैं जनरल जे सिंह सर आपके पास दोबारा चाहता हूँ. सर, हम सब अभी भी टेलीविजन इमेजेस देखते हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई है और किस तरीके से रशियन फोर्सेस हैं, खासतौर से उनकी मैक फोर्सेस, वो बॉकडाउन हो गए सर. उनके टैंक्स देखते हैं, उनके BMPs बॉकडाउन हो गए. यूक्रेनियंस ने काउंटर अटैक करा, फिर लड़ाई हुई, शेलिंग हुई. मास्ड आर्टिलरी का कॉन्सेप्ट जो एक ज़माने में हम सुनते थे सर, वो भी रशियंस ने ट्राई करा जितना वो कर सकते थे गिवन द ज्योग्राफी एंड द टेरेन. मेरा सवाल आपसे सर सिर्फ ये है कि हमारे लिए, भारतीय सेना के लिए, हमारे लिए क्या लर्निंग्स हैं सर, हमारे लिए क्या सीख है? अगर आप एज अ फॉर्मर आर्मी चीफ अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यूक्रेन को देख के हमारे लिए क्या सीख है, उससे क्या लेसन्स हैं फ्रॉम द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको ले सकते हैं सर? Yes, sir. Ladies and gentlemen, जो अभी हम देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये लोकलाइज्ड वॉर है, इसको बढ़ने नहीं दिया गया है. और इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी महान शक्ति रूस जैसी एक छोटे से देश यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई या अपने ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर पाई. तो कहने का मकसद ये है कि आजकल जो लड़ाई वो कर रहे हैं उससे हमको सबक ये मिलता है कि हमने अपनी रणनीति में भी वही परिवर्तन लाने हैं जो कि यहाँ पर साबित किए गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो आर्मर है वो आर्मर सामने से, साइड से प्रोटेक्टेड है. सबसे कमज़ोर है उसका टॉप का, मैंने जो इंजन कंपार्टमेंट पीछे है उसमें कोई खास आर्मर प्रोटेक्शन नहीं होती. और आजकल जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं उनके ऊपर, एक सेकंड में टैंक बर्बाद हो रहा है, आपने टीवी पे देखा होगा.
उसी मुताबिक जो तरीका है बिल्ट अप एरिया में लड़ने का, वो रशिया की आर्मी को उसका तजुर्बा नहीं है। वो किस तरह से लड़ रहे हैं, वो सड़कों पे जा रहे हैं एज इफ इट इज़ अ फ्री ड्राइव गोइंग ऑन द हाईवे। मेरे को समझ नहीं आती कि वो हाईवे पे मूवमेंट सारी क्यों कर रहे हैं। टैंक कैन गो एनीवेयर, तो व्हाई दे आर नॉट यूजिंग। या तो उनकी स्ट्रैटेजी में गलती हुई कि उन्होंने वो मौसम चुना जबकि टैंक ऑफ द रोड नहीं जा सकते हैं, बर्फ पिघली हुई है, जमीन दलदल ही है, जो भी है, तो उनका रशियन स्ट्रैटेजी फेल हो गया है। और पुतिन साहब ने भी यही अपने जर्नल्स को कहा है कि आप लोगों ने अपनी कमजोरियां दिखा दी हैं। और अब तो हालत ये है कि यूक्रेनियंस वापस कब्जा कर रहे, रिकैप्चर कर रहे हैं उनके एरियाज को जिनको रशिया ने कैप्चर किया, क्योंकि उधर वो अपना देश है, अपने देश के लिए वो लड़ रहे हैं और वो हिम्मत नहीं हार रहे। तो Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/globalstudy. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6
आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। जिसका टाइम फ्रेम ऑफ डेवलपमेंट 8 से 10 साल है, उसमें हमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजीज अभी से डालनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टेड एनर्जी हो, चाहे वो एडवांस सेंसर्स हो, वेपन्स हो। ये सब हमें चीन को ध्यान रखते हुए अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी में आत्मनिर्भरता का जो हम कैंपेन कर रहे हैं और ये बिल्कुल केपेबल है। हमारी इंडस्ट्री आज रेडी है कि इस तरह के कर पाए। ज़रूरत यह है कि DPSUs को प्राइवेट सेक्टर एंड MSMEs के साथ इंक्रीजिंगली इंटरेक्ट करके सिनर्जी के साथ इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हमारा इंडिजिनस ट्विन इंजन आएगा एंड उस समय वो टॉप ऑफ द लाइन होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप लोग आए। उसको बहुत जोरों की तालियों से आप एक बार धन्यवाद करें फॉर्मर चीफ्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस सर। मंच पर उपस्थित सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आपने जो भी बातें हमसे साझा की, जो विचार सबके सामने रखे, उन्हें करोड़ों लोगों ने सुना। ये जाना कि सेना कैसे काम करती है, कैसे 24 घंटे हमारी जवान सरहद की रक्षा करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और देश की हिफाजत में मर मिटते हैं, फना हो जाते हैं। पूरा देश आज अपने जवानों को सलाम करता है। And straight on to breaking updates coming in. A crackdown on the Chinese loan app scam case. We are now given to understand that the Enforcement Directorate has detected and frozen over 46 crore rupees that was kept in various bank accounts and virtual accounts of Eastbuzz, Razorpay, Cash Free and Paytm after recent raids in connection with the Chinese loan app scam case. Well, we'll go across to Shravan as well to get us more details, but a big ED crackdown in Chinese loan app case where we understand that 46.67 crores that was kept in various bank accounts and virtual accounts of Eastbuzz, Razorpay, Cash Free and Paytm after recent raids in Chinese loan app scam case. That's a big ED crackdown on Chinese loans app scam case. And more details that are just coming in that the ED has frozen and detected amount over 46 crore rupees that was kept in various bank accounts of Eastpay, Razorpay, Cash Free and Paytm is what we are given to understand. A total of 33.36 crore rupees was found with Eastbuzz Private Limited in Pune, whereas 8.21 crores with Razorpay Software Private Limited in Bengaluru and 1.28 crore rupees with Cash Free India Private Limited. A very short break, but we'll come back with live updates from the big SCO Summit that will take place today. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. All eyes on Prime Minister's engagements at the SCO Summit, which will take place today. Now remember, politics that has also broken out over Prime Minister's big photo op. BJP has now hit back, saying, and I quote, is Rahul ji showing Lal Aag by signing MOU with China or by eating Chinese food with them during Doklam. That's a BJP response coming in with response in regard to the politics that has also broken out over the SCO Summit. Remember, Prime Minister Modi has arrived in Samarkand. The visuals on your screens of Prime Minister with the SCO leaders. He was greeted by the Uzbek president as well when he arrived at the Shanghai Cooperation Organization Summit venue. These are the visuals from the summit venue, the summit that will take place today.
Remember, Prime Minister Modi landed in Uzbekistan Samarkand last night for the SCO Summit. We have our executive editor Niranjan also joining us. Niranjan, if you could take us through the details on what can we expect from this SCO Summit which will take place today. Well, the Prime Minister has already, begun his engagement at the SCO. The Prime Minister has, shared that photo opportunity with Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, and other leaders of the Shanghai Cooperation Organization, which is deliberated on the regional security situation in ways to enhance trade and connectivity at the annual summit of this grouping. It's also the first time that the Prime Minister and Xi Jinping have come face-to-face at the summit in this historic Uzbek city since the start of the border standoff between India and China in eastern Ladakh around 28 months back. However, there is no clarity on whether there will be a bilateral meeting between the Prime Minister and Xi Jinping on the sidelines of the summit. Summit, as you know, is being attended also by Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, Iranian President Ibrahim Raisi, and leaders of several other Asian countries. Now, the summit of this eight-nation grouping is taking place amid the growing geopolitical turmoil, largely, of course, triggered by the Russian invasion of Ukraine and China's aggressive military posturing in the Taiwan Strait. Now, ahead of the deliberations in the restricted format of the summit, leaders of the permanent members of the grouping posed for a group photo, and that photo was put out. The Congress party tried to, politicize it as well. Let me go across to Mid and Jini Bakshi joining us on the phone line. Jen Bakshi, do you think this politics, it's bizarre because the Prime Minister was standing first in line. And the Prime Minister was standing first in line for a political party to say that, we are on the opposite side of Pakistan, etc., etc. All this politics that is playing out on the sidelines, Jen Bakshi, how do you view that, and should they be doing that? I have always maintained that on issues of national security, in every mature democracy, there has to be a bipartisan consensus. So far, we have not seen that bipartisan consensus at all. And if they are standing on opposite sides, it is because we are on opposite sides. So what is your problem? What do we want it to do? We should have stood hugging the Chinese Prime Minister with the border issue not resolved in Ladakh, with the Pakistanis continuing to stoke terrorism in Jammu and Kashmir and now in Punjab and even elsewhere, and then encouraging the Taliban to host all the terrorists there. Should we project a false image of Bon Homie to please a particular party? This is utterly amazing. You stand by a protocol generally that is decided by the host country, and it is based on certain parameters. We are in the front line. Of course, we have to be in the front line. Where else will we be? But to say that you are on the opposite side of China and Pakistan, so what do you think the aim of this conference is? Is to make us hug and kowtow to China's Xi Jinping, make us beg Shehbaz Sharif now to talk peace? What? We've done our maximum to try the path of peace, to pursue the path of peace, both with China and Pakistan. And they don't seem to understand, and they don't respond in the right manner, then the only answer is to give it tit for tat. Treat the other person exactly as he's treating you so that he understands. And some people just don't understand unless you talk or use the language of force with them. Force against force. And that sometimes has to be done. We made all efforts to talk peace with China, with Pakistan. Look at the number of times the Chinese President Xi Jinping has come and swung on the chula in Gujarat or down south. What have we not done? But if people don't want peace, how can you can't clap with one hand? It takes two hands to clap. I think that should be very clear to people, and they should not hype up things for no rhyme or reason for the sake of creating a soundbite. Yes, Major General G.D. Bakshi, sorry I'm interrupting you there. We are getting live visuals from the SCO Summit. Let's take a look.
बच्चे हैं, ये तो आज इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आयु, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रवेश की आयु 3 हो गया। बाल वाटिका से शुरू होगा, बाल वाटिका से 1, 2, 3 पूरा करके 1 से 12 और 12 से आगे अमूमन 4-5 साल की अगर उच्च शिक्षा की एक औसत एवरेज हम माने 3 से 23, आबादी की 3 से 23 वाले आयु वर्ग में हमारे देश में लगभग 52 करोड़ 520 मिलियन नौजवान है। मित्रों, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं। हम भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की लीडरशिप पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये तब होगा जब ये 52 करोड़ लोग, 520 मिलियन लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवाह से जुड़ेंगे। सबकी अर्थनैतिक स्थिति एक नहीं होती है, सबकी बौद्धिक स्तर शायद एक ना हो, जन्म, विरासत या मौका यह हमारी बाधक नहीं हो सकती है। हर एक जीव में अपने आप में एक ताकत है। व्यवस्थापकों की दायित्व है, सरकारों की दायित्व है, समाज की दायित्व है, ये सारे 52 करोड़ बच्चों को एक अवसर देना। इसी की एनविजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2-3 मूल विषयों को ध्यान दिया गया है, ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम कितने बार भी पढ़ते हैं, उसमें कई सारे नवाचार हमको ध्यान में आता है, कई सारे नया आयाम ध्यान में आता है। लेकिन उसको अगर 2-3 मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा आधारित किया जाएगा। कोई भी समाज की मूल चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा में ना करें, अपनी भाषा यानी जो बालक या जो बालिका जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, अगर उसी में वो पढ़ता है और लिखता है, तब जाके उसकी सृजनशीलता के सर्वोपरि आता है, सर्वोत्तम आता है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है। दुनिया की जितने बड़े अर्थनीति आज हमारे सामने है, सभी के वहां कोई एक भाषा की बंधन नहीं है। मैं अगर 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूं, अगर जापान गुणवत्ता की एक वैश्विक मानक हुई है, जापान की इनोवेशन जापानी भाषा में हो रहा है। जर्मन अगर एक इंजीनियरिंग महाशक्ति बनी है, तो जर्मन की इनोवेशन और उनकी टेक्नोक्रेट मूलतः जर्मन भाषा में उसको बनाते, समझते और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, चाइना अगर इतनी बड़े ताकत आज बनी हुई है, उसमें एक प्रमुख कारण है कि ज्यादातर लोग मैंड्रिन में उसमें से कारोबार करते हैं। हमें कोई भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन भारत को अगर खड़ा करना है, भारत की सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा तमिल है, भारत की राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा आसामी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा उड़िया है, भारत की राष्ट्रीय भाषा मराठी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। सभी भाषा में भाव एक है। इसी सत्य को राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समझा और भारतीय भाषा पे शिक्षा व्यवस्था होगा, ये कहा गया। भारत की भाषा, भारत की शिक्षा को रूटेड किया जाएगा, मूल से जोड़ा जाएगा। मित्रों, भारत के अंदर जीवंत प्रमाण सभ्यता की कम से कम 5000 साल की मिलती हैं। दुनिया की शोधकर्ता जब कोई भी समाज को दिखते हैं, समझते हैं, तब उसके आयु को गिनते हैं। भारत में अगर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की डॉक्यूमेंट्स में जाएं, 3 शहर भारत में इससे मिलते हैं, जिन 3 शहरों की आयु कम से कम 3000 साल से ऊपर है। इसी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ यानी जमुना के किनारे कुछ आबादी है जो निरंतर पिछले 3000 साल में बैसा है। काशी, जिसको हम विद्यानगरी मानते हैं, काशी की राजघाट इलाके को हम
वैज्ञानिक प्रमाण के साथ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहता है यह इलाका पिछले हजारों साल से यानी 2,500-3 हजार साल से यहां विद्यमान है। वैसे ही गुजरात की यह संयोग देखिए, देश की नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की जो जन्मस्थान है मेहसाणा जिले की बड़नगर इलाका, उसी इलाका का भी वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है 2800 साल की वो आबादी है। इसके अर्थ जिस समाज में 2,500-3 हजार साल पहले व्यवसाय, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आधारित एक शिक्षा व्यवस्था था, वो व्यवस्था कितना जड़ से जुड़ा हुआ है। हमें अपने जड़ आधारित शिक्षा नीति ने महत्व दिया है। जड़ आधारित, ग्राउंडेड, रूटेड 21वीं सदी की चुनौती को सामना करने वाला एक शिक्षा व्यवस्था बनानी है। मित्रों, अगर मैं आपको 2 उदाहरण आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा व्यवस्था की उपज क्या है। अभी अभी हम कहते हैं भारत डिजिटल इंडिया की कैंपेनिंग में जा रहा है, भारत खुद को इंटरनेट के साथ जोड़ रहा है। मित्रों, 2022 की अंत तक भारत ने 5G रोल आउट कर देगा। तीनों टेलीकॉम कंपनी प्रमुखतः 5G रोल आउट करेंगे। भारत की IIT से बनी हुई टेक्नोलॉजी को BSNL प्रायोरिटी से रोल आउट करेगा। यानी भारत की वैज्ञानिक, भारत की टेक्नोक्रेट, भारत की इनोवेटर, भारत की कंपनी एक इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव 5G टेक्नोलॉजी 2022 की दिसंबर तक रोल आउट करेगा। 2023 के अंत तक भारत की 6 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर डल जाएगा। भारत जब इंटरनेट की इतनी पेनिट्रेशन में आएगा तब क्या होगा। आज तो भारत की डिजिटल ट्रांजैक्शन को हम इकट्ठा करें तो विश्व की ट्रांजैक्शन को 40% यही होता है। भारत की केवल नहीं, दुनिया की कोई आयाम आने वाले 5-7 साल के अंदर ऐसा नहीं रहेगा जो इंटरनेट के माध्यम से प्रवाह नहीं करेगा। वो आपकी रोजमर्रा की सुबह आंख खोलने के उपरांत सोने तक आपकी जो सारे दिनचर्या रहेगा ये टेक्नो सभी होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा, ये इंटरनेट के थ्रू दौड़ेगा। भारत उसकी लीडर बन रहा है। भारत की नॉलेज पावर केवल भारत के लोगों को फायदा नहीं देगा, विशेष करके इमर्जिंग इकोनॉमी को, भारत की आस पड़ोस दुनिया की जो गरीब देश है, समूचा अफ्रीका, समूचा लैटिन अमेरिका, समूचा एशियन कंट्री, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री आज भारत की ओर देख रहे हैं। भारत किस प्रकार की ढांचा अपना रहा है। अगर उसको और थोड़ा मैं विस्तार करूं, इस बार एक समीक्षा हम लोगों के सामने आई। पोलियो का टीकाकरण करते हुए भारत को 30 साल लगा था। पिछले 2 साल के अंदर भारत ने इंडिजिनस 2 टीका बनाया और 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण भी कर, 200 डोज टीकाकरण कर दिया। यह भारत की इमर्जिंग कैपेसिटी है। भारत की कोविन ऐप में सेकेंड्स में टीका लगाने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाता है। दुनिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री में यह आज संभव नहीं है। कोरोना के समय में हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमारी नागरिकों को दिया। अमेरिका ने भी चेक दिया गया, हाथ में दिया गया, हमने डिजिटली दिया, बैंक खाते में दिया, अमेरिका ने घर घर जाके चेक में दिया। यह कहानी नहीं है, यह वास्तविकता है। यह इन्हीं दिनों में हुआ है, पिछले 3 साल में हुआ है। और कौन बनाया? भारत की मेधा शक्ति बनाया, भारत की ज्ञान परंपरा बनाया, भारत की नौजवान बनाया। यह राष्ट्र सर्वोपरि है। मित्रों, इस प्रकार की व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यानी टेक्नोलॉजी को महत्व दिया गया है। 21वीं सदी की आवश्यकता क्या रहेगा? आने वाले दशकों के अंदर दुनिया की आधे काम मशीन करेगा, आधे काम मनुष्यों के हाथ करेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? दुनिया में एक भी कोई अर्थनीति नहीं है जो चिंतित नहीं है कि हमारे वहां काम क्या रहेगा आने वाले दिनों में। जिस प्रकार के ऑटोमेशन, जिस प्रकार के इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस प्रकार की डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कामों की पुराने
चरित्र बदल रहा है, नया चरित्र इमर्ज कर रहा है। जो देश उसको समझ पा रहा है, उसको लोकेट कर पा रहा है, वो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। भारत उस सत्य को समझा है। फ्यूचर ऑफ द जॉब क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत में जय अनुसंधान ही करना पड़ेगा। भारत के किसानों को कभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि आप शस्य उपजाओ, हमें अमेरिका की PL4 की सड़े हुए गेहूं नहीं चाहिए। भारत के किसानों ने मेहनत किया, पसीना बहाया। आज भारत खाद्य सुरक्षा में खुद को संभाल रहा है, दुनिया को संभाल रहा है। ऐसे ही आज जो हमारी इनोवेशन की कल्पना है, ये इनोवेशन हमारी आवश्यकता को तो पूरा करेगा ही, दुनिया की आवश्यकता को पूरा करने की दायित्व हमारी कंधे पे है। यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हिस्सा है। मित्रों, कभी भारत संकुचित विचार नहीं रखा है। भारत शुरू से ही, संस्कार से ही, विरासत से ही एक विषय की विश्वासी है। हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हम विश्व की एक प्रदूषणकारी देश नहीं है। जो लोगों ने प्रदूषण ज्यादा करते हैं वो लोग कोप की फोरम में कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, फिर कभी आते हैं। मेरे प्रधानमंत्री जो कह के आए थे प्रदूषणकारी देश नहीं होने के बाद, पेरिस में जो कहे थे, ग्लासगो में हम प्रदूषणकारी ना होते हुए भी बेंचमार्क को खुद के लिए और बड़ा कर दिए। इसीलिए मैं मानता हूं मेरे समग्र मानव समाज मेरे परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये नरेंद्र मोदी जी की तत्व नहीं है, ये भारत की विरासत की तत्व है। उसी का उन्होंने प्रतिपादन ग्लोबल फोरम पे किया। इसके अर्थ है हमें वैश्विक नागरिक बनानी है। मित्रों, आज चुनौती है। हम ज्ञान एक कमोडिटी ऑफ आइसोलेशन नहीं है। नॉलेज को हम एक चार दीवारी में बांध नहीं रख सकते हैं, ये तो प्रभाव होना है। इसलिए भारत में कहा गया है विद्या दान सबसे पवित्र काम है। मित्रों, जब अलेक्जेंडर भारत आया आक्रमण करने के लिए, जब लौटा, पराजित होकर लौटा, भारत को दखल नहीं कर पाया, कई युद्ध जीतने के बाद वो अपने सहयोगी को कह रहा है ये यार गजब देश है, इसको नहीं जीता जा सकता है ना। कैसे ना, यहां इसलिए गजब है, ये देश की राजा को हराने के बाद राज्य नहीं होता है हमारे कब्जे में। यहां एक ऐसे लोग हैं, ऐसे तबके के लोग हैं जो हमारे नियंत्रण में भी नहीं आते, वो राजा के नियंत्रण में भी नहीं है। और जब तक उसको ना हराओ तब उस देश को हम अख्तियार नहीं कर पाएंगे। वो पूछता है उसके सहयोगी कौन लोग हैं? अरे समाज में एक गरीब आदमी है, जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी SCO देशों में निवास करती है। भारत SCO सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की
बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi speaking at the SCO Summit in Samarkand in Uzbekistan. He said India is working towards being made into a manufacturing hub and concentrating on a people-centric development model. He also said that the Indian government is continuously supporting innovation and already India has 70,000 startups and the aim is to support SCO countries through these various processes of development. He said that the world is battling another major issue, another major crisis at this point, and that is the food security issue, feeding citizens of the world, and said that in this regard, promoting millet cultivation could be a major step. Earlier, the Prime Minister joined leaders and heads of state of SCO countries, and we've been bringing you that continuous live coverage. And joining us now is Major General G.D. Bakshi. Mr. Bakshi, well, when we talk about what the Prime Minister just said, he said that the government is working towards making India a manufacturing hub, and that's a major statement. Would you agree? Absolutely, and with many implications. You know, it is a factual statement. He is quite obviously in this summit focusing on economy. Economy is what is troubling the world sorely right now because of the double whammy of COVID-19 followed by the Ukraine war, the energy disruption, the
food supply disruption, the manufacturing disruption. The world is staring at a recession coupled with stagflation. It is one of the most dire situations that the world has faced as an entity. So, and these times, it is natural that the Prime Minister should talk of economies and how to revive them. And he has spoken of what India is doing and how we are on a 7.5% growth rate of GDP, which is unprecedented, given that even the Chinese economy is faltering badly, the American economy is faltering, and the European economy is headed for disaster. So this is the critical subject of the moment, and quite rightly the Prime Minister has addressed this criticality, and he has pointed out what India is doing. And this grouping, Shanghai Cooperation Organization, and also the other organizations. Right. In fact, it's a grouping that, particularly this year, the entire world has its eyes on the grouping this year. And India taking the lead in many respects on that front. Major General Bakshi, stay with us. We also have with us Mr. Gaurav Bhatia, spokesperson for the BJP. Mr. Bhatia, the SCO Summit this year, it said that it is a platform and discussions here. Whatever happens in this particular summit, it will change, the entire picture of geopolitics. We just heard the Prime Minister speak. He stressed on food security, promoting millet cultivation. We'd like your thoughts in this regard. In this summit, the Prime Minister has placed India's stand with utmost clarity and has placed it strongly. This has been the trait of the Prime Minister's leadership, be it the SCO Summit or Quad or BRICS or talking in bilateral summits. India's stand resonates with the world. And the reason is very simple. As the Prime Minister emphasized, India has a very strong growth rate, better than growth rate of the other economies in the world. And the fundamentals of the Indian economy, coupled with the fact the manpower that we have and the utilization of the same, augurs well for our country. And it is a stand taken by the Honorable Prime Minister where it is clearly reflected that India has a lot to offer to the world. On the global stage, India is offering support to other countries as well. And this is a very strong message which is being welcomed by all, and it makes every Indian proud. Many thanks, Mr. Gaurav Bhatia, for speaking with us. And we also have with us Major General G.D. Bakshi. And, Major General Bakshi, if you can hear me, when we talk about changing the face of geopolitics, the past few months have seen so much transformation in that regard. And, from that standpoint, this SCO Summit, very crucial and very significant. Let's listen in to what the Prime Minister said further. कनेक्टिविटी की हम बात करें, एनर्जी की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पूरा विश्व महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। एससीओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का
सामना कर रहा है। SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। एक्सेलेंसी, हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य SCO सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके SCO के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, विश्व आज एक और बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है, और यह है हमारे नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस समस्या का एक संभावित समाधान है मिलेट्स की खेती और उपभोग को बढ़ावा देना। मिलेट्स एक ऐसा सुपरफूड है जो न सिर्फ SCO देशों में बल्कि विश्व के कई भागों में हजारों सालों से उगाया जा रहा है और खाद्य संकट से निपटने के लिए एक पारंपरिक, पोषक और कम लागत वाला विकल्प है। वर्ष 2023 को UN इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जाएगा। हमें SCO के अंतर्गत एक मिलेट फूड फेस्टिवल के आयोजन पर विचार करना चाहिए। भारत आज विश्व के मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती डेस्टिनेशन में से एक है। अप्रैल 2022 में गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया। पारंपरिक चिकित्सा के लिए यह WHO का पहला और एकमात्र ग्लोबल सेंटर होगा। हमें SCO देशों के बीच ट्रेडिशनल मेडिसिन पर सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत एक नए SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर पहल लेगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रेसिडेंट मिर्जियोयेव को आज की बैठक के उत्कृष्ट संचालन और उनके गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए फिर से धन्यवाद अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। And joining us on the phone line is Major General K.K. Sinha. Major General Sinha, the Prime Minister speaking at the SCO Summit and saying that how his government is working continuously in the past few years towards making India a manufacturing hub. The Prime Minister clearly sending out the message to SCO countries and perhaps even to the world that India is ready to take on that role. Your thoughts? Yeah, it's a very great day for the India when the Prime Minister, has been speaking from Uzbekistan, the SCO Summit of 2022. See, the message is very clear to the world. And the way the India is poised now, you are asking me one pertaining thing, regarding the manufacturing hub in India. See, the ease of doing business, the way the India is now proving the whole world that, other countries like especially China,
which used to be actually the industrial hub or assembling hub of the world, manufacturing hub of the world. Now, the way they have, messed up everything, India in another way, which is absolutely, open now in the ease of doing business, the way the Indians, have got, they do not want to dominate the whole world, but they want to be a facilitator to the whole world. They are not thinking on the line of profit, but, line of profit will be coming together when it will actually provide with the supply chain, the way the India is, working it out. So it is a very, very strong message the Prime Minister has given from there. And in the end, which was just listening, he talked about, tourism, and he was saying the medical tourism, and especially quoting the way the WHO is looking forward in the area of Gujarat, where the traditional medicines are going to be done. And India has proven during this COVID-19, the way we provided that India has become the manufacturing hub of the complete medicine, which is absolutely affordable, cost, which can be available with the complete supply chain, even to the remote areas where the things can't reach. So these are, it is not just a talk. It is walking the talk. The India and Prime Minister has been, actually giving it from Uzbekistan SCO Summit. Thank you very much, Major General Sinha, for joining us there and sharing your thoughts. The Prime Minister Narendra Modi is delivering a very strong message there. Many takeaways from his message. And we are bringing you all the latest updates from Samarkand in Uzbekistan, the venue for the 2022 SCO Summit. And in terms of visuals, and just a short while back, we heard the Prime Minister speak on that particular stage. All the updates coming up here on Republic. Stay tuned. Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Irrigation here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government.
जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है, चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Bike rally is being led by the Union Minister Jinping here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers there. अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच। एंड आप बहुत ही पॉपुलर हैं, कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी हैं, मगर आप खुलकर बात करते हैं और हमें आप इसलिए बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज यू डोंट होल्ड बैक एनीथिंग एंड यू टेक ऑल क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगा आज जो ये हमारी जो कॉन्वर्जेशन है जो रिपब्लिक भारत रिपब्लिक टीवी में लाइव जा रही है, इस पे आप जो सूचना प्रसारण मंत्रालय को नहीं मगर राष्ट्र सर्वोपरि के थीम पर भी आप थोड़ा एक्सपैंड करके खुलकर बोलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गिव अनदर राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेलकम द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड वन ऑफ द यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स इन द मोदी गवर्नमेंट, अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, पहले आई हैव बीन प्रिविलेज्ड टू नो यू फॉर अ लॉन्ग टाइम और हमने आपके करियर को भी फॉलो किया है। ये जो आपकी जो अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है as the Union Cabinet Minister for Information and Broadcasting, आप अपने प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मानते हैं इन दिस रोल एज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? अनुराग जी। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो मैं रिपब्लिक भारत का आभार प्रकट करता हूं कि आपने सम्मेलन का थीम भी और नाम भी ऐसा चुना है जिसको नेशन फर्स्ट कहें, ये राष्ट्र सर्वोपरि कहें। यह हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है कि देश को ही प्राथमिकता दे। और मैं जब युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तब मेरा पहला कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जब सेना पर पथराव हो रहा था, संसद में कोई बोलता नहीं था, मैं उस बार दूसरी बार का सांसद था 15वीं लोकसभा में, तो मैंने इंडिया फर्स्ट करके कार्यक्रम चलाया, जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी दी। फिर कलकत्ता से कश्मीर तक की यात्रा की आर्टिकल 370-35 से ख़त्म करने के लिए, लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, सेना पर पथराव रुकवाने के लिए और कश्मीर को जो ग्रेटर ऑटोनॉमी स्वायत्ता देने की बात करते थे उसको रुकवाने के लिए। तब शायद तिरंगे में कोई विश्वास, उस तरह से मीडिया के लोगों ने प्रश्न खड़ा किया, कौन आएगा 21वीं शताब्दी में तिरंगे के लिए आपके? मैं तब भी कहता था कि नहीं, ये देश की बात है, भारत की बात है। आप याद करिए कलकत्ता से कश्मीर की वो यात्रा, जब जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका गया, मुझे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाला गया, अपने देश में तिरंगा झंडा नहीं फहराने देते थे। वो भारत की प्राथमिकता थी, देश को पहले रखकर था। आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के आने के बाद अनुच्छेद 370-35 से भी मुक्ति मिल गई। आप में से कोई भी लाल चौक पर जाकर आज तिरंगा फहरा सकता है, जम्मू कश्मीर के किसी कोने पर तिरंगा फहरा सकता है। जहां तक मेरे अपने डिपार्टमेंट की आपने बात कही, सूचना प्रसारण मंत्रालय में हम पहले जब विपक्ष में थे तब भी और आज भी हम एक ही बात के पक्षधर हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, और वो होनी भी चाहिए। जब आप जैसे सीनियर एडिटर्स सवाल पूछते हैं, चाहे सत्ता पक्ष वालों से, विपक्ष वालों से, तो देश के प्रति हमारी जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए। लेकिन कई बार लक्ष्मण रेखा को पार करने का काम हो तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है किसी को इस तरह से करने के लिए। आपकी जो अपनी बॉडीज बनी है उसके माध्यम से ही
अधिकतर इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व होते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया के आने के बाद, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब डिजिटल मीडिया ने एक नई चुनौती खड़ी की है। कई जगह संकट भी है, कई जगह अवसर भी है। लेकिन डिजिटल मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी आए जो वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से देश के खिलाफ जहर भी उगलने लगे, देश को बांटने का प्रयास भी करने लगे। तो वहां पर सूचना प्रसारण मंत्रालय कहीं पर रुका नहीं। हमने 102 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को, वेब पोर्टल्स को प्रतिबंध लगाने का काम किया है, उनको बैन करने का काम किया है, जो आज तक पहले नहीं हुआ। देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम भी किया है। लेकिन दूसरी ओर, चाहे अखबार हो, टीवी चैनल्स हो या बाकी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा है खबर पहुंचाने का, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्टा हमने डिजिटल सेवा पोर्टल शुरू करके आपको मेरे दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है और हम अधिकतर समस्याओं का हल वहां पर करते हैं। ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात जब करते हैं तो उसमें कर रहे हैं। अनुराग जी, क्या आपको लगता है कि मीडिया और राष्ट्रवाद पर डिबेट की जरूरत है? क्योंकि किसी ने मुझे कहा, परसों एक बात हो रही थी, इनफैक्ट आज थोड़ी देर में अनुपम खेर जी आने वाले हैं, कल उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आज से 10 साल पहले लोग कहते थे कि नेशनलिज्म इज अ बैड वर्ड फॉर द मीडिया। आप इफ यू आर अ नेशनलिस्ट यानी कि आप प्रेजुडिस्ड हैं, इफ यू आर अ नेशनलिस्ट यू आर बायस्ड। और हमने जब रिपब्लिक शुरू की तो हमने कहा नेशन फर्स्ट, वी वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन आवर स्लीव, वी डोंट हैव टू वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन आवर स्लीव। तो आपको क्या लगता है कि क्या, मैं कहता हूं, मुझे लगता है, मैं जानना चाहता हूं आपकी सोच, मुझे लगता है हर पत्रकार को पहले राष्ट्रवादी होना चाहिए। व्हाट इज योर व्यू? कैन यू सेपरेट नेशनलिज्म फ्रॉम जर्नलिज्म? हर भारतीय को राष्ट्रवादी भी होना चाहिए और राष्ट्रहित में सोचना भी चाहिए। और रिपब्लिक भारत के बारे में कह ही सकता हूं कि आपको एक कहने की जरूरत नहीं कि नेशन फर्स्ट या राष्ट्र सर्वोपरि। आपके प्रोग्राम जो भी देखेगा वो अपने आप ही कहेगा कि नेशन फर्स्ट वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए कहने से कई बार कुछ नहीं होता, आपके कर्मों से आपकी पहचान होती है। और आपके प्रोग्राम, आपके चैनल्स, उससे आपकी एक पहचान बनी है। और मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई दूसरी बार सोचना भी पड़ा हो। देश के सोचने का नजरिया भी बदला है। पिछले 8 वर्षों में देश के प्रति सोचने का नजरिया भी बदला है और देश में काम करने का तरीका भी बदला है। जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया, वो 8 साल में करने का काम भी हमने करके दिखाया है। जनता भी उस दिशा में भारत को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से, आप देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, अपने चैनल्स पर देखेंगे, बहुत बड़ा बदलाव सोच में आया है। और जो लोग इससे परे हट रहे हैं वो हाशिए पर हैं। देश हित में जो नहीं सोचेगा वो कहीं नहीं होगा। हमारी पार्टी सदा कहती, भारतीय जनता पार्टी, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। लेकिन कुछ लोगों के लिए फैमिली फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और नेशन लास्ट होता है। आज वो कहां पर है? वो लास्ट में ही और लॉस्ट भी है। तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात जो आपने कही, इसकी लक्ष्मण रेखा क्या है अनुराग जी? मैं आपको बहुत स्पेसिफिक उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे लगा कि सीएए के दौरान जब देश में डिबेट हुई तो मैं खुलकर कहूंगा, मुझे लगा कई चैनल ऐसे थे जिनकी जो रोल थी उस समय वो एंटी नेशनल थी। शाहीन बाग के समय में जो हमने देखा कि एक तरह से there was an attempt to polarize the audience, to polarize one community, और एक बार नहीं, हर बार। और जो हम कहते हैं, जिसको कहा गया, जो हमने 2016 में, अनुराग जी थोड़ा लंबा सवाल मेरा होगा आप, ताकि, मगर 2016 में जब मैंने देखा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहा गया जेएनयू के कैंपस में, और उसका समर्थन करने के लिए कई राजनीतिक दल पहुंच गए, और राजनीतिक दल ही नहीं, उनके साथ उनके मीडिया के कई साथी भी पहुंच गए। जब हमने पाकिस्तान पर हमला किया, उस समय लोगों ने कहा कि सबूत क्या है, तो सबूत गैंग आ गई। और मैं चाहता हूं कि आप इस पर जरा विस्तृत तौर से जवाब दें कि अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो हैशटैग्स बने, लोगों का कनेक्ट इसके साथ बना, मीडिया पर भी सवाल उठाया गया। पिछले 6-7 सालों में हैव यू सीन अ चेंज?
in the way people are expecting the media to play its role in nation building. और इसमें इसके साथ साथ चलते हुए जिन लोगों पर सवाल उठाया जाता है वो कहते हैं ये तो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ये फाइन बैलेंस हो जाता है. एज अ मिनिस्टर, एज अ लीडर, हाउ डू यू व्यू दिस? देखिए, सच को कोई छिपा नहीं सकता. बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं भ्रम पैदा करने के, जिससे भय भी उत्पन्न होता है. और CAA के दौरान यही हुआ. सच्चाई देश के सामने लाने की बजाय एक कल्पना ऐसे की गई ना जाने इसके आने के बाद कितने लोगों को भारत छोड़ना पड़ेगा, जो सत्य से परे था. और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उसका पूरा दुरुपयोग राजनीतिक दलों से लेकर टीवी चैनल्स तक हुआ, जो देश हित में नहीं था, जिसने समाज में और बिखरावट पैदा की, जिसने समाज में एक दरार पैदा करने का प्रयास किया, जिसके कारण कुछ लोगों के लिए वो एक राजनीति का अड्डा बन गया. लेकिन देश की छवि दुनिया भर में उससे प्रभावित होती है, देश की छवि पर धब्बा लगता है, और यही नहीं, देश के विकास पे रुकावट भी आती है. तो केवल कुछ चैनल्स के लिए वो बार्क रेटिंग्स अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो देश के विकास में एक बहुत बड़ा अवरोध पैदा करती है. दूसरा जो आपने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या हो, आपने देखा होगा आहिस्ता आहिस्ता लोग उन चैनल से शिफ्ट कर जाते हैं. आप उनको मजबूरी के कारण वो नहीं दिखा सकते. वो शिफ्ट होके वहीं जाते हैं जहां पर उनको देखना है, जो उनको देखना पसंद है, सुनना पसंद है. वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आते ही है जो राष्ट्र हित की बात करते हैं, और देश की जनता भी उनको देखना ही पसंद करती है. और जहां तक टुकड़े टुकड़े गैंग की आप बात करते हैं, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो कभी पोस्टर चिपकाती थी JNU में, अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जी, जो भारत के टुकड़े हो हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते थे, आज वो भारत जोड़ो यात्रा में पाए जाते हैं. बिल्कुल. टुकड़े टुकड़े करने वाले भारत जोड़ो पे लगे हैं. टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रात को 12 बजे आके कंधे मिलाने वाले, आज वो केवल सैर के लिए निकले, किसके लिए निकले हैं? भारत. अरे 370-35 से जम्मू कश्मीर को अलग रखने का प्रयास नेहरू जी ने किया, लेकिन उसको पूरी तरह से जोड़ने का काम अभिनव पहले भी था, आज भी है. लेकिन कुछ लोग, किसी अखबार ने आज भी लिखा, और मुझे उस पर आपत्ति है, जो उस अखबार ने लिखा इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर. मैं खुले मन से कह रहा हूं, भारत में चलने वाला अखबार ये लिख भी कैसे सकता है? सबको पता होना चाहिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा. और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत के दोनों सदनों ने कहा है कि ये भी भारत का हिस्सा है. आज नहीं तो कल वो भारत का हिस्सा होगा ही, मेरे भाई और बहनों. अनुराग जी, जनवरी 2021 में एक इंसिडेंट हुई थी, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको कहना चाहता हूं कि फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था, जो हमने कहा था चैनल में, मुझे नहीं लगता ये फार्मर्स एजिटेशन है. मुझे लगता है ये प्रायोजित है, सुनियोजित है, प्लान्ड है, स्पॉन्सर्ड है, पॉलिटिकली फंडेड है. और अनुराग जी, हम तो खुलकर कहते हैं रिपब्लिक भारत में ना, हम हमारे जितने इधर लोग हैं, जितने हमारे शुभचिंतक के, वो जानते हैं हम लेफ्ट राइट नहीं करते, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख देते हैं. उस समय एक ट्वीट आई थी, ग्रेटा थनबर्ग की ट्वीट थी, जो एक तरह से ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं. उस ट्वीट के साथ उन्होंने गलती से एक टूल किट को अटैच कर दिया था, आपको याद होगा. और मैं बैठा था और मुझे किसी ने मेरे प्रोग्राम के ठीक 15 मिनट पहले दिखाया कि अर्नब ये अटैचमेंट देखो. और हमने उस समय एक हैशटैग लगाई थी, टूल किट गैंग. आपको याद होगा, टूल किट गैंग. रिपब्लिक नहीं, हम तो हैशटैग के एक्सपर्ट हैं. हमें लगता है अगर हैशटैग का नंबर 1 अवार्ड मिलेगा दुनिया में, हमें मिलेगा. मगर उसके साथ साथ मैं चौंक गया अनुराग जी कि भाई ये कैसी टूल किट है. इसमें बताया गया है इस दिन हम ये करेंगे, उस दिन तुम पहुंच जाना, 15 दिन बाद हम सरकार पे ऐसे प्रेशर डालेंगे, हमारे एक्टिविस्ट इधर से आएंगे, वॉशिंगटन में आप ट्वीट कीजिए,
दिल्ली में रेस्पॉन्ड कीजिए, पूरी एक ग्लोबल प्लानिंग हो रही थी। और मुझे लगा दैट दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस एट ऑल, ये तो ग्लोबल कंस्पिरेसी है। और मुझे लगा था उस समय कि भारत में मीडिया, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन के जितने टूल्स हैं, जितने इंडिपेंडेंट हो उतना अच्छा है, और जितनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस हो, ग्लोबल प्रेशर या ग्लोबल फंडिंग हो, उतना ही ज्यादा डेंजरस है। हाउ डू यू व्यू इट? क्या आपको लगता है कभी कभी कि हो सकता है कि भारत जितना प्रभावशाली बन रहा है, आज राजनाथ जी सुबह थे, और जितना बन सकता है इसको रोकने के प्रयास हो सकते हैं यूजिंग मीडिया एंड कम्युनिकेशन बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया? ऐसे मुझे लगता है अर्नब जी बहुत उदाहरण देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में पिछले वर्ष असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ दूसरे राज्य के साथ, जी, देश में मीडिया ने बड़ा हंगामा किया, सोशल मीडिया पे लगता था ट्रेंड हो रहा है जी। उसके 85% से ज्यादा ट्वीट साउथ अमेरिका और अमेरिका से थे। भारत में कुछ घटने वाला किसी राज्य के बॉर्डर डिस्प्यूट का साउथ अमेरिका से क्या लेना देना? और एक के बाद दूसरी घटना पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विदेशी ताकतें लगातार लगी रहती हैं देश को तोड़ने के लिए। हमें डर उनका नहीं, लेकिन कुछ लोग जो देश में बैठकर उनके एजेंट बन जाते हैं, जो उनके हाथों में खेलते हैं, उनको क्या लाभ मिलता है, उनका चेहरा पर्दाफाश जरूर होना चाहिए, बेनकाब होना चाहिए। आखिर क्यों वो देश के लोग दुनिया के हाथों में खेलते हैं? चाहे मान लीजिए डोकलाम का इशू था या सर्जिकल स्ट्राइक का था, प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले कौन थे? बिल्कुल भारत के अंदर कुछ नेता थे, कुछ राजनीतिज्ञ थे। चाहे कोविड वैक्सीन बनाने की बात क्यों नहीं थी, गरीब आदमी को, आम जनता को वैक्सीन लगाने से रोकने के लिए भी कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए कहा वैक्सीन ठीक नहीं, हिंदुस्तान की बनी है। आज 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाने का काम किसी ने किया है और बिल्कुल मुफ्त में किया है, तो हिंदुस्तान ने किया। बिल्कुल। कहां गए वो नेता आज जो आत्मनिर्भर भारत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? वो 10 साल सत्ता में रहकर फौजियों को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए। मोदी सरकार ने 1,50,000 नहीं 2 लाख से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी। 308 से ज्यादा आइटम्स ऐसी हैं जिनको मेक इन इंडिया के रूप में शामिल किया। और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम ऐसे हैं कि अब हम आयात तो कम करेंगे, निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने पर भी बल दे रहे हैं। ये बदले हुए भारत की तस्वीर है, ये नए भारत का आगाज है जो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना रही है। और उन लोगों के लिए कड़ी चेतावनी है जो इस तरह के ओछे हथकंडे करते हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश को पीछे धकेलते हैं, अपने हित को आगे रखते हैं। ये देश ऐसे लोगों को ना कभी स्वीकार किया है ना आगे करने वाला है। मेरा सवाल कुछ और था, आप मेरे सवाल को समझ गए। आप बीसीसीआई से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, तो मैं सवाल को अलग तरीके से रखना चाहता हूं। मुझे लगता है अगर आप क्रिकेट में होते, आपकी स्टाइल सहवाग और श्रीकांत के तरह होती। गावस्कर और द्रविड़ की अप्रोच आपकी नहीं है, तो क्या आप कभी बैकफुट पे आ जाते हैं? मेरा सवाल यह है, आप माने कि मैं सरकार की बात कर रहा हूं, जब ये ग्लोबल हेडलाइंस बनते हैं ना, नैरेटिव बनती है कि नहीं? हमारे यहां इतने हमारे मित्र हैं, हमें गुस्सा आता है कि भारत को लेके इतनी एक नेगेटिव नैरेटिव बनाई जा रही है जो बिल्कुल विपरीत है सच्चाई के। आज मैं अगर हीथ्रो से मुंबई आऊं, मुझे तो लगता है कि मैं विकसित देश में पहुंच गया जब मैं भारत में वापस आता हूं। ये सच्चाई है, मगर जो नैरेटिव बनाई जाती है और उसके साथ साथ ग्लोबल मीडिया का एक अभिन्न अंग उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो एंटी इंडियन अप्रोच उनका है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये वॉशिंगटन पोस्ट कॉन्स्टेंटली नेगेटिव आर्टिकल्स करते हैं। आई एम आस्किंग यू एज द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, क्या आप कभी बैकफुट पे आते हैं कि इन ग्लोबल हेडलाइंस, ये नैरेटिव बिल्डिंग के कारण क्या आपको कभी बैकफुट पे होना होता है? आपका रिस्पॉन्स क्या होता है इस सिचुएशंस में? दुनिया भर की अखबारें क्या छाप रही हैं, उस पर भारत का कानून तो काम नहीं करेगा जी, लेकिन क्रेडिबिलिटी उनकी भी लगातार गिरती है। बिल्कुल। जो लोग उनको पढ़ते थे और जो यहां पर काम किया हुआ देखते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। भारत के लोकतंत्र का मुकाबला दुनिया के बाकी लोकतंत्र क्या करेंगे?
जहां वो छपती है उससे बेहतर लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र भारत का है जी। हमारा सिस्टम वहां का बेहतर है। और कम से कम मैं तो अपने मीडिया के बारे में यही कह सकता हूं, ग्लोबल मीडिया के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को केवल अनाप शनाप बायस्ड अगर रिपोर्टिंग करनी है और कुछ लोगों को वही अखबार दिखाकर अपनी वाहवाह करवानी है, तो जो देश में लोग रहते हैं वो तो वास्तविकता को जानते हैं। आप सच्चाई को नकार नहीं सकते। और सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, कोविड प्रबंधन में भी आगे बढ़ा, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है। जीएसटी कलेक्शन को देखेंगे तब भी भारत आगे बढ़ रहा है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1,44,000 करोड़, 1,63,000 करोड़ की कलेक्शन पर मंथ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिन अंग्रेजों ने 200 साल भारत के ऊपर राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई है। तो हमारे काम, हमारी उपलब्धियां कहीं ना कहीं उस बायस्ड और नेगेटिव रिपोर्टिंग को नकारती है। हम अपने काम पर लगे हुए हैं, हमें देश को आगे लेकर जाना है। अगर मेरा आधा टाइम नेगेटिविटी में जाएगा, जो गलत कोई लिख रहा है और जिसमें सच्चाई से परे है, तो उसमें कहां टाइम बर्बाद करेंगे अर्नब जी? हमें तो काम करना है देश के लिए। तो अनुराग ठाकुर को गुस्सा नहीं आता है उस समय जब देखते हैं ऐसे? अनुराग ठाकुर को कभी गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा करने से नहीं, काम करने से काम चलता है। गुस्सा करने से क्या होगा? जो करना है, और जो ये जहां कार्रवाई करनी वहां करते भी हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कौन कह सकता? देखिए, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था 8 साल में पहुंच जाते हैं। 12 करोड़ शौचालय आप बनाकर दे देते हैं। 11 करोड़ से बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस का सिलेंडर देते हैं। 3 करोड़ गरीबों को पक्का मकान बनाकर देते हैं। आप 45 करोड़ बैंक खाते खोलकर देते हैं। 200 करोड़ वैक्सीन लगाते हैं। हर घर को नल से जल देने की काम करते हैं। बिजली हर गांव हर घर तक पहुंचाते हैं। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करते हैं। ये सब चीजों के चलते हम काम की ओर ध्यान देते हैं। जो कोई बोल रहा है बोलने दीजिए, जिससे कहां फर्क पड़ रहा है। ये बड़ी उपलब्धियां बहुत है। आपने कहा कि हमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो पूछता है भारत आपसे, नेशन वांट्स टू नो अनुराग जी, अरविंद केजरीवाल को जरूरत क्यों है? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे बारे में ये कहा, फलाना कहा, ये कहा। तो ये अप्रोच मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। वो इसलिए भी कि देश का मीडिया जो उनसे सवाल पूछ रहा है कि शराब घोटाला क्यों किया, और इन शराब घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने क्यों खाया। और मैं सीधा आरोप एक बार फिर लगा रहा हूं, शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं और मुख्य आरोपी यानी कि अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी हैं। और जो इनके कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज या अधिकारियों की जो कमेटी बनी थी, जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि शराब नीति क्या हो, उसके बिल्कुल ऑपोजिट शराब नीति इनके मंत्रीगण ने बनाकर दी है। इसका मतलब मंत्रियों के मन में, सरकार के मन में अरविंद केजरीवाल जी के पहले से ही था कि घोटाला करना कैसे है, गोवा और पंजाब के चुनाव से पहले पैसे कमाने कहां से है। और जिस व्यक्ति ने 30 करोड़ रुपया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दिया, वो कानूनन आप वापस नहीं कर सकते थे, आपने फिर भी किया। 144 करोड़ रुपया जो आपको वापस नहीं करना चाहिए था, वो वापस करके किनके खाते में गया, किस किस को दलाली गई, ये सवाल अरविंद केजरीवाल से तब भी था और आज 1 महीने के बाद भी है। इस 30 दिनों में 3 मिनट निकालकर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए शराब घोटाले पर। स्कूल की परिस्थिति उनकी क्या है? जब कोई टीवी चैनल वहां पर कैमरा लेकर जाता है तो उसके कैमरे तोड़ दिए जाते हैं। अगर इतने ही अच्छे स्कूल है तो कैमरे तोड़ने की नौबत क्यों आई? सच्चाई देश के सामने, एक भी नया स्कूल नहीं बना पाए। शिक्षा का स्तर ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है, आंकड़े कहते हैं। एक स्विमिंग पूल बना लिया 8 साल में, उसी पे गोते लगाते नजर आ रहे हैं। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात कभी
अन्ना हजारे जी के साथ अरविंद केजरीवाल करते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे नजर आते हैं तो अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं। वो तो कहते हैं ईडी सीबीआई मेरे खिलाफ, वैसे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए हम, मगर पिछले 3-4 हफ्तों से अनुराग जी आप एवरी डे आप अटैक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। वो ईडी और सीबीआई को जो करना है करने दीजिए ना, आप पॉलिटिकली क्यों अटैक कर रहे हैं? आपने तो मनीष सिसोदिया का नाम भी कुछ, उस पर भी कुछ आपने अपना रूपांतर दिखाया था, उसको चेंज किया था उनके नाम को, तो इतना क्यों कर रहे हैं? इतना इसलिए, मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जो भ्रष्टाचार का आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जो कसम खाते थे अपने बच्चों की हम राजनीति में नहीं आएंगे, वो राजनीति में आए। जो कहते थे हम सरकारी बंगला नहीं लेंगे, सरकारी बंगला लिया। जिन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, आज अरविंद केजरीवाल ने एक जगह नहीं, दिल्ली के साथ साथ पंजाब की सिक्योरिटी भी ली। लेकिन गुजरात जाते हैं तो ड्रामा करके कहते हैं सिक्योरिटी हटा लो। ये असली चेहरा है जी। ये सत्ता में आकर मेवा खाने वाले हैं, दिखावा करते हैं, और जो कल तक सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, वो सत्येंद्र जैन पिछले 4 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली है। क्या अरविंद केजरीवाल इस देश में सर्टिफिकेट देंगे कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है? ये जो मनीष की जो मैं बात कर रहा था, ये मनीष, ये वहीं तक सीमित हो गए। इनको बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को रोज बयान क्यों देना पड़ता है? मेरा केजरीवाल जी से सवाल ये है कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। शिक्षा पर तो ध्यान नहीं दिया, शराब में लूटने का सारा काम किया है। और ये देश के सामने आज सच्चाई आ गई है। और ये जो उतावले हो रहे हैं ना कि जाके जेल में सत्येंद्र जैन जी से मिलना है, वो मौका भी कभी ना कभी आ ही जाएगा। अनुराग जी, मैं आपको फिर से राष्ट्र सर्वोपरि के दिशा में ले जाना चाहता हूं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल इश्यूज के लिए एकजुट क्यों नहीं हो सकते? एक नेशनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हो। हमारा देश बेनिफिट करेगा ना अगर सारे 10-15 बड़े पार्टीज, रीजनल पार्टीज एक लाइन ले। मुझे ये बहुत डेंजरस ट्रेंड दिख रहा है। आज सुबह मैं किसी से कह रहा था कि ये ओवर फेडरलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में, जहां पे लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि शुड वी बी पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे भी हमने देखा कई दक्षिण भारत के राज्यों में ये डिबेट शुरू हो गई है। Why can't political parties come together for the nation, at least on major issues? देखिए, इतनी मुश्किल क्या है इसमें? नहीं, मुश्किल यह है कि सबसे बड़ा अवसर था जब देश और दुनिया के सामने चुनौती आई कोविड-19 पैंडेमिक की। सबको इकट्ठे मिलकर लड़ना था, एक अवसर था। लेकिन उस समय भी राजनीति करने से कुछ लोग बाज नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा फ्रंट लाइन वर्कर्स का, कोविड वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए देश ताली बजाए, थाली बजाए, दिया जलाए। तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मनोबल बढ़ाने के लिए था, लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक की, बदला लिया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ सत्ताधारी लोगों ने प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। कोविड वैक्सीन बनाई देश के हमारे वैज्ञानिकों ने, देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बनी, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। डोकलाम में हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब अतिक्रमण करने वाली सेना को, चीन की सेना को दिया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया। उस समय भी कुछ लोग चाइनीज एम्बेसडर के साथ चाइनीज सूप पी रहे थे, चीन की सेना के पक्ष में बोल रहे थे, लेकिन भारतीय सेना के साथ नहीं खड़े थे। आप उनसे उम्मीद करते हो कि एकजुट होकर काम करेंगे? हम तो चाहते हैं कि सब लोग साथ आए। वो कहते हैं आप रीच आउट नहीं करते। वो कहते हैं आप अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल, इतना इंपैक्टफुल, इतनी बड़ी पार्टी समझते हैं कि आप उनके विचारों के लिए केयर नहीं करते। जिस पार्टी का और उनका सरकार, कहना है कि संसद में भी हमें कोई भी नहीं पूछता। जिस पार्टी और सरकार का मूल मंत्र ही हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके मूल में ही छिपा है कि सबको साथ में लेकर चलना है। आज मैं रिपब्लिक भारत के मन से भी कहता हूं, आइए सब इकट्ठे मिलकर नए भारत का निर्माण करें, अमृतकाल में भारत को उस नई ऊंचाइयों पर ले जाएं
कि जब 100 वर्ष भारत मनाए तो दुनिया में इतिहास रचने वाला देश हमारा भारत हो, फिर एक बार देश को महान बनाएं, फिर भारत को महान बनाएं। फैंटास्टिक। एक आखिरी सवाल, मीडिया के माध्यम से क्या किया जा सकता है भारत को एक सुपर पावर की दिशा में ले जाने के लिए? मुझे लगता है कि आज से 10 साल बाद अगर हम दोनों अगर बात करें तो आई एम क्वाइट श्योर, आप श्योर हैं 2032 में वी विल बी ए सुपर पावर। आपने देखा होगा जो एक अखबार थी यूके की, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो हर दिन एंटी इंडिया हेडलाइन लगाती है, उसने परसों लिखा है कि भारत इज डेस्टिन्ड टू बी ए सुपर पावर। आपने देखा होगा 2 दिन पहले। तो ये एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है 2032 में अगर ये सम्मेलन हो, वी विल बी सिटीजन्स ऑफ अ सुपर पावर। व्हाट कैन द मीडिया डू in that direction? What is your view? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई जहां पे बलात्कार हुआ, हत्या हुई। कुछ राजनीतिक दलों ने हाथरस में जाकर डेरा जमा लिया, तब वो जाति पर चले गए। अब एक रीसेंट घटना हुई, वहां वो धर्म पे चले गए। तो जब देश के अंदर ये खेल बंद नहीं होगा, किसी की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको एक बेटी के रूप में देखना चाहिए जिसके साथ अन्याय हुआ। उसके न्याय के लिए खड़े होंगे। जब जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचेंगे तो सशक्त भारत का निर्माण भी करेंगे, बेटियों को न्याय दिलाने का काम भी करेंगे। लेकिन आपके अपने शासित राज्य में जब वो अपराध होता है तो आप आंखें बंद कर लेते हो और दूसरी जाकर हल्ला बोल करते हो। तो क्या एक बेटी जो एक राज्य में है उसका अधिकार दूसरी बेटी से अलग है? इन बातों से जब हम बाहर नहीं आएंगे तब कैसे नए भारत का निर्माण कर पाएंगे? और जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं, जजमेंट आने से पहले मीडिया ही अपनी जजमेंट ना दे दे तो वो भी बड़ा संकट होता है। दूसरा यह है कि जो अच्छे काम हुए हैं उसको बताना बहुत आवश्यक है। अर्नब जी, भारत की इतनी उपलब्धियां हैं, लेकिन वो जो गुड न्यूज वाला फैक्टर है वो शायद कहीं ना कहीं कम है। ब्रेकिंग न्यूज पे ज्यादा बल दिया जाता है जहां पर रेटिंग्स और आए, जबकि सही बात यह है कि देश के बहुत सारे लोग अच्छी खबर भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस योजना का क्या लाभ मिलेगा। मुझे लगता है भारत की उपलब्धियां बहुत हैं। COP21 से लेकर COP26 तक देखें, भारत ने नेतृत्व दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखें तो भारत ने नेतृत्व दिया है। बहुत बड़े बड़े देश क्योटो प्रोटोकॉल को तो पूरा नहीं कर पाए, भारत ने COP21 से 26 तक एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दिया। पीएम मोदी ने जब लाइफ पर बात कही तो भविष्य का भारत कैसा हो, 2070 में कार्बन न्यूट्रल कैसे हम लोग हों, उस दिशा में भारत ने कदम उठाया है। हमने जो टारगेट रखे उसको समय से पहले पूरा करना शुरू किया है। ये आज के भारत के लिए और भविष्य के भारत के लिए किया है, और दुनिया में अपना योगदान भारत ने पहले से ज्यादा बढ़ाया है। और इसीलिए आज भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जाते हैं। एक बार नहीं, बार बार चुने जाते हैं। यह नए भारत की तस्वीर है। बहुत है। और एक आखिर में मैं कहना चाहूंगा आपको भी और जितने हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ अभी इस वक्त इस हॉल में हैं और जो देख रहे हैं, कि हमने भी अनुराग जी प्रण ली हुई है कि अगले 2 साल में हम हर भारतीय भाषा में रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भारत की हर भाषा में ब्रॉडकास्ट करेगा और पब्लिश करेगा। और दूसरी बात, हमारी जो सबसे बड़ी प्रण है, जो इट इज माई कॉज टू द नेशन, व्हाट वी वांट टू डू फॉर द वर्ल्ड, भारत की भूमि से 2024 तक कुछ भी हो, we will create a global news organization from the soil of India। भारत की भूमि से भारतीय टैलेंट, भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय सोच, भारतीय कल्चर को पूरे विश्व में ले जाने के लिए हम भी प्रण लेते हैं इस फोरम में कि रिपब्लिक विल बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट लार्ज ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बट विथ इट्स हार्ट एंड सेंटर इन इंडिया। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपका धन्यवाद दूंगा कि जो राष्ट्रीय चैनल वो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल दोनों दिशा में आगे बढ़ रहा है। दोनों दिशा। यू मे बी वन ऑफ द चैनल्स which is a national channel going regional and international both at the same time. My best wishes to you and your group. एक बार फिर आपने सम्मेलन किया,
और नेशन फर्स्ट इस थीम को रखकर किया है, इसके लिए आपको और आपके पूरे ग्रुप का बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच। Is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में।
आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university. Here are the stories that we're tracking at this hour. Prime Minister Narendra Modi, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and other leaders of the Shanghai Cooperation Organization deliberated on the regional security situation and ways to enhance trade and connectivity at the annual summit of the grouping. Prime Minister batted for a bigger role of SCO nations and stressed on bolstering global supply chains. महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। With the Chinese president in attendance, Prime Minister made a big statement on India's growth story, saying India has become a global manufacturing hub and is expecting an annual growth of 7.5%. This comes just days after India overtook the United Kingdom to become the 5th largest economy in the world. हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। The Prime Minister lauded India's technology sector and also put the focus on innovation in all sectors and technology. The Prime Minister also stressed on the success of India's startup ecosystem, saying India is now home to over 100 unicorns. टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। The Congress party politicized the SCO photo op, questioning the Prime Minister's position on the photo. Congress MP Gaurav Gogoi called it a poor show by the MEA and the Prime Minister at the SCO, and a strong nation like India was positioned at the end and was balanced by Pakistan on the other end. The BJP hit back at the Congress party's move to politicize the SCO photo op. BJP national spokesperson Gaurav Bhatia says the Congress party has a similar mindset to Pakistan and both are trying to create an artificial equivalence. The BJP leader also said India stands tall wherever it goes and the queue starts where India stands. The Enforcement Directorate questioned Delhi Minister Satyendra Jain in the Tihar jail, where he is currently lodged after obtaining permission from a local court to interrogate him in connection with the money laundering probe linked to the excise policy scam case. The Enforcement Directorate froze funds worth 46 crore rupees kept in payment gateways including Paytm and Razorpay as part of the probe against Chinese-controlled loan apps and investment tokens. The funds have been frozen under the anti-money laundering law. Remember, searches were launched by the agency on September 14th at multiple premises of the accused in Delhi, Mumbai and Ghaziabad.
टीकाकरण लगवाना, उनका बूस्टर डोज लगवाना, वहां पे उनकी सेवा करना इत्यादि का काम यह पार्टी के कार्यकर्ता काम। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers there staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers there staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers there staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने,
Workers have been suspended. This comes after a video which had surfaced which shows vegetable shop owner harassed and threatened by Congress workers for not contributing enough to fund collection for the Bharat Jodo Yatra in Kollam. They threw away the vegetables, intimidated the shopkeeper and created ruckus. They had allegedly demanded rupees 2,000, but the owner was able to give only 500. Now, Youth Congress State General Secretary H. Anish Khan is said to be involved in this video as well. The shop owner, S. Fawad, had filed a complaint with the Kunikudi police as well. Let's cut across to a report filed by my colleague Ashwin from the stall that was attacked. Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra has come again with yet another controversy as reports of Congress workers harassing and intimidating locals for raising funds for the Bharat Jodo Yatra has come forward. I am here at a place called Kunnikode, which is 60 kilometers away from the capital city of Thiruvananthapuram, and the shopkeepers here have reported that the Congress workers from the area has come here, intimidated and even destroyed the property, stating that they must be given 2,000 rupees. Now the shopkeepers had only given them 500 rupees, to which they had protested. Now, as you can see, these are the visuals where the Congress workers from the area has destroyed the weigh balance, has destroyed the chairs over there, and also some of the other property of the shop over here, clearly intimidating. The locals are saying that they have been forced to pay money for the same, and they are trying to raise funds by intimidating people in a very criminal way. Now, a case has already been filed, and the 3 Congress workers who have been involved in this ruckus have also been suspended temporarily from the party. Let's hear from the shopkeeper what he has to say about the entire incident. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇവർ വന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു. പൈസ 2000 രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇല്ല 500 രൂപ ഉള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ എടുത്ത വായിൽ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും വിളിക്കുകയും ത്രാസ് തട്ടിപ്പൊട്ടിക്കുകയും അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സലീമ. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ത്രാസ് ചവിട്ടാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കയറി പിടിച്ചപ്പോൾ എന്നെ കുത്തിനെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് തെള്ളിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന മാനിയരെ കസേര വെച്ച് അടിക്കാനും തള്ളയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നീ ഒരു കച്ചവടം ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട, നിൻ്റെ കട മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് കത്തിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പോയതവന്മാർ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചപ്പം പറയാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിരിവാന്നും വേണ്ട, രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതിന് പോകുന്നതിന് ഇവിടുന്ന് 2000 രൂപ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നോ. ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടുന്ന് പെടുന്ന പാട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. അതിന് ഞങ്ങൾ എന്തിനാ അവർക്ക് കപ്പം തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഇത് കള്ള രസീതും മേടിച്ചാണ് അവന്മാർ വന്നത് ഇവിടെ. So what he is essentially saying is that there has been an act of violence over here. They even the workers held on to his collar and clearly threatened him, and they also threatened that they will burn down the shop if this is not done. Republic has been speaking to some of the people around this vicinity, and many of the shopkeepers have said many of them have been forced to pay the amount for raising funds for Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra. So clearly they are saying that this has been an intimidation. A FIR has been filed. Republic has accessed the FIR. So under section 426 and 447 and 506, a case has already been filed in this regard. But however, what is important is the fact that there has been clear intimidation. People have been forced to pay money. The shopkeepers have been forced to pay money. At the time, remember at the time when Kerala is reeling under extreme financial loss, there has been revenue deficit, there has been issues which have been plaguing the common man and shopkeepers like these. So at the time of this Bharat Jodo Yatra, which has been conducted by Rahul Gandhi, it's now seen Congress workers intimidating, using that as a reason to intimidate and forcefully raise money from public. With video journalist Mani S from Kunnikode, Ashwin Nandakumar, Republic TV. Well, that was Ashwin getting us all those details from the particular stall where this attack took place in terms of the extortion as well. But we'll cut across to Ashwin joining us live to give us more details about this. Of course, the latest update being that 3 of them have been suspended, Ashwin. But what really transpired there in terms of course, this is in tandem with the campaign of the Bharat Jodo Yatra. But of course, the campaign looks to have taken a different direction where these workers, of course, were seen extorting money for the campaign.
Absolutely. There are several reports that we have got right now. Many locals over here saying money is being extorted for the campaign in an area where Rahul Gandhi is not even walking. Remember, this entire campaign is happening many kilometers away. The walk is happening, but here at local areas, this kind of threatening, intimidation and extortion is happening. We'll be giving you all the latest updates on this story. Stay tuned to Republic TV. We'll be back after a break. Bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar. Top headlines at 2:30. ED news tightens in Liquorgate from Hyderabad to national capital. ED searches underway across 40+ locations.
Liquor gate explodes in the dock for graft case. AAP Minister Satyendra Jain now grilled by the ED. SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। Prime Minister Modi in Uzbekistan, big bilaterals lined up, all eyes on Modi-Putin meet. A proud moment for India, but Vadra Congress politics continues, questions Prime Minister's photo op. Big lead in Sonali Foghat's death case, CBI team in Goa to recreate crime scene. And from Agnipath to cinema, India's biggest voices live on India's biggest summit, only on Republic. Thanks for tuning in this Friday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Straight up, starting with our top focus. In an exclusive conversation with Republic, Prashant Kishore exclusively told Republic that he has rejected Nitish's offer to join the JDU. In an open attack, Kishore claimed that it was a bad experience working with Nitish Kumar. So that's an all-out attack of Prashant Kishore on Nitish Kumar, saying that he has outrightly rejected the offer of the Bihar Chief Minister to join the JDU. Let's listen into that exclusive conversation with Prashant Kishore. नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच तल्खी के बाद आखिरकार दोनों की मुलाकात हो गई। क्या बात हुई? हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी। प्रशांत जी, आप लोगों में काफ़ी वाद विवाद चला, आप में और नीतीश कुमार जी के बीच में। आपने कहा कि 360 डिग्री टर्न लेगा बिहार का पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा उसको एबीसी आता है अंडबंड। अब फिर आप मिल भी लिए, पवन वर्मा दूत बन कर आए। नहीं, पहली बात तो जो आप जिस तल्खी की बात कर रहे हैं वो तो सार्वजनिक है। जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरी सोच है बिहार को लेकर या बिहार के विकास को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और जो हम लोग ज़मीन पर सुन रहे हैं, उसमें जो विरोधाभास है उस पर मैंने टिप्पणी करी है। जो यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है पिछले कुछ सालों में, उस पर मैंने टिप्पणी करी है। व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कभी किसी पे करता ही नहीं हूँ। नीतीश जी ने ये जरूर कहा कि भाई मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं है या मुझे जानकारी यहाँ की चीज़ों की नहीं है। उसका जवाब भी मैंने क्या दिया है कि भाई ठीक है, मुझे एबीसी का ज्ञान नहीं, आपको ज्ञान है तो चला तो आप ही रहे, तो इसको अच्छे से चलाइए। जहाँ तक आपने कहा मिलने की बात, बिल्कुल ठीक बात है, आपके जानकारी में है। नीतीश जी से मेरी पिछली मुलाकात मार्च में दिल्ली में हुई थी। उस समय जो उन्होंने कहा था, मैंने आपकी जानकारी में वो बात भी है। मई में जब यहाँ लौट के मैं आया हूँ, तब से मेरी और नीतीश जी की मुलाकात कई दिनों से कई बार तय की गई और फिर वो हो नहीं पाई। इस बार पवन वर्मा जी, जो हम लोग के मित्र भी हैं, आप लोगों ने उनका इंटरव्यू भी किया है, वो आए थे। वो नीतीश जी से मिलकर मेरे पास आए। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हो मुझे ज़रूर एक बार उनसे मिल लेना चाहिए, जो बात भी मुझे कहनी है उसको मुझे मिलकर कह देना चाहिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलिए मिलकर कह देते हैं। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे 4:30 बजे दिन में मुलाकात हुई, सबके सामने मुलाकात हुई, 1-1.5 घंटे बैठे। उन्होंने जो अपनी बात कहनी थी वो कही, मैंने अपनी बात जो बतानी है, जो मैं कैमरे पे बता रहा हूँ, वही बात मैंने उनको शायद इससे ज़्यादा तल्खी से उनको सामने बताया कि साहब जो बिहार में स्थिति है उसको लेकर जनता में कोई काम, सरकार के कामकाज को लेकर जनता में कोई उत्साह नहीं है। कई मामलों में, शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में समाज के ज़्यादातर वर्गों में सरकार को लेकर उदासीनता है या गुस्सा है। इन चीज़ों को सुधारे बगैर जो महागठबंधन का प्रयोग आप अभी कर रहे हैं या कोई भी प्रयोग अगर आप करें तो उसको सफलता मिलनी मुश्किल है। नहीं तो ये बताइए कि फोन जो है मिलने के लिए उधर से आया कि आपने कहा? किसी ने किसी को फोन नहीं किया। पवन वर्मा यहाँ आए थे, वो नीतीश जी से मिले। नीतीश जी से मिलने के बाद आपको जानकारी है, वो मेरे पास आए। उन्होंने बात करी कि भाई आप मेरे साथ चल के एक बार उनसे मिल लीजिए। तय समय डेट पवन वर्मा जी ने अपने साथ नीतीश जी की मीटिंग में तय किया।
उन्होंने मुझे बताया, और पवन वर्मा जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मित्र हैं, उन्होंने आकर कहा कि आप चल के एक बार मिल लीजिए मेरे साथ। उनके साथ जाकर मिल लिया। पवन वर्मा जी की क्या दिलचस्पी थी आपको मिलाने में? आप लोग दोनों को तो निकाल फेंक दिया था नीतीश कुमार ने, और उनको पवन वर्मा जी को राजकीय अतिथि बना दिया नीतीश जी ने। आपने पूछा भी उनसे? तो ये बात आप ठीक कर रहे हैं। ये बात तो पवन वर्मा जी और नीतीश जी के बीच का है कि क्यों उनको हटाया था और क्यों उनको राजकीय अतिथि बना दिया। मैं आपको जो घटनाक्रम है वो बता रहा हूँ। मैं चंपारण में था, पवन वर्मा जी यहाँ आए, जैसा नीतीश जी ने खुद पब्लिकली भी कहा है कि पवन वर्मा जी ने टाइम मांगा था नीतीश कुमार जी से। So, Prashant Kishore there speaking exclusively to the public, saying that he has rejected the offer of Nitish Kumar to join the JDU, and also going on to add that he had met Nitish Kumar only upon the insistence of Pawan Verma. That's the first response coming in from Prashant Kishore, officially shutting doors on Nitish Kumar's JDU. And more breaking news coming in, this one in relation to the ongoing raids by the Enforcement Directorate that are linked to now rollback liquor policy of the Delhi government. What we are getting to know right now is that ED is also searching an official residence of YSRCP MP Magunda Srinivasalu Reddy in the national capital. So the YSRCP MP, who is now under the lens of the Enforcement Directorate for money laundering charges that are related to the now rollback liquor policy of the Delhi government. In fact, the searches that are being conducted at the official residence of the YSRCP MP at Lodha Estate in the national capital. We'll go across to Shavan as well to get us more details. But YSRCP MP, who's now under the lens of the Enforcement Directorate. We have Shavan breaking that update for us. Shavan, if you could give us more details on the YSRCP MP, who's now under the ED lens. Well, in fact, what we can confirm for our viewers right now is that among the 40 places where the searches are being carried out by the Enforcement Directorate, one happens to be at the official residence of ISR Congress parliamentarian, is what we have been told, where the searches are basically underway. Important to point out here is the fact that the parliamentarian happens to be under the scanner of the Enforcement Directorate. In fact, what is also important to point out here is that there are links that are basically emerging with the fact that there are liquor companies that have been directly or indirectly linked to the parliamentarian. So all that put together, this has certainly taken a political twist. So not just the Aam Aadmi Party, what you're looking at right now is also the presence of other political parties in the excise policy. Yes. Well, all right, Shavan, thank you for getting us all those details. We'll keep coming back to you, and those are the first visuals also on your screens of the ED raids, which are currently underway at several locations, over 40 locations across the country, and the first visuals on your screens of the YSRCP MP, who's under the lens of the Enforcement Directorate. We have Anuj also reporting live from the national capital. Anuj, if you could give us more details on the ED raids, which are currently underway in at least 40 locations across the country. Well, this is since from the morning today when the Enforcement Directorate is in action, and this is regarding the liquor policy, the liquor scam. We have seen it earlier how the CBI has registered the case, and the main accused in that very FIR which has been registered by CBI is none other but the Deputy Chief Minister of Delhi, that's Manish Sisodia. So there are people who are under the radar of Enforcement Directorate now going in deep into the money laundering things, the irregularities about the fund. The Enforcement Directorate is conducting this multiple search which is underway at around 40 places. We are reporting live on the story. It's time for a short break. We'll be right back. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad.
as a part of this Hyderabad Liberation Day. Now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. And on to news coming in from Bengal, where the BJP currently is staging a protest against the TMC government. As you can see, the showdown in Kolkata as the BJP continues to remain up in arms against the ruling party in the state of West Bengal. So dramatic visuals coming in there. We'll go across to Kishle as well. Kishle is joining us live. Kishle, if you could get us more updates, the live visuals that we are getting right now of the showdown in Kolkata when we talk about the BJP protest against the TMC government. Well, dramatic visuals from BJP headquarters here in Kolkata, Murlidhar Sen Lane in central Kolkata. The BJP planned, especially the BJP youth wing, Yuva Morcha planned a march against the Lal Bazaar. They wanted to march towards Lal Bazaar in a protest against the atrocities, according to them, that the police had done to them during the Nabanno Chalo Abhijan. So this is a protest against everything that we saw, everything that unfolded that day during the BJP Nabanno Chalo Abhijan, where the police allegedly lathi charged, and we saw that lathi charged on BJP workers and also
used water cannons and tear gas. So the BJP Yuva Morcha members and workers, they are trying to march towards Lal Bazar, which is the police headquarters in Kolkata. It is the headquarters of Kolkata Police. We will be coming back with more visuals, more news about the BJP protest march against Lal Bazar after a short break only on Republic TV. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ And on to more breaking news coming in. Fresh setback there for Uddhav Thackeray, as what we are given to understand is that a big jolt coming in for Uddhav Thackeray, the former Chief Minister of Maharashtra, where we are giving to understand that Shiv Sena chiefs from 12 states have extended their support to Chief Minister Eknath Shinde late last night. So it is a late last night development wherein 12 state chiefs of the Shiv Sena have extended support to the Shinde faction. Well, we'll go across to Alisha as well to get us more details, but a big setback there coming in for Uddhav Thackeray as 12 Shiv Sena chiefs
from the national capital, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa and Gujarat, among others, have extended their support to Eknath Shinde. So a fresh setback there for Uddhav camp there, and this one on a national level, where 12 Shiv Sena chiefs from states including MP Gujarat, the national capital Madhya Pradesh, Karnataka, Odisha have extended their support to Chief Minister Eknath Shinde. It remains to be seen the response that comes in from the Uddhav faction, but that's fresh trouble and new setback there for kicking in for Uddhav Thackeray. And those are the first visuals also that we are putting on our screens of the 12 Shiv Sena chiefs from different states who have extended their support to Chief Minister of Maharashtra, Eknath Shinde. Alisha breaking that story for us. Alisha will be joining us as well. But slipping into a very short break for now, more news breaks and updates to continue on the other side as well. A very short break, but on the other side, we'll get you live visuals from UK as mourners continue to pay tribute to Queen Elizabeth II. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया. यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया. A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में.
आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Now, ahead of Hyderabad Liberation Day, the AIMIM is organizing a motorcycle Tiranga rally that would be followed by public meet and flag hoisting programs as well. In fact, AIMIM Chief Owaisi will be leading this rally. These are the visuals that we are getting from that rally side. Let's cut across to Aneri for more on that, who's reporting live from the AIMIM rally in Hyderabad. Aneri, over to you. Now we see that the AIMIM Chief Owaisi is leading this bike rally, a mega bike rally. This bike rally, a mega bike rally, as you can see, thousands of people have come together for this bike rally, and also instead of Liberation Day, they have given a name of Telangana Integration Day. So now there is a road between Liberation Day. The day will celebrate it as Integration Day, whereas the Bharatiya Janata Party and the government of India has, under the Azadi Congress Morscha, has decided that they will celebrate this as the Liberation Day. So all eyes on that, and also to be right back after this short break on news and updates, as Hyderabad Liberation Day is all set to be celebrated on the 17th of September, where Union Home Minister Amit Shah will also be attending and addressing a mega public meeting on the eve of Hyderabad Liberation Day. We'll be right back after this short break. Fulfill your dream of studying at the world's leading universities, and that too at a reduced cost with Amity's Global Study Program. Study in India with Amity for some years. Then take a transfer to leading universities in the USA, UK, Canada or Australia and earn a foreign university degree. Apply at amity.edu/global study. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। ED news tightens in liquor gate from Hyderabad to national capital. ED searches underway across 40 plus locations. Liquor gate explodes in the dock for graft case. AAP Minister Satyendra Jain now grilled by the ED. SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। Prime Minister Modi in Samarkand, big bilaterals lined up, all eyes on Modi-Putin meet. A proud moment for India, but Vadra Congress politics continues, questions Prime Minister's photo op. Big lead in Sonali Fogart's death case, CBI team in Goa to recreate the crime scene. And from Agnipath to cinema, India's biggest voices live on India's biggest summit, only on Republic. Thanks for tuning in this Friday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Let's get started with breaking news coming in from Hyderabad. And ahead of the Hyderabad Liberation Day, politics that has also erupted. It's the Integration Day versus the Liberation Day. Aneri reporting live from the AIMIM rally location. Aneri, over to you. Take us through the scenes you're seeing right now and also the face-off that has erupted over the Integration Day versus the Liberation Day. Alright, we'll try and go across to Aneri again, but those are the visuals coming in where, as you can see, hundreds of workers who have gathered to take part at this mega AIMIM rally, which is being held in Hyderabad. We understand that after the Tiranga, the bike rally, it will be followed by meetings and flag hoisting programs as well. Aneri is back with us. Aneri, over to you. Talk to us about this face-off that has erupted over the Integration Day versus the Liberation Day. Well, Samiksha, as we have seen how this public meeting is being organized. Public meeting has also been organized after the bike rally, which is being led by the AIMIM chief and also at the same time, not to forget there are massive celebrations which have been taken up by the BJP also in this regard, and also we see that the Union Home Minister Amit Shah will be attending a public meeting on the 17th of September. There is a massive row which has been erupted between the central government, that the BJP at the center, the central government has decided to as we have been seeing, that the central government has decided to celebrate it as the Hyderabad Liberation Day. But AIMIM chief Asaduddin Owaisi had requested and wrote a letter to the Telangana Chief Minister and Union Home Minister Amit Shah that it should be celebrated as the Telangana Integration Day. And so we have been seeing how the government
government of Telangana and also AIMIM is celebrating the Liberation Day as rather calling it as the Integration Day, but the BJP says that it's a big win for them, and as you can see right now, massive public rally which is organized, and this rally is being led by AIMIM chief, where you can see this is a 2-kilometer long rally, but thousands of people have come together holding Tiranga in their hands, and also at the same time we have been seeing that there is a massive roar which has erupted between the TRS and the BJP. Yes, also Aneri, any responses coming in as of now from the BJP when we talk about this particular rally that is being held with regard to the Liberation Day versus the Integration Day? Samiksha, yes, we have been seeing since the time the government of Telangana has decided to celebrate it as the Telangana Integration Day. We see that the Bharatiya Janata Party has been hitting out at the TRS, saying that this is definitely a big win for the BJP, because they have been saying this since a long time. Since last 8 years, the Bharatiya Janata Party has been saying that once they come to power, they will celebrate the Hyderabad Liberation Day on the 17th of September, which was not being celebrated in the last 8 years. But now, after there was a request which was being put in by the AIMIM chief, and also he had mentioned that this should be celebrated as Integration Day and not as Liberation Day. So definitely there is a roar between both. Whether it is Integration Day or Liberation Day remains to be seen. But yes, a big win for the BJP, as they say that their request, their demand from all these years have finally come fulfilled. And also tomorrow we will be seeing the Union Home Minister Amit Shah, where he will be addressing a mega public meeting on the eve of the Liberation Day and Integration Day, which is being said by the TRS. Samiksha. Yes. Aneri, also if you could once again talk to us more about this rally and what will be followed with this. We understand that it will be followed with meetings as well as flag hoisting programs. Yes, Samiksha, this bike rally, the Tiranga bike rally, which you are seeing right now on our screens, where massive thousands of people have come together holding the Tiranga and doing a motorcycle bike rally, marking the Telangana Integration Day that is going to be held tomorrow on the 17th of September. The Telangana government has also decided that there will be 3 days long celebrations, but also at the same time, now if we talk about this particular event where we are seeing that AIMIM has organized this rally where people have gathered, and after this bike rally we will be seeing AIMIM chief Asaduddin Owaisi will also be addressing a public meeting, and also at the same time after the public meeting there will be a flag hoisting which will be done. So definitely we'll all have all eyes on that public meeting and also on the tomorrow's events, because tomorrow is one crucial day where we will be seeing various programs being organized by the TRS, MIM and also by the Bharatiya Janata Party, where Union Home Minister Amit Shah will be a part of it. Yes. Aneri, if you could talk to us more about tomorrow's events as well. Also any response coming in from the AIMIM chief himself when we talk about this face-off that has erupted? Samiksha, we have been seeing how a few days back AIMIM chief Asaduddin Owaisi had stated that this should be celebrated as Integration Day and not as Liberation Day, and also at the same time he had questioned the central government, the BJP government at the centre, that they are in the power since last 8 years at the centre, then why didn't they celebrate it since last 8 years, and now why do they want to celebrate it after 8 years of wait? But the government of India has announced that there will be 1 year-long celebration under the Azadi Ka Amrit Mahotsav to mark the Hyderabad Liberation Day on the 17th of September. Yesterday, we had seen that how there was a
mega bike rally by the BJP Mahila Morcha, which was being led by the Union Minister G. Kishan Reddy in Hyderabad. And today we are seeing AIMIM holding a motorcycle Tiranga rally. And tomorrow, also today, not to forget, the TRS also is holding various rallies across various districts of Telangana. And tomorrow was the main day where we will be seeing that BJP is celebrating it as the Hyderabad Liberation Day, whereas the TRS and MIM has decided that they will call it as the Telangana National Integration Day, where we will be seeing Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao also will be addressing a public meeting. He will be hosting the national flag. He will unfurl the national flag at the public gardens, and also at the same time the Union Home Minister Amit Shah will be holding a public meeting which is being organized by the Bharatiya Janata Party and the central government. So all eyes on that as well for tomorrow, a big day in Hyderabad, where we will be seeing a clash also, as we have been seeing. There's a roar over either it should be Liberation Day or Integration Day. That is still a question, but yes, we have been seeing how the pitches are high here at the bike rally, which is led by AIMIM Chief Asaduddin Owaisi. Samiksha, back to you. Yes, Aneri, also any response coming in from the Congress? What is Congress stand at this point when we talk about the Liberation or Integration Day for that matter? Well, Samiksha, we have been seeing Congress is trying to take the credit that they say that this liberation came in with the efforts of Congress party, but we also have been seeing how they also have decided that there will be various events organized in the next coming days to mark the Liberation Day, where we have been seeing that there were a series of meetings which was led by the Congress State President Rafael Nadal, and also now, as you can see on our screens, where we are seeing that people are also holding Tiranga in their hands. Thousands of people coming together taking part in this national, the MIM TRS, where they have decided to call it as a Tiranga rally, as to mark the Telangana Integration Day is what they have been saying, but BJP continues to say that it's Liberation Day. Yes, Aneri, stay with us. Also for our viewers who are just tuning in, if you could talk to us a little more on the Liberation Day or the Integration Day, which is being held in Hyderabad. Samiksha, we have been seeing that since last 8 years, we had also debated this last night, where we had seen how the TRS and MIM had been saying that it should be Integration Day and not Liberation Day, but since last 8 years, there has been this growing demand from the Bharatiya Janata Party that why isn't the TRS celebrating this Hyderabad Liberation Day on the 17th of September, but also not to forget, we see that AIMIM Chief Asaduddin Owaisi had questioned the central government that since last 8 years they have been in government, and why don't they celebrate it? But every year we see that the BJP continues to state that once they come to power in the state of Telangana, they will celebrate it as Hyderabad Liberation Day. And also yesterday, when the Union Minister G. Kishan Reddy exclusively spoke to Republic TV, he had also stated that it is a big win for the BJP, but also at the same time he had pointed out one important thing where if we can highlight that the TRS, when it was in opposition, they had also called it as the Liberation Day, but they, after coming to power, they were scared, they were afraid of the Majlis party, that is the MIM, and so they did not celebrate the Hyderabad Liberation Day. But now we see that after there was a request which was being put in by AIMIM Chief Asaduddin Owaisi, where he had written a letter to the Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao and also to the Union Home Minister Amit Shah, asking them to celebrate the Liberation Day instead of Liberation Day, they should celebrate it as the Integration Day. And so we have been seeing now a 3-day-long event which is being organized by the TRS. Today there are various rallies which are being organized, and also tomorrow is the main day where we will be seeing public meetings and also flag hoisting ceremonies being taking place at various locations, where Telangana Chief Minister will also be hoisting the national flag. Union Home Minister Amit Shah will be a part of this. So
all to have all eyes on that as a feature. Yes, Aneri, stay with us. If you could talk to us a little more about this important point that you had mentioned earlier about the TRS also calling it a liberation day before they came to power. That could be one of the big flashpoints that could emerge between the TRS and the BJP. Samiksha, if you could repeat your question because there's a lot of sound here. I couldn't. Can you repeat your question? Yes. Aneri, you were talking to us about TRS position on Liberation Day because, like you were telling earlier, that TRS earlier did call this a Liberation Day before they came to power in the state of Telangana. Krishna Sagar Rao of the BJP also joining us. Aneri, stay with us. Sir, thank you for speaking to us. If you could talk to us more about this face-off that seems to have erupted over Liberation Day versus Integration Day in the state of Hyderabad. See, BJP first of all wishes to welcome MIM's rally because it is better late than never. Because for the last 73 years they have opposed and they have tried to manipulate this day as a no day, and today they have accepted in a different form called an integration day. While factually and historically, this day is when Sardar Vallabhbhai Patel with his military force landing in Hyderabad has liberated the state of Hyderabad from the oppressive foreign ruler Nizam. So Bharatiya Janata Party stands victorious in ensuring that all parties today come down leaving their appeasement to accept this particular day as historical celebrated. Also, sir, just to continue on that point, if you could throw a little more light as to what really exactly is the difference between Liberation and Integration Day, as to what specific significance it holds when we call it a Liberation Day or Integration Day in Hyderabad. You see, I think the entire India should know that when 532 provinces called Astanas, which joined Indian Union as by default and naturally, that was integration. The rest of India celebrated freedom when we still remained in the clutches of a foreign occupier since another year. Till 1948, this region did not get freedom. So that is why it is not called an integration. We got freedom 1 year after the rest of India, when the military of India, under the leadership of Sardar Vallabhbhai Patel, landed in Hyderabad and forcefully taken over this land. So how can you consider a forceful accession of a state as integration? It is certainly liberation. And you also have to understand, when we call Independence Day, August 15, 1947, we don't call it Integration Day. We call it independence because we got independence from a foreign ruler. And just like that, Telangana got independence from a foreign ruler on September 17, 1948. Yes. Well, thank you so much for speaking to us. We'll leave it at that. So, Krishna Sagar Rao of the BJP speaking on this face-off that seems to have erupted over Integration Day versus the Liberation Day in Hyderabad. Quick roundup of news in brief. Prime Minister Modi, Russian President, as well as the Chinese President and other leaders of the Shanghai Cooperation Organization deliberated on the regional security situation and ways to enhance trade and connectivity at the annual summit of the grouping. Prime Minister also batted for a bigger role of SCO nations and stressed on bolstering global supply chains as well. महामारी और यूक्रेन के संकट से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कई बाधाएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण पूरा विश्व अभूतपूर्व ऊर्जा एवं खाद्य संकट का सामना कर रहा है। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। With Chinese President Xi Jinping in attendance, Prime Minister Modi made a big statement on India's growth story, saying that India has become a global manufacturing hub and is expected an annual growth of 7.5%.
This comes just days after India overtook the UK to become the 5th largest economy in the world. हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। Mr. Modi lauded India's technology sector and also put the focus on innovation in all sectors and technology. The Prime Minister also stressed on the success of India's startup ecosystem, saying that India is now home to over 100 unicorns. हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। Congress politicized the SCO photo op, questioning the Prime Minister's position in the photo. Congress MP Gaurav Gogoi called it a poor show by the MEA and the Prime Minister at the SCO, and a strong nation like India was positioned at the end and was balanced by Pakistan on the other end. That's the word coming in from the Congress MP. BJP meanwhile hit back at the Congress party's move to politicize the SCO photo op. BJP national spokesperson Gaurav Bhatia said that the Congress party has a similar mindset towards Pakistan and that both are trying to create an artificial equivalence. The BJP leader also said that India stands tall wherever it goes and the queue starts where India stands. The Enforcement Directorate meanwhile questioned Delhi Minister Satyendra Jain in the Tihar jail, where he is currently lodged after obtaining permission from a local court to interrogate him in connection with the money laundering probe linked to excise policy scam case. Enforcement Directorate froze funds worth 46 crore rupees kept in Paytm gateways, including Paytm and Razorpay, as part of probe against Chinese controlled loan apps and investment tokens. The funds have been frozen under the anti-money laundering law. Remember, searches were launched by the agency on 14th of September at multiple premises of the accused in Delhi, Mumbai and Ghaziabad. A forensic team of the CBI is set to inspect the suspected crime scene in the Sonali Fogad's death case. Teams of the CBI along with the CFSL experts will collect documents and interact with the local police officials as well, and doctors who had examined the former BJP leader when she was declared dead. Congress Kerala State President K. Sudhakaran suspended 3 party presidents, party workers involved in allegedly threatening a vegetable shop owner for not paying 2,000 rupees in a fund collection for Bharat Jodo Yatra. The Congress party says that these workers do not represent the party's ideology and that such behavior is inexcusable. In a big political scoop from Bihar, Republic has learned that Chief Minister Nitish Kumar has asked Prashant Kishore to join the JDU. This after he was suspended from the party in 2020 following his comments against the CAA and the NRC. However, Prashant Kishore has rejected the offer and said that he has a bad experience working with Nitish Kumar. A very short break. On the other side, as Liquorgate explodes in the dock for graft case, AAP Minister Satyendra Jain now grilled by the ED. And Prime Minister Modi in Samarkand, big bilaterals lined up, all eyes on Modi-Putin meet. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside
Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया। And dramatic visuals coming in of a massive fire that broke out in the central city of Changsha in China, and it's a China state-affiliated media that has reported the news that a big fire that engulfed a high-rise building in Changsha in central China's Hunan province. Videos that have also went viral on social media. As you can see, the fire that has in fact erupted at the 42nd floor of this particular building. We are told that the firefighters and emergency rescuers have arrived at the spot, whereas no casualties that have been reported so far. But dramatic visuals coming in from China's Changsha, where a high-rise telecom building that caught fire. It's this 42nd floor of the building that caught fire. The reason for the fire is not yet known, but what we are getting to know as of now is that fire tenders as well as the emergency rescuers that have been rushed to the spot. No casualties that have been reported so far, but that's a major fire that's been reported on the 42nd floor building of this particular high-rise telecom building. Slipping into a very short break, but on the other side, news breaks and updates to continue. And more on that news coming in from China, where the massive fire has broken out in the Hunan province in Changsha. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के हिमंतदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सम्मेलन में। धन्यवाद। और रिपब्लिक भारत के इस मंच पर और बहुत बहुत थैंक्स, आपने बुलाया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं दो बातें कहना चाहता हूं आज कि जब रिपब्लिक भारत हमने शुरू की थी, आज मैं अभी हिमंतदा से कह रहा था कि 1996 में मैं नौकरी ढूंढने आया था दिल्ली में। नौकरी मुझे मिली थी कलकत्ता कॉरेस्पॉन्डेंट की। उस समय के एक टीवी नेटवर्क ने मुझे नौकरी दी थी और कहा था कि आप इस जगह जाके फाइनल इंटरव्यू करिए। और जब मैं उस जगह गया फाइनल इंटरव्यू करने, नौकरी हाथ में थी, तो मुझे बोला गया आप किस चीज की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो आपके ही इधर कलकत्ता में हिंदी चैनल का कॉरेस्पॉन्डेंट बनूंगा। तो मुझे बोला गया भाई तुम आसाम के हो, तुम हिंदी नहीं बोल सकते। और आज आपके सामने दो आसाम के रहने वाले गुवाहाटी के लोग सामने पूरा प्रयास करेंगे हिंदी में बातचीत करने की। हिमंतदा, खुलकर बोलिए। नहीं, हिंदी जब टूटा फूटा होता है ना, हिंदी को स्वीट लगते हैं। हाँ, लोग समझ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ग्रामर भी भूल हो, जो भी हो, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बोल देना चाहिए हिंदी में, जो होगा हो। आप करिए, लोग आपके साथ है हिमंतदा, ठीक है ना? समझ पाएंगे ना इनकी बात को? मैं कहता था, जब मैंने हिंदी में पहले एंकरिंग की थी, मैंने कहा था हिमंतदा मेरी जबान साफ नहीं है, हिंदी साफ नहीं है, मगर नियत साफ है। यही अप्रोच के साथ आज बातचीत शुरू करें। नहीं, हिंदी बहुत स्वीट लैंग्वेज है और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का लोग हिंदी बोलता है तो हिंदी और स्वीट हो जाता है, बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इसी बात को मानता हूं। हिमंतदा,
पहला सवाल आपसे यह है, हर दिन आप सुर्खियों में रहते हैं या हर दूसरे दिन आप सुर्खियों में रहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई आपके खिलाफ बोलते हैं, और ये वाड्रा कांग्रेस के साथ तो आपका पुराना रिश्ता था और लग रहा है कि वो छोड़ना भी नहीं चाहते। हर दिन आप पर वो कमेंट करते हैं, आप पर ट्वीट करते हैं, या तो उनका दिन शुरू होता है खत्म होता है आपके नाम को लेकर। कभी आप ये जो अवैध मदरसे हैं उन पर आपने बुलडोजर चला ली तो उस पर बातचीत होती है। तो हमने नोटिस किया है कि लोग वैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद सुर्खियों से हटने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अभी हमको पीसफुल नॉन कंट्रोवर्शियल एग्जिस्टेंस चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा पर ये रूल अप्लाई क्यों नहीं होती? हेमंत दादा, आप हमेशा सुर्खियों में क्यों रहते हैं, ये कैसे हो रहा है? नहीं, पहला बात, मैं सुर्खियों को रहने में मैं प्रयास नहीं करता हूं, लेकिन जो मैं काम करता हूं आपको लगता है कि वो सुर्खियों में होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग मुझको सुर्खियों में लेके आते हैं। मैं सुर्खियों के लिए कुछ नहीं करता हूं, जो मन में आता है वो बोल देता हूं बस। तो आप सोचते नहीं है मन में आया तो मगर मैं कहूं तो इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, मैं खाली मैं इतना ही देखता हूं कि मैं कुछ बोलता हूं, जब कांग्रेस वाला लोग ट्रोल करता है तो मैं इतना ही देखता हूं कि आज ट्रोल उनका 500 हो गया कि 600 हो गया, कितना को कर पाया मोटिवेट, मैं वही कभी कभी देखता हूं, उसका आगे कुछ नहीं देखता हूं। आप नहीं देखते? तो मूल मुद्दे पे आ जाए, जो अभी का हॉट मुद्दा है। राष्ट्रीय सर्वोपरि के सम्मेलन में कंट्रोवर्शियल मुद्दे भी हैं। आप आजकल पिछले 3 हफ्तों से आप हेडलाइंस में हैं कि आपने अवैध मदरसों पे बुलडोजर चला दी, और वो जो विजुअल है कि अवैध मदरसों पे बुलडोजर हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों चलाई? कहा जाता है क्या हेमंत बिस्वा शर्मा न्यायपालिका को नहीं मानते? क्या न्यायिक व्यवस्था नहीं है? क्या ये योगी वाला अप्रोच है? मनमानी कर रहे हैं या फिर किसी लॉबी के लिए कर रहे हैं? तो इस पर आप जरा, आज पहली बार आप दिल्ली में आए हैं पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, तो जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये अप्रोच क्यों ली, इसकी जरूरत क्या थी? अर्नब जी, 2-3 बात आपको थोड़ा सा असम कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा जी। असम में हमने अल कायदा का मॉड्यूल हमारा हाथ में पकड़ा गया। जब हमने ये मॉड्यूल का पीछे पड़ा तब हमको ये भी खबर आया कि सेम मद्रासा में दे हैव एस्टैब्लिश देयर नेटवर्क, उनका कार्यालय बना, ऑफिस बना, तमाम सारे गड़बड़ी काम किसका हुआ। कार्यालय बना? ये हुआ जो हमारा एबीटी बोलता है, अंसारुल बांग्ला टीम है, जो बेसिकली आईएसआई का, ये जो बेसिकली अल कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक एलाइड ग्रुप है। उसका नाम है अंसारुल बांग्ला टीम जी। और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में एबीटी ही ऑपरेट करता है जी। जब उनका मॉड्यूल हमारा पास आया, पकड़ा गया, हमारा नजर में आया कि दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम मद्रासा। अभी मद्रासा किसके लिए होता है? कि आपको कुरान का शिक्षा देने के लिए मद्रासा होता है। जी जी। मद्रासा तो जिहाद करने के लिए नहीं होता है जी। द मोमेंट ए मद्रासा इज बीइंग यूज्ड फॉर एबीटी और फॉर जिहाद, दैट मीन्स इट्स लॉस्ट कैरेक्टर ऑफ द मद्रासा। उसका आगे और मद्रासा वो नहीं है। तो हमने उनका पब्लिक को जाके बात किया, देखिए ये तो अभी मद्रासा नहीं है, ये तो अल कायदा का कार्यालय बन चुका है, आप इसको रखना चाहते हैं? नहीं साहब, तोड़ देना चाहता हूं। तोड़िए। किसने कहा आपको तोड़ देना? पब्लिक ने तोड़ा है। नहीं, पब्लिक ने नहीं तोड़ा। पब्लिक ने तोड़ा। आपके सरकार ने तोड़ा। आप विजुअल देखिए। नहीं, आपके सरकार ने नहीं तोड़ा, हमने थोड़ा मोटिवेट किया। सरकार अब ये बात है, अब ये अप्रोच जो है, अभी अनुपम खेर जी आए हुए हैं इधर, वो भी बहुत मजा ले रहे हैं आपके बात की। ये अप्रोच तो आपकी यूनिक अप्रोच होगी। आप खुलकर मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अवैध मदरसे को तोड़िए, मगर आप इस बात से हिचक नहीं रहे। स्वामी जी, आप देख रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं। नहीं, इसको जरा आप समझाइए। आप अगर लोगों को देश प्रेमी होने में मदद मोटिवेट करता है, लोग देश प्रेमी बन जाता है, उसमें कहां कानून का प्रॉब्लम है? तो हमने लोगों को बोला भाई यहां मद्रासा तोड़ो, हम आपको एक स्कूल बना के दूंगा। आपने लोगों को कहा? लोगों को कहा।
तो लोगों ने पूछा सचमुच स्कूल बनेगा? हम बोला सचमुच स्कूल बनेगा, लेकिन आप लोग उसको व्यवस्था कीजिए। तो लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी? आपके कहने कौन सा कानून मेरा पास आएगा? बिकॉज इट इज अ वॉलेंटरी एक्ट, मैं तो नहीं किया। ये थोड़ी ऑफलाइन टाइप की अप्रोच हो गई, ये अलग टाइप का अप्रोच है। असम में हम लोग जो भी करता हूं, वी टेक मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी इन फुल कॉन्फिडेंस। आर यू एंटी मुस्लिम? आर यू? अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो एक धारणा बन रही है, लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा हैज एन एंटी मुस्लिम व्यू, जो एक सेक्युलर देश में ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, और इस पर बातचीत हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए, एंटी मुस्लिम कौन है और डेफिनेशन कौन करेगा? अगर ओवैसी साहब करेगा तो मैं एंटी मुस्लिम, ठीक है, लेकिन देश पे अगर आप केरला का गवर्नर साहब को बुला के बोलता है हिमंता वो किया है, वो बोलेगा प्रो मुस्लिम। अभी देखना पड़ेगा हु इज डिफाइनिंग यू। मैं बोल रहा हूं कि आप मदरसा जाने से आप जुनाब बनेगा, मेरा स्कूल में आओ आप डॉक्टर बनेगा, तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। आई एम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम। आप जुनाब बना रहा है, मैं डॉक्टर बना रहा हूं। आप मौलवी बना रहे हैं, हम बोला भाई मौलवी आपको अभी बनने का जरूरत नहीं, मौलवी है भारत में, कम होगा तो जरूर बनिए, बट फिलहाल आप इंजीनियर बनो। अभी असम में कोई सारे लोग मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम लोग डॉक्टर पढ़ते हैं। आप देखिए 5 साल में देयर एंट्री टू मेडिकल कॉलेज हैज गॉन अप रियली वेरी हाई। अभी 1000 सीट है असम में मेडिकल कॉलेज में, 160 एवरी ईयर मुस्लिम स्टूडेंट्स आर गेटिंग एडमिशन ऑन मेरिट। ऑन मेरिट, कोई एपीजमेंट वाला बात नहीं। उनको आप शिक्षा का व्यवस्था कीजिए, माहौल तैयार कीजिए कि यू हैव पोटेंशियल टू बिकम समबडी बियॉन्ड मौलवी एंड जुनाब। मैं कोई मौलवी जुनाब काम खराब है नहीं बोलता हूं, बट अगर आपका पोटेंशियल है डॉक्टर बनने का, आप डॉक्टर बनो। अगर आपका पोटेंशियल है मौलवी बनना है, मौलवी बनो। लेकिन मैंने मदरसा का स्टूडेंट का बीच में देखा, बहुत ही मेरिटोरियस बच्चा है, अच्छा बच्चा है, तो इसको आप आगे जाके डॉक्टर बनाइए। अगर मैं और एक मुस्लिम लड़की को जाके बोलता हूं कि 16 साल में आप शादी मत होइए, 5 साल का बाद बढ़िया से हैंडी कॉलेज, कॉटन कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, इसका बाद आप शादी कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? मैं अगर बोलता हूं भाई आप अच्छा खासा नौजवान है, आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? तो वो तो मैं तो उनका भलाई के लिए बोल रहा हूं। आई एम सीएम ऑफ असम। वो कहेंगे आप इंटरफियर क्यों कर रहे हैं, उनकी ये पर्सनल लॉज है, उनके अप्रोच है। आपको क्या आप इस पे माना कहां है? आप मुझको संविधान में बोलिए, कोई बाधा है क्या मुसलमान लोगों को ये बोलने का कि भाई आप एक है, 16 साल में शादी मत हुई है, 22 साल में है। मुस्लिम इज ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, आई एम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। मैं हिंदू का तो सीएम नहीं हूं, मैं हिंदू को भी सलाह दूंगा, मुसलमान को भी सलाह दूंगा जी। जब हिंदू को सलाह देता हूं वो आप हेडलाइन नहीं करता है, जब मुसलमान को सलाह देता हूं आप हेडलाइन करता है, एंड दियर बाय गिविंग ए इंप्रेशन दैट वी आर एंटी मुस्लिम। वो तो काम नहीं चलेगा ना। ये अनकन्वेंशनल अप्रोच है हिमंता। और मैं जितने लोग इधर हैं और जितने लोग देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, वो यही कहेंगे कि कई लोग करते हैं, कई लोगों के विचार होते हैं, मगर कई मुख्यमंत्री ऐसे भी हैं जो बिना बोले करते हैं, मगर हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसे हैं कि करते भी है, बोलते भी है और प्रोत्साहन भी देते हैं। नहीं अर्नब, देखिए कुछ बातें काफी पेनफुल होता है। जैसे हायर सेकेंडरी क्लास 2 पास करने के बाद हम बच्चा को स्कूटी देता हूं असम में, जो भी फर्स्ट डिवीजन गर्ल्स मिलता है, 20-22 हजार हम स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। लड़की लोग आके स्कूटी लेते हैं। उस समय मेरा दिमाग में आते हैं कि यही उम्र का लड़की हमारा वो फलाना सब डिवीजन में 4 बच्चा का भी मां बन चुका है। तो मैं भाषण में बोलता हूं कि माय हार्ट गोज टू दोज लेडीज, दोज गर्ल्स हु शुड हैव बीन इन कॉलेज बट बियरिंग 5-4 चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 19। तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से समाज कैसे सुधर होगा? कोई मुसलमान ओवैसी का प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमान भारतवासी है,
और भारतवासी को रास्ता दिखाना हर भारतवासी को दायित्व और कर्तव्य है। ये आप ओवैसी का मॉर्गेज मत कीजिए मुसलमान को, ये गलत अप्रोच है। आपको ओवैसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा जैसे आप ओवैसी कौन है, मैं एक ही दो बार मिला हूं, सोर्स का साथ प्रॉब्लम है। ही थिंक्स दैट ही स्पीक्स फॉर मुस्लिम, तो मेरा है ठीक है, मैं भी मुसलमान के लिए बात करता हूं, कभी वोट करवाइए कौन अच्छा कौन मुसलमान किसको मानते हैं। आपको तो नहीं मानते, आपका पार्टी तो पूरा देश में नहीं है। हाउ मीडिया थिंक्स दैट ही इज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ मुस्लिम, हाउ यू केम टू दैट कंक्लूजन? बिकॉज वो तो खाली हैदराबाद ही जीतता है, असम का मुसलमान में तो उनका तो कोई नहीं, उनसे मैं ज्यादा वोट पाता हूं। वी गॉट मोर वोट्स, तो हाउ ही बिकम स्पोक्समैन? पूछेंगे उनको, 5 बजे वो आ रहे हैं प्रोग्राम। किसने बनाया थोड़ा पूछ लीजिए, हर बात में बोलता है। हम लोग तो इलेक्टेड आदमी है, हम लोग को वोट दिया है, एज लॉन्ग एज वी आर इन द सीट वी विल स्पीक फॉर एवरीबॉडी। बट उनको कोई असम में भी घटना होगा, लोग माइक लेके उनका पास जाते हैं। अरे आपका पास क्यों जाते हैं? असम का मुसलमान का पास जाओ। कोई यूपी में कुछ मदरसा गिरा है, क्यों गिरा है, क्या गिरा है, भाई यूपी का मुसलमान का इंटरव्यू लो, आपका क्यों लेता है? आप तो जानते भी नहीं। मगर आप कह रहे हैं कि जो ये आपने इलीगल मदरसे जिनको आपने कहा कि हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि इसको तोड़ दे, आप कह रहे हैं ये जो आपने जो किया वो देश हित में है, राष्ट्र हित में, क्योंकि हमारा सम्मेलन राष्ट्र सर्वोपरि है। देखिए, इससे राष्ट्रहित का कोई काम नहीं हो सकता है। लोगों को आप बताओ कि देखो आपका मदरसा में ये हो रहा है, 10 people has to convince कि हाँ ये हो रहा है। For that my police has to walk with the people. We have to first convince them. Convince होने का बाद हम लोग बात करता हूँ आगे रास्ता क्या है, तो लोग बोलते हैं नहीं, आगे अगर सरकार एक अच्छा स्कूल देता है तो हमारा बच्चा को हम मदरसा नहीं भेजता हूँ। तब पुलिस हमको फोन करेगा कि सर आर यू रेडी टू गिव ए स्कूल? ऐसे ठीक है मैं दे देता हूँ। Then they go and demolish. This is as a we took Muslim people as a partner in our action. हमारा कोई कम्युनिटी से दुश्मनी नहीं है, nobody should think about that. और वो मोदी जी का मॉडल है ही नहीं। You work with the community. और कम्युनिटी ही आपको सपोर्ट करेगा। मैं समझ रहा हूं आपकी बात हेमंतोदा। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज अ रूट टू एन एंड। पॉलिटिक्स एंड नहीं हो सकती। सत्ता पाना देश के लिए कुछ करने के प्रयत्न में एक स्टेप है, मैं ऐसे मानता हूं। कई लोग इस देश में हैं जो और कई दशकों से हैं जो जिनके लिए सत्ता पाना ही एक एंड है, और ऐसे लोग भी हैं जो सत्ता पाने के बाद जानते नहीं अब सत्ता के साथ क्या करें जब तक अगला चुनाव ना हो। ऐसा भी हम देख चुके हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपका अप्रोच क्या है, क्योंकि देखिए मानना पड़ेगा कि आपको सत्ता पाने का कोई ट्रिक है जो आपको पता है। अब उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि आप बहुत यूनिक किस्म के पॉलिटिशियन हैं जो सबको लेके चलते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप ममता बनर्जी को भी मना लेते हैं कि आपके पार्टी के खिलाफ वोट ना करे। आप पार्टियों को तोड़ते हैं, अपने राजनीतिक ओपोनेंट्स को गाड़ी में बिठा के असेंबली में ले जाके आपके लिए वोट करवाते हैं। आप जैसे बहुत कम पॉलिटिशियंस होंगे जो ये सब इतने क्वालिटीज हैं। मगर आपका अप्रोच क्या है, और असम के लिए और देश के लिए देखिए आपकी थिंकिंग क्या है? व्हाट इज योर विजन? अर्नब, आपका और मेरा व्यू सेम है। असम देश का अंदर असम एक बहुत बड़ा स्टेट होते हुए उभारे, और हमारा देश वर्ल्ड में सबसे बड़ा होके उभारे। और इससे आगे और क्या आइडियोलॉजी है, राइट लेफ्ट सेंटर, वो तो मेरा दिमाग में नहीं आता है। मैं जानता हूं एज ए मिनिमम कि असम शुड बी इन द टॉप 5 स्टेट ऑफ द इंडिया, एंड इंडिया शुड बी द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट माइटीएस्ट स्टेट इन द वर्ल्ड। इतना ही फिलॉसफी है। आगे राइट लेफ्ट सेंटर वो तो मेरा दिमाग में आते नहीं। तो उसके तरफ प्रयत्न किस दिशा में आप कर रहे हैं? काम हो रहा है। नहीं, जैसे असम की बात करें तो जब मैं गुवाहाटी से हूं, भोरलुमुख में हमारे दादाजी का घर था, आपको याद है, जो अभी जीएस रोड है, और वहां पे हम खड़े होते थे। जब मैं 10 साल का था, मैं खड़ा होता था वहां पे अपने घर के बालकनी में, और सामने से प्रोसेशंस होते थे। मैं 6-7 साल का था, कहा जाता था ahoya उलाया, देयर यूज्ड टू बी स्टूडेंट एजिटेशंस, और उसमें एक
सेंस ऑफ एलियनेशन की बात होती थी कि आसाम को इग्नोर किया गया है, आसाम को तेल की रॉयल्टी नहीं मिलती है, एक तरह से जो पॉलिटिक्स वहां पे बनी थी वो थी ऑफ एलियनेशन। तो पिछले लोग जानना चाहेंगे, आज अगर कोई गुवाहाटी में जाए तो लगता है कि बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और जिस तेजी रफ्तार से हो रही है, आप गुवाहाटी से शिलोंग जाए 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं अप्रोच क्या बदली है 30 सालों में, और इससे हम क्या मतलब क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल देता हूं बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम। नहीं, आप बिल्कुल खुलकर बोले। पहला बात, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा सेंस का और अभी जा रहा है। आप भी उत्तर पूर्व से है, सब आप जानते हो, नॉर्थ ईस्ट का कोई सारे स्टेट में ब्रॉडगेज भी नहीं था। ब्रॉडगेज नहीं था, रेल का एक ही लाइन था जी, आने का जाने का एक ही लाइन। सो जो डिस्टेंस 24 आवर्स लगते थे वो 48 घंटा लगता था। मीटर गेज में कहीं में मीटर गेज नहीं, एक ही ट्रैक है, आने का भी वो आने का भी जो जंक्शन में ट्रेन खड़ा रहता था, सिंगल लाइन। कोई स्टेट में एयरपोर्ट नहीं था जी। आज आप अगरतला का एयरपोर्ट जाइए, इट इज मच बेटर देन लखनऊ एयरपोर्ट। अच्छा, अब मैं गारंटी का साथ बोल, योगी जी पसंद नहीं करेंगे इस बात को। अब आज इट इज बेटर देन, और योगी जी का एयरपोर्ट और आगे बढ़ेगा समय में, बट एज ऑफ टुडे अगरतला एयरपोर्ट इज मच बेटर देन लखनऊ एयरपोर्ट एज ऑफ टुडे। तवांग तक जाने का अभी रेल लाइन बसना शुरू हो गया। नेक्स्ट मंथ PM is probably going to inaugurate airport in Itanagar. So Northeast is under tremendous sense in 2014. Coming back to Assam, आप कल्पना कर सकते हैं असम जैसा स्टेट में 24 मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, 26 मेडिकल कॉलेज का काम, अपार्ट फ्रॉम एम्स। Today, Assam GDP become number 17 in the country, and we are just in a close competition with Punjab. Competing with Punjab in GDP. मेरा GDP 5 लाख करोड़ का है, पंजाब का GDP 5,50,000. We beat Chandigarh last year. So ये एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। अभी असम में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज बीन, हमारा ये लास्ट 2-3 साल में we negotiated over 1 lakh crore. अभी असम का हर साल हम लोग 14-15% we are growing if you minus that COVID period. जब देश भर में ऑक्सीजन नहीं हुआ, दिल्ली ऑक्सीजन के लिए मांगा लोगों से, ऑक्सीजन दो हमको, we need oxygen. But Assam proudly distributed oxygen to the neighboring state of Assam, to all northeast state. हमने किसी से ऑक्सीजन नहीं मांगा at the time of crisis. जी। तो एक असम का अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है पोस्ट 2014। और मैं आपको ये बोल सकता हूं 10 साल अगर ये मुहिम चले, असम विल बी विद इन द नेक्स्ट 1 to 12 इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बहुत अच्छा अभी एजिटेशन असम में नहीं होता है, एक एक करके सारे उग्रवादी गुट का साथ समस्या समाधान हो गया। You know डिस्टर्ब एरिया एक्ट, अभी असम में 70% एक्ट एरिया से डिस्टर्ब एरिया एक्ट हैज बीन विथड्रॉन। ऑल कम्युनिटी आर नाउ, दे आर नो लॉन्गर ऑन एजुकेशन, नो लॉन्गर ahoya, पीपल से गो टू द स्कूल। अभी हमने एक थोड़ा अपील किया था कि स्कूल में सीलिंग फैन का जरूरत है, सरकार खरीद सकता है क्या, लोग दे सकता है। मैंने ऐसे एक ट्विटर में डाला, 16,000 फैन हैज पीपल हैज कंट्रीब्यूटेड इन जस्ट 3 days ऑफ टाइम। अमेजिंग। ऐसे 10 एक डाल दिया था। मैंने लोगों को बोला देखो बिहू हमारा लाइफलाइन है, कोई डोनेशन मत लेना। लोग डोनेशन लेना बंद कर दिया। फिर मैंने हमारा असम का मारवाड़ी समाज को बोला कि बिहू का दिन घर में पिठा लाड़ू खाइए, बिहू का दिन वो वाला आपका नॉर्थ इंडियन वाला डिशेस नहीं, नेक्स्ट रात खाइए, लेकिन सुबह लाड़ू पिठा खाइए। वो लोग एक कदम आगे जाके हर मारवाड़ी समाज ने बिहू करना शुरू कर दिया कि विल सेलिब्रेट बिहू लाइक एनी अदर असमीज पीपल। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज हो रहा है असम में। और मैं असम और नॉर्थ ईस्ट का बारे में ये बोल सकता हूं कि इट इज नो लॉन्गर, गिव अस अनदर 5 years, विल नो लॉन्गर कम विथ एनी काइंड ऑफ बेगिंग बाउल, विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मगर
क्या एक मॉडल बन सकता है देश के लिए? क्योंकि मेरा सवाल यह है, जब आप कह रहे थे ना सारी बातें, तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह से उग्रवाद की बात होती थी, एलियनेशन की बात होती थी, और हर असमी युवक को कहा जाता था कि भारत से आप अलग हैं और आपको अलग रखा गया है, वही बात होती थी 1990 में। 3 दिन का बात बता। जी बताइए। एक पंजाब सरकार ऐड डाल रहा है कि हम लोग 20,000 युवकों को नौकरी देने जा रहा हूं या दिया है। गुड वर्क, आई डोंट हैव एनी वर्क, बट कैन यू इमेजिन असम गवर्नमेंट ये साल में विल कंप्लीट गिविंग जॉब 1 लाख एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट। 1 लाख बच्चा को नौकरी मिल रहा है इन प्राइवेट इंडस्ट्री एंड इन गवर्नमेंट में ही। जितना वैकेंसी था मैंने 1 साल में सारा कंप्लीट कर दिया कि चलो सब लोग। अभी असम पुलिस इज ए फोर्स, 0 वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं असम पुलिस में, सारे फिलअप कर दिया। लेकिन हम टीवी में नहीं आता हूं वो एडवर्टाइज लेके, वो एक अलग बात है। किस पर इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने बताया ना, 20 पंजाब के बारे में बोल रहे थे। 20,000 में एडवर्टाइज चल रहा है, मैं 1 लाख में एडवर्टाइज नहीं दे रहा हूं, बिकॉज माई टोटल अनएम्प्लॉयड यूथ इज 12 लाख। जब तक 12 लाख को कुछ नहीं कर सकता हूं, आई डोंट हैव राइट टू कम टू द टीवी। एडवर्टाइज लगाना मेरा मॉरल करेज नहीं है, मॉरल राइट्स नहीं है। बट हम लोग भी असम में जो आज मैं सारे एडवर्टाइज सारे स्टेट का देखते रहता हूं, और वो देखने का बाद मेरा बहुत प्रसन्न होता है कि असम इज इन मच स्पीडियर इन कंपैरिजन टू मेनी। तो एक बात बताइए, आप कितने सालों से राजनीति में हैं? मैंने 22 साल हो गया। 22 साल से राजनीति में? 22 साल से मैं एमएलए हूं। एमएलए हैं। उसके पहले कितने सालों से अब राजनीति में? उसका पहले तो मेरा उम्र ही 27 साल का था। उसका पहले मैं कॉलेज में था, जो भी था। तो चलिए 22 साल से आप एमएलए हैं, और बीजेपी में कितने दिन हो गए आपको? 2015। तो अभी 7वां साल चल रहा है। 7वां साल। तो ये 22 सालों में 15 साल आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और पिछले 7 सालों से आप बीजेपी में हैं, और पिछले 1.5-2 साल से आप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल मेरा ये है आपसे हेमंत जी, कि अप्रोच अलग क्या लग रहा है आपको? जो असम में जो चेंजेस हुई हैं वो पिछले 2-3-4 सालों में ज्यादा हुई हैं, तो एक्सपीरियंस क्या है? गवर्नेंस मॉडल देखिए क्या है? क्योंकि व्यक्ति तो वही है ना, आप एज अ पर्सन यू हैव नॉट चेंज्ड। तो और दूसरी बात, मैं और एक बात कहना चाहता हूं, ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो बिल्कुल टेरर था हर मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि कहा जाता था कि अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करे तो हिमंतो विश्व शर्मा उनको पकड़ेंगे। ये रात के 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे इंस्पेक्शन करते थे, और शायद आजकल भी करते हैं। तो अपने मंत्रालय में तो आप काम कर रहे थे, मगर अप्रोच अलग क्या है इस बार? देखिए, डू यू हैव अ मोर फ्री हैंड? क्या आप ज्यादा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है आपकी? क्या अप्रोच, क्या आपको ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल रही है? व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में चेंज क्या हो रहा है? नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल है। टूरिज्म का दृष्टिकोण से हो, माइंस मिनरल्स हो, पेट्रोलियम हो। आज भी देश का जो भी पेट्रोलियम आप निकालते हैं, उससे असम का ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। टी में भी हम सबसे ज़्यादा टी असम ही बनाता है। पोटेंशियल था, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन, नॉर्थ ईस्ट को एक हीलिंग टच का जरूरी था। अभी जब प्रधानमंत्री जी हमारा जो हम गामोसा बोलते हैं, जब उसको लेके कोई दूसरा स्टेट में जाते हैं, तो पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट फील कि भाई somebody is taking care of our emotion। अभी आपको मैं छोटा एग्जाम्पल दूंगा। थोड़ा दिन पहले मैं बोमाई जी को मिला। बोमाई जी मुझको पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होने वाला है क्या? मैं बोला क्यों आपने ये पूछा? जी बोले नहीं, अभी प्रधानमंत्री जी आया था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, मेरा साथ बैठे रहा और मुझको पूछने लगा कि नॉर्थ ईस्ट का कितना बच्चा ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज पीएम हैज नॉट टोल्ड मी जी, इट इज टोल्ड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो ये नहीं पूछा गुजरात का कितना बच्चा पढ़ रहा है। तो ये जो एक चेंज हो गया कि नॉर्थ ईस्ट इज पार्ट ऑफ दिस कंट्री। कोई आपको लक्ष्मी देना जरूरत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक कल्टीवेशन होता है, आपका ये पोटेंशियल है, यू आर न्यू इंजन ऑफ ग्रोथ, आप देश का अस्ता लक्ष्मी है। तो दैट काइंड ऑफ एनकरेजमेंट वाज नेवर देयर फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कभी मालूम ही नहीं था कि भाई नॉर्थ ईस्ट का कोई बच्चा आके, कोई पॉलिटिशियन आके दिल्ली में भाषण देने का मौका भी मिलेगा। अभी बीजेपी का ही बात बोलो, देश का ही बात बोलो,
हर नॉर्थ ईस्ट का मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिलता है। अगर हम 2 शब्द बोल भी लेता हूं, 3 काम भी साथ में हो जाते हैं। तो ये पोस्ट 2014 देयर वाज ए मेरा भाषा में बहुत बड़ा आउटरीच हुआ, बहुत अच्छा हीलिंग टच हुआ। और आज आप धीरे धीरे देखो, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई फायरिंग नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई एजिटेशन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। अभी मैं यहाँ आके मुझको रिपोर्टर पूछता है व्हाट अबाउट सीए, असम में कोई नहीं पूछता। व्हाट अबाउट सीए? सीए के बारे में हम दिमाग में भी नहीं लाता। सीए के बारे में बात नहीं हुई असम में? नहीं, हम उसका विषय में भी बात क्योंकि असम में बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है। तो ये मैं भी आऊंगा। मैं ये कॉन्टेक्स्ट करना चाहता हूं कि नाउ पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर मोर इन्वॉल्व विद डेवलपमेंट, दे आर मोर इन्वॉल्व विद देयर कल्चर ट्रेडिशन, और देश में हमारा पहचान बनाने वाला है, बनाना चाहिए। अभी मणिपुर का लड़की गेटिंग गोल्ड इन ओलंपिक, मेरा बच्ची, आज असम का बच्ची जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल में मिल रहा है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल मिल रहा है। सो दिस इज ए न्यू इरा फॉर नॉर्थ ईस्ट। एक नया उभर के आते हैं, एक नया टाइम है फॉर द। हेमंत दा, मेरा सवाल आपसे, आपको सीए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि जो जितनी ज्यादा बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुई है भारत में, वो आसाम में हुई है। आसाम की डेमोग्राफी बदल चुकी है। आज अगर मैं अपने गांव में जाऊं, मैं आपको खुलकर कह रहा हूं, मेरा गांव आप जानते हैं पोल्ला खोत्रो, बोरपेटा नौलपारी के बीच में होठेबरी, वहां पे मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कि वहां पे आसामी बोलने वाले लोग कम हैं। और आपको मैंने व्यक्तिगत तौर पे कई दिन पहले कहा था कि एक स्कूल की जो जमीन थी वहां पे, उस पर भी जितने बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स थे वो उन्होंने कब्जा करके रखा था। तो मुझे लगा कि बांग्लादेश से अगर लोगों को खुला दरवाजा दिया जाए, और आसाम के लोगों के लिए बांग्लादेश के लोगों का आना वो इशू था, यानी कि विदेशियों का आना इशू था, ये नहीं कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम आपको तो प्रॉब्लम होनी चाहिए सीए के साथ कि आप हिंदू बांग्लादेशियों को आने के लिए कह रहे हैं, तो एक तरह से दरवाजा खोल रहे हैं। कोई कल अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को चेंज करके भी एंटर कर सकते हैं। तो सवाल मेरा है कि आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सीएए से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखिए अर्नब, मैं ये दिल से मानता हूं कि वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका देश है। भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? आप बट दे आर बांग्लादेशी सिटीजन। नहीं, मैं ही बोल रहा हूं, बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर विश्व में हिंदू का समस्या होता है, हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है बिकॉज यू आर फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन, हिंदू कहां जाएगा? अगर हाँ, हिंदू भी ऐसा हो सकता था कि हिंदू इज ए स्टेट रिलीजियन ऑफ मेनी अदर कंट्रीज, इट्स ए डिफरेंट बॉल गेम। अगर आज पाकिस्तान में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है जी, अगर मान लीजिए, आई विल नॉट नेम द कंट्री, XYZ में हिंदू का ऊपर एट्रोसिटी होता है, उनका मन में एक ही बात आता है, भाई कम से कम भारत में कौन है, टेलीफोन करो, भारत का मीडिया को बोलो, भारत को बोलो कि भारत आपका जननी है। कोई लोग बांग्लादेशी नहीं बना, कोई हिंदू बांग्लादेश में रहने के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, बट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कोई हिंदू को कांग्रेस ने पूछा था क्या कि देश का पार्टीशन होगा, आप लोग कहां रहना चाहते हैं? दिस पार्टीशन वाज डन यूनाइटरीली बाय कांग्रेस। हिंदू का रेफरेंडम से तो पार्टीशन नहीं हुआ था। कोई हिंदू को मालूम ही नहीं था सुबह तक कि हम पाकिस्तान में आया कि हिंदू में था। एक ही साथ तिरंगा लेके मूवमेंट किया, फिर नेक्स्ट डे पता चला कि नेहरू और रेडक्लिफ का बीच में समझौता हो गया, हम पाकिस्तानी बन गया। इट वाज, दे वर नॉट पाकिस्तानी बाय चॉइस, they were Pakistani because of the political maneuvering that has happened in Delhi and within the Congress. So भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, you cannot term them as a Pakistani and Bangladeshi. They are Hindu, they are proud Hindu, they are Indian. हाँ, असम का समस्या है वो भारत में समाधान होगा। कोई असम में मेरा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ हिंदू, दैट माई आई एंड दिल्ली कैन सिट डाउन, वी कैन टेकन केयर ऑफ। बट आप कभी हिंदू को
बांग्लादेशी पाकिस्तानी मत बोलिए, हर हिंदू भारतीय है। नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता है जिनके साथ ममता बनर्जी बैठ के चाय पे चर्चा करती है, और वो है हिमंत बिस्वा शर्मा। रहस्यमय मीटिंग हुई थी दोनों के बीच में वाइस प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले दार्जिलिंग में। आप यही बात जो आपने सीए के बारे में कही, वो बात आप ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझा पा रहे? आपने कभी उनको बताया क्यों नहीं? ये नहीं, आप बताइए इसको, क्या आपने कभी बात की? थोड़ी तो अंदर की खबर हमको बताइए, कोई तो ब्रेकिंग न्यूज दीजिए हेमंत जी। अर्नब जी, मैं कोई नहीं, आपकी मीटिंग हुई थी का बारे में, मैं वो मीटिंग का बारे में भी आप पूछेगा, मैं बताऊंगा। बट कमिंग ऑन सीए, कांग्रेस कैन नॉट एक्सेप्ट सीए बिकॉज इसमें एडमिशन हो जाता है कि पार्टीशन में हम लोग गलती किया था। अगर कांग्रेस बोलता है, कांग्रेस वांट्स टू से हिंदू एज ए पाकिस्तानी एज ए बांग्लादेशी। मैं आपको आसाम का बारे में बताता हूं। सीतागंग हिल ट्रैक में बुद्धिस्ट लोग रहता था। ऑन द डे ऑफ फ्रीडम दे ब्लास्ट क्रैकर्स कि हम लोग भारत में आ गया। सुबह 7 दिन दे होस्टे तिरंगा, 7-8 दिन का बाद वो लोग को मालूम पड़ा कि भाई नहीं, वी हैव बीन पुट इन पाकिस्तान। तो 2 लोग लकीर खींच देगा ये भारत और पाकिस्तान है, और हिंदू बन गया पाकिस्तानी। वो कभी नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। आप हिंदू का साथ अन्याय मत कीजिए। हम नहीं बोला हूं कि मुसलमान का साथ अन्याय कीजिए, मैं वो भी नहीं बोलता हूं। अगर मुसलमान का भी कहीं तकलीफ है, भारत जैसे हो सकता है उनको मदद करे और कर ही रहा है, मेरा उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हिंदू इधर ही आएगा, और हिंदू का कोई एड्रेस नहीं है पूरा विश्व में। और टू दैट एक्सटेंट हिंदूज ऑफ इंडिया हैज टू एडमिट द फैक्ट कि हम भी जैसे 1947 का प्रायर में फ्रीडम मूवमेंट किया था, हम भी जैसे गांधी का फोटो दिल में लगाते हुए आंदोलन किया था, वो लोग भी सेम किया था। गांधी जी का फोटो दिल में लगाते हुए दे हैव ऑल्सो डन द सेम फ्रीडम मूवमेंट। हो सकता था उस समय, मैं नहीं जानता उस समय टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट कहां है, बट नेहरू जी को, सारे हिंदू को उस समय ही भारत में लेके आना चाहिए था। द मोमेंट जिन्ना डिक्लेयर दैट पाकिस्तान विल बी इस्लामिक कंट्री, बस हो गया, आप तो रह नहीं सकते हो, आपको लेके आना चाहिए था उसी समय। आप नहीं ले आए, क्या सिचुएशन था, क्या था, मेरा पता नहीं है। लेकिन दिस सीए इज ए लॉन्ग, ये इट इज ए जस्टिस ऑफ द लॉन्ग pending exploitation of Hindus in our subcontinent. One thing I must say, कि आप बिल्कुल क्लियर है अपने थिंकिंग में, आप कोई इसमें कोई एम्बिग्विटी वाली बात नहीं है। और मैं ये भी सोच रहा था कि जब आपकी बात मैं सुन रहा हूं तो मुझे ये लग रहा है कि हेमंत दा 2019 के फरवरी के 2 तारीख को हमने रिपब्लिक भारत का उद्घाटन किया था, हमने लॉन्च की थी। और उसके चंद महीने बाद सरजील इमाम थे कि अभिषेक कौन थे जिन्होंने कहा था कि चिकन्स ने कहा, सरजील इमाम थे ना? हाँ प्रीति, सरजील इमाम ने कहा था कि भाई लोगों को इकट्ठा करो, ये 20-30 किलोमीटर का लाइन है, चिकन स्नेक है, इसको अगर हम तोड़ देंगे तो भारत का पूर्वोत्तर भारत से अलग हो जाएगा। और आज इनकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि देश को हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों की क्यों जरूरत है। मैं खुलकर कह रहा हूं, आई फील वेरी प्राउड अबाउट योर थिंकिंग, बहुत जरूरत है। डू यू ऑल्सो कंसिडर दैट टू बी अ थ्रेट? वी टॉक अबाउट द जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स टू दिस कंट्री। सबसे बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक थ्रेट ये हुई है द थ्रेट ऑफ अ ज्योग्राफी दैट यू कैनॉट चेंज। हम हमारे नेबरिंग कंट्री का नाम नहीं बदल सकते, उसका अस्तित्व, उसकी मानसिकता नहीं बदल सकते, मगर क्या हम उन लोगों की मानसिकता बदल सकते हैं जो देश में रहते हुए अपने आप को, जिनको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, जो भारत में रहते हुए भारत की अखंडता की तरफ इस तरह से इशारा करते हैं, इस तरह से बात करते हैं? हेमंत दा, नहीं, अभी हमारा देश का दुर्भाग्य यही है कि आप जिसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोलता है, अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप मैं नाम नहीं लूंगा, ले लीजिए। लोग जो आपका चैनल में उस समय जिसका ऊपर सीना ठुक के बोलता था कि देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहिए, वही लोग आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, जैसे मेरा मन में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर राहुल गांधी जी कभी समाज जोड़ो यात्रा करते हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है।
समाज जोड़ो, समाज में है आज भी अपर क्लास है, लोअर क्लास है, कास्ट सिस्टम है, अब समाज जोड़ो। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा क्यों करेगा? आपका नाना देश को तोड़ा, उनके नाना क्या बोलता है हिंदी में पता नहीं, हम तो नाना ही बोल दूंगा, ग्रैंडफादर देश को तोड़ा और हाँ जो भी आपने रेड क्लिफ का साथ मिल के लाइन खींचा और अभी राहुल जी बोल रहे हैं मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। अरे तमिलनाडु का लोग कब बोला था हम भारत तोड़ना चाहता हूं? केरला का लोग कब बोला था कि वी नॉट वांट टू बी इन इंडिया? तो आप भारत जोड़ो यात्रा करके आप केरला तमिलनाडु का लोगों को अपमानित कर रहा है कि यहां में कुछ प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज अ प्राउड इंडियन। तो इसका क्या है, ये लोग एक बहुत बड़ा लॉबी भारत का खिलाफ काम कर रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो बाकी जो भी है, दे वांट्स टू वीकेनिंग इंडिया। अभी देश में क्या लग रहा है, विदेश में लग रहा है कि भारत कोई तोड़ने का कोशिश कर रहा था, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ है। जी। अरे भाई, वैसे जिस व्यक्ति विशेष के बारे में आप कह रहे हैं उनके बातों को सुनकर कभी शर्म आती है कि और वो जो विदेश में जाके बातें करते हैं इस तरह के, तो हमें तो मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, क्योंकि उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके कहा, राहुल गांधी ने कहा कि भारत तो राष्ट्र ही नहीं है, भारत तो राष्ट्र ही नहीं है। और मुझे शर्म आई क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी में मैं फेलोशिप पे गया था और उनको बताना पड़ा है कि भारत, आपने वीडियो देखा है वो, जब भारतीय एक ब्यूरोक्रेट ने आके उनको बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, चाणक्य के समय से भारत जनपदों का राष्ट्र है। मगर राहुल गांधी को तो ये भी नहीं पता है और वो कहते हैं कि वो इनकार करते हैं इस बात से कि इंडिया एज अ नेशन, he does not accept the concept of India as a nation। आप देखिए, अगर देश का इतना बड़ा राजनेता सीना ठोक के बोलता है कि भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट जी, और वो यूनियन का ऊपर ये क्या कोई स्टूडेंट्स यूनियन है भारत? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कुछ देर पहले ही ये मुलाकात हुई है। असीम, हम जानते हैं कि टर्की के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो एक तरह से आजादी के बाद से, भारत की आजादी के बाद से ही ये संबंध लगातार चल रहे हैं। खास तौर से टर्की के साथ जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा मान सकते हैं। साल 2021-22 में करीब 10.7 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच हुआ था। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण, और ये एक मौका हम जानते हैं कि इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम में ये मोदी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करे, तो एक केमिस्ट्री बनती है। विभिन्न जो अहम मुद्दे हैं जो आपसी हितों के हो सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जिनमें सहयोग की गुंजाइश है, तो उसमें एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद मिलती है। तो उस लिहाज से कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये बातचीत। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई है इसकी जानकारी अभी थोड़ी देर में आएगी। संभावित है कि कुछ, क्योंकि अलग बायलैटरल्स इसके बाद राष्ट्रपति मोदी की राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात होने वाली, तो उसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से द्विपक्षीय मुलाकातों में क्या कुछ सार रहा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक अहम मुलाकात SCO सम्मेलन से ही था, और खासतौर से भारत के हितों को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने के लिहाज से, टर्की में आगे बढ़ाने के लिहाज से इम्पोर्टेंट बिजनेस पार्टनर के तौर पर कह सकते हैं हम मुलाकात। बिल्कुल, और जैसा कि हम जानते हैं सुधाकर कि भारत और तुर्की के संबंध बहुत पुराने हैं और इन संबंधों में खासकर जो व्यापारिक हमारे समझौते हैं उसको और भी मजबूती प्रदान की जाए, इसको लेकर भी बातचीत संभव है। बिल्कुल देखिए, और आपको याद होगा कि And yes, on your screens are pictures of Prime Minister Narendra Modi holding those very important bilaterals at the SCO Summit. Some key news points that have emerged from the SCO Summit as Prime Minister Modi has pitched for full transit rights, saying that he wants to transform India into a manufacturing hub. These are the latest updates that are coming in from the Shanghai Cooperation Organization Summit 2022 in Uzbekistan, where Prime Minister Narendra Modi is holding those very important bilateral meetings
with the Turkish president. Those pictures on your screens that are streaming in at this point, and Prime Minister Narendra Modi stressing on the need for creation on resilient supply chain in India and giving transit rights to each other is what Prime Minister Narendra Modi has said. Meanwhile, also Xi Jinping and Putin have congratulated India on SCO presidency next year, extending full support to India. Also, Prime Minister Narendra Modi, like we are showing you in the pictures, holding those important bilateral meetings. He met with the Turkish president at the SCO Summit in Uzbekistan. And meanwhile, PM also said that India today is one of the most affordable destinations for medical and wellness tourism in the world, talking about the prowess of India and how Prime Minister Narendra Modi has the vision of making India the biggest manufacturing hub. Prime Minister has also proposed considering organizing a millet food festival under SCO, saying that India was ready to share our experience, quote unquote, with the member countries of SCO by establishing a new special working group on startups and innovation. So Prime Minister Modi at the SCO Summit in Uzbekistan, and these are key news points that are emerging from there, that the member countries have contributed about 30% to global GDP, while 40% of the world's population also resides in SCO countries. And he's also reiterated that India supports greater cooperation and mutual trust among SCO members. Abhishek Kapoor, Senior Executive Editor, also with me at this point to give us updates from the SCO Summit on Prime Minister's bilateral meeting. Well, yes, so this is a very significant meeting and pictures that are coming, Suesha, because this was not part of the plan. So when the MEA, when the Foreign Secretary did the presser before Prime Minister left, and the statement that came about Prime Minister leaving for SCO Summit, and then the statement of him being there, nowhere this was mentioned that he would be meeting Erdogan. And now what we are being told is by our sources that this is a pull aside. So this was not part of the plan. And both sides decided that, okay, fine, the two leaders should meet. And hence, it's a very unstructured, informal, in an informal setting that the two leaders are meeting along with their respective delegations. So these are not delegation level talks, formal talks between India and Turkey. These are just informal pull aside because the two leaders wanted to meet. This is important because Turkey, we have seen typically over the last few years, has panned a little more towards Pakistan. And in that sense, this is important also because Turkey is very important in the European theater. So whatever happens here is going to be significant. Also, this is equally important because if an unplanned, unannounced pull aside can happen with Erdogan, then whether a similar pull aside can happen with Xi Jinping. Because remember, while Chinese president is also there at the SCO Summit, there is no official announcement whatsoever from both the sides, India and China, of the two leaders, President Xi Jinping and Prime Minister Modi meeting. And if a meeting can happen between Modi and Erdogan, can a meeting happen by extension between Modi and Xi Jinping? That would be very interesting to watch out. And of course, with the Pakistanis, gale pade, agar wo aa gaye, takar gaye, if they, if Shahbaz Sharif decides to bump into Prime Minister Modi, that can happen. We have not seen those pictures coming out as yet. They have been under one roof for off and on for more than a couple of hours. But these pictures are important because if a pull aside can happen with Turkey, is a pull aside likely with China as well? Right. Abhishek, we'll continue to get our viewers all the updates from the SCO Summit. For now, cutting across to the Republic Bharat Summit, Arnav Goswami in conversation with the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma. No Congress government should exist in India. ये देश के लिए सेवा है. अभी जो कांग्रेस पार्टी जो है, आप देखिए क्या हुआ. राहुल गांधी आपसे इतने चिढ़ते क्यों हैं? उनकी और आपकी उम्र करीब करीब सेम है और कहा जाता है कि कांग्रेस के पिछले 70 सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़े लॉस हिमंत बिस्वा शर्मा है. उन्होंने आपको जाने क्यों दिया? वो उनके आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? मैं आपको 2-3 बात करता था. मेरा प्रॉब्लम क्या है? देश में गांधी फैमिली कौन है? आप बताइए, गांधी फैमिली कौन है? मैं तो सिर्फ वाड्रा फैमिली को जानता हूं. आप जो भी है गांधी फैमिली बोलने से आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यू विल रेफर? नहीं, मैं तो महात्मा गांधी के जो भी है वही बात है.
देश में गांधी फैमिली है, महात्मा गांधी, राजमोहन गांधी, तुषार गांधी। बरिया से हाईजैक करके गांधी फैमिली हो गया दूसरा फैमिली। कांग्रेस था किसका पार्टी? सुभाष चंद्र बोस का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? गांधी जी का पार्टी। कांग्रेस किसका पार्टी था? बाल गंगाधर तिलक का पार्टी। अभी कांग्रेस क्या कहते हैं? फैमिली विल बी अपसेट। अरे कौन सा फैमिली है यार भाई? ये सारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम बना लिया, इससे देश को बाहर निकालना है। तो जहां जहां कांग्रेस का सरकार तोड़ता है, मेरा कंट्रीब्यूशन हो भी ना हो, मुझको पूछने से मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, हाँ एक तोड़ गया तो अच्छा हुआ, तोड़ दिया तो अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। मेरा आई डोंट हैव एनी अपॉलॉजी ऑन दैट। अच्छा, अभी भी अगले कौन सा स्टेट का नाम पूछा था, मैं अगर आपका पैनल में था, मैं 2-3 स्टेट का नाम गिना देता था। हो ना हो अलग बात है, होने से अच्छा सा, नहीं होने से भी कुछ तो टेंशन रहेगा उधर में। आप 2 दिन के बाद देखिए, मैं आपको सिंपल कुछ एक मेरा कहाँ प्रॉब्लम है आपने पूछा। जब कांग्रेस में लोग रहता है, बढ़िया है, द डे दे रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस, दे विल से इसका ऊपर सीबीआई है, ईडी है। अरे बाबा, अगर तुम जानते थे उनका ऊपर सीबीआई ईडी है, तब उनको तुमने पार्टी से निकाला क्यों नहीं? आप क्या वॉशिंग मशीन हो? आपका साथ रहने से तो अब याद नहीं होता है कि इसका खिलाफ आपका सीबीआई है, ईडी है। जो आर्गुमेंट वो बीजेपी का ऊपर देता है, बीजेपी में तो वो काल आया है, लेकिन 22 साल 20 साल तो कांग्रेस में रहा। अगर उनका ऊपर ईडी है, उनका ऊपर सीबीआई है, आप उनको पार्टी से अलग कर देना चाहिए था। व्हाई यू हैव मेड हिम चीफ मिनिस्टर? आपने व्हाई यू हैव कांग्रेस मेड छोड़ा हिम तो मिनिस्टर? आप पर भी तो एजेंसियां लगाई गई। वही प्रॉब्लम है ना, दैट टिल आई एम इन कांग्रेस देयर इज नो एजेंसी अगेंस्ट मी। अगर मैं कांग्रेस से बीजेपी जाता हूं, इसका ऊपर तो सीबीआई का केस है इसलिए आ गया, मतलब आप हमको स्लैब बना के रखना चाहते हो। मैं निकालो तो मेरा ऊपर लांछन, मैं रहूं तो मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूं। ये सब बातें जो ये लोग पार्टी को, नहीं ही हैज बीन डिसलॉयल टू द फैमिली। अरे कहां लिखा है मैं फैमिली का ऊपर लॉयल रहना है? लिखा है कि भारत का संविधान का ऊपर मैं आस्था रखूंगा। कोई तो मेरा ओथ नहीं है कि मैं एक फैमिली का ऊपर आस्था रखूंगा। मेरा मन है, मैं नहीं हूं कांग्रेस में। हाउ इट कैन बी बिट्रेल? अगर वो बिट्रेल है तो व्हाई इंदिरा गांधी ब्रोकन द कांग्रेस एंड फॉर्म ए न्यू कांग्रेस? मतलब इंदिरा गांधी तो उससे भी बड़ा बिट्रेयर था अगर हम बिट्रेयर है। शी हैज ब्रोकन द कांग्रेस। तो ये जो कांग्रेस लोग जो बात बोलते हैं, ये बात बोलते बोलते दे हैव डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द मासेस ऑफ द कंट्री। आप पार्टी तोड़ना बहुत बुरा बात है। अरे भाई चिदम्बरम जी, आपने पार्टी नहीं तोड़ा था क्या? पार्टी तोड़ना बहुत बड़ा बात है। अरे इंदिरा गांधी मैम, आपने पार्टी नहीं तोड़ा था क्या? ये गद्दार है। अरे आपने कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को आपने डिफीट नहीं करवाया था क्या? हिमंत बिश्व शर्मा पार्टी से निकाल आते हैं तो मैं गुनाहगार हूं, लेकिन कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंट नॉमिनी को इंदिरा गांधी हरा देता है, देन शी इज ए हीरो। तो ये बात करते 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 दे हैव टेकन दिस नेशन फॉर ग्रांटेड, और आगे नहीं हो सकता। आई एग्री, इट शुड बी नेशन फर्स्ट, नॉट फैमिली फर्स्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल गिव हिम ओनली 2 words टू डिस्क्राइब हिम। अंग्रेजी में ओरिजिनल और अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन, भारत के उभरते हुए पॉलिटिशियन हिमंत बिश्व शर्मा। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम प्लीज। थैंक यू हिमंत दादा, थैंक यू। बेबाकी से अपनी बात उन्होंने रखी और सारे मसलों पर बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत बिश्व शर्मा जी। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब गोस्वामी जी और हेमंता बिस्वा शर्मा जी, बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए और इन विचारों को, हर एक बात, चाहे वो मुद्दा मदरसों को लेकर हो या bike
rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है।
rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। तारीख में ये भी हुआ कितने बजे अज़ान है? 5 बजे से पहले खत्म करेंगे। तारीख में ये भी हुआ कि जब मुल्क आजाद हो गया तो निजाम ने बहुत बड़ी गलती की, 7वें निजाम ने गलती की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 7वें निजाम ने हिमाकत की। निजाम के साथ वॉल्टर माउंटेन ने गद्दारी की और उनके साथ जो उनकी काउंसिल के मिनिस्टर थे उन तमाम ने गलत मशवरे दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निजाम को भारत में उस वक्त जो हुकूमत बनी आजादी के बाद, उस वक्त उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था। 15 जून 1948 को एग्रीमेंट दिया गया था। उस एग्रीमेंट में निजाम को हैदराबाद की रियासत के लिए इतनी रियायतें दी गई थी। सीटी बजा रहे हो? इतनी रियायतें दी गई थी कि माहिरीन लिखते हैं कि कश्मीरियों को 370 से ज्यादा रियायतें निजाम को दी गई थी। उस 15 जून 1948 के फाइनल ड्राफ्ट में निजाम उसको कबूल नहीं किए। मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं, मैं कई माहिरीन से पूछा कि निजाम क्यों कबूल नहीं किया उसको। 15 जून 1948 को जो फाइनल ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया था, निजाम पीछे हट गए उससे। अगर वो एग्रीमेंट ले लेते निजाम तो पुलिस एक्शन नहीं होता था, ऑपरेशन पोलो नहीं होता था, मगर निजाम को सब्ज बाग दिखाया गया। उसमें कासिम रजवी ने भी सब्ज बाग दिखाया, वॉल्टर माउंटेन ने भी दिखाया, निजाम के जो वजीर थे उन तमाम ने सब्ज बाग दिखाया। बल्कि मैं तारीख में पढ़ा हूं कि माउंट बैटन देहरादून जाकर उस वक्त के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके ड्राफ्ट बताए और कहा कि इसको कबूल कर लो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबूल किए, मगर निजाम मुकर गए उससे, बोले नहीं इसमें और 3 चीजें इजाफा करो। आपको मालूम निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है, वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो हम समझा लेते, उसको समझता ही नहीं, फिक्र मत करो मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बता ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी।
कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिना। मोहम्मद अली जिना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिना को 1 नवंबर 1947 को माउंट बैटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिना, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिना ने इनकार कर दिया। जिना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं। जबकि जिना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिना से मिला। तो जिना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिना ने निजाम के ताल्लुक से कहा। निजाम के कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1 करोड़ 60 लाख 1 लाख मर रकबा मील पर की बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिना ने यह कहा। जिना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 सितंबर को पुलिस एक्शन हुआ। और पुलिस एक्शन जब हुआ, पुलिस एक्शन में तबाही और बर्बादी, लूटम लाट, औरतों की अस्मत रेजी, बौलियां भर गई थी औरतों की लाशों से। तो पंडित नेहरू वजीर आजम थे, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंडित सुंदर लाल की एक कमेटी को भिजाया कि हैदराबाद जाओ और जाकर मालूम करो कि क्या हालात हैं, क्या वाकयात हैं। तो पंडित सुंदर लाल के साथ काजी अब्दुल गफ्फार भी थे। वो हैदराबाद को आए। कब आए हैदराबाद को? हैदराबाद को आए 29 नवंबर 1948 को। 21 दिसंबर तक हैदराबाद की रियासत में रहे। 16 जिलों में से 9 जिलों में उन्हें दौरा किया। 7 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर गए, 21 शहर में गए, 23 गांव में गए और रिपोर्ट बनाकर पंडित सुंदरलाल ने लिख कर दिया नेहरू को, मरकजी हुकूमत को, कि हैदराबाद में 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। 40,000 40,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। हम यही बोलते हैं कि आप उस रिपोर्ट को बताओ, मान लो उसको। ये मेरी रिपोर्ट नहीं थी, ये निजाम की भी रिपोर्ट नहीं थी, ये तो नेहरू ने पंडित सुंदरलाल को भिजाया था। और उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि बौलियां भर गई थी। एक बौली से तो बच्चों, जब लाशें निकाली गई तो बुरखे में एक औरत है और उसके सीने से लगा हुआ उसके बेटे की लाश भी निकली। ये तारीख है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप मानो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को, मैंने पढ़ा पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को। नेहरू मेमोरियल में दिल्ली में आज भी चले जाओ, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। बताओ भाजपा वालों, क्या तुम मानोगे इस रिपोर्ट को? ये रिपोर्ट उस वक्त हैदराबाद में ये तमाम मुखालिफिन बोलेंगे नहीं नहीं, ये रिपोर्ट गलत है। हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता था क्योंकि मिलिट्री थी। As we have been seeing that the central government has decided to celebrate it as the Hyderabad Liberation Day, but
AIMIM chief Asaduddin Owaisi had requested and wrote a letter to the Telangana Chief Minister and Union Home Minister Amit Shah that it should be celebrated as the Telangana Integration Day. And so we have been seeing how the government of Telangana and also AIMIM is celebrating the Liberation Day as rather calling it as the Integration Day. But the BJP says that it's a big win for them, and as you can see right now, massive public rally which is organized, and this rally is being led by AIMIM chief, where you can see this is a 2-kilometer long rally, but thousands of people have come together holding Tiranga in their hands, and also at the same time we have been seeing that there is a massive roar which has erupted between the TRS and the BJP. We have been seeing since the time the government of Telangana has decided to celebrate it as the Telangana Integration Day. We see that the Bharatiya Janata Party has been hitting out at the TRS, saying that this is definitely a big win for the BJP, because they have been saying this since a long time. Since last 8 years, the Bharatiya Janata Party has been saying that once they come to power, they will celebrate the Hyderabad Liberation Day on the 17th of September, which was not being celebrated in the last 8 years. But now, after there was a request which was being put in by the AIMIM chief, and also he had mentioned that this should be celebrated as Integration Day and not as Liberation Day. So definitely there is a roar between both. Whether it is Integration Day or Liberation Day remains to be seen. But yes, a big win for the BJP, as they say that their request, their demand from all these years have finally come fulfilled. And also tomorrow we will be seeing the Union Home Minister Amit Shah, where he will be addressing a mega public meeting on the eve of the Liberation Day and Integration Day, which is being said by the TRS. आगे लिखते हैं, for various reasons Hyderabad has had a particular place in the Middle Eastern countries. This was partly due to certain benefaction that the Nizam's government used to give. For this and other reasons, these Middle Eastern countries took a great deal of interest in Hyderabad. Even other countries in Europe. Bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city.
Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है। Top national updates ahead of Hyderabad Liberation Day. AIMIM organized a motorcycle Tiranga rally followed by public meeting and flag hoisting programs. The rally was led by the AIMIM chief Asuddin Owaisi. With the ongoing searches across India, ED is now conducting searches at the official residence of YSR Congress MP Bagunta Srinivasulu Reddy in New Delhi. The residence of YSR Congress MP are being searched in regards to money laundering probe revolving around excise policy. After the video of open hooliganism by Congress workers went viral, 3 Congress workers were suspended. The video showed Congress workers harassing and threatening vegetable shop owners for not contributing enough amount to fund collection for the Bharat Jodo Yatra. They threw away the vegetables, intimidated shopkeepers and created ruckus. Viewers, we continue to be live and breaking from Agnipath to cinema. India's biggest voices live at India's biggest summit, only on Republic. And Prime Minister Modi in Samarkand, big bilaterals lined up. All eyes on the Modi-Putin meet. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली हैं कि उन्होंने ना सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया, यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है।
Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने ना सिर्फ इन 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। We are live and breaking this Friday evening. I'm Shivangi Shaklal. Let's go to our top story we are tracking. A video went viral of Congress workers threatening a vegetable vendor for not contributing enough amount to party funds campaign for the Bharat Jodo Yatra. Here is the full story. A video of Congress workers threatening a vegetable vendor for not contributing enough amount to party's funds campaign for the Bharat Jodo Yatra went viral. The shocking incident of party workers' hooliganism in Kerala's Kollam district was caught on camera. The workers had allegedly demanded for 2,000 rupees from the vendor, but the owner was only able to give 500 rupees. Following this, the party workers threw away the vegetables while creating a ruckus. The party workers even threatened to kill the shop owner. Watch how the workers threaten the shop owner by saying nobody will go alive without giving the amount demanded. The 5 miscreants were people including Youth Congress State General Secretary H. Anish Khan. The shop owner Fawaz had filed a complaint with the Kunikode police, following which 3 Congress workers that were involved in this incident have been suspended with immediate effect. Bureau Report, Republic TV.
Viewers, we continue to be live and breaking. Much more coming up on the other side. From Agnipath to cinema, India's biggest voices live at India's biggest summit, only on Republic. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day now, we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है। Top national updates, viewers. PM Modi, Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping and other leaders of the Shanghai Cooperation Organization have deliberated on the regional security situation and ways to enhance trade and connectivity. The Chinese president in attendance, PM, made a big statement on India's growth story, saying India has become a global manufacturing hub, expecting an annual growth of 7.5%. Viewers, we continue to be live and breaking at the biggest summit, which is happening in New Delhi. Everything discussed from Agnipath to cinema to defense. India's biggest voices are live at India's biggest summit, only on Republic. Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad.
As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। Bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly, where the BJP workers, they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन दो बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और दो लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly. Top headlines at this hour, viewers. Major victory for Republic. Court dismisses defamation suit and connected motions. ED news tightens in Liquorgate. From Hyderabad to national capital, ED searches underway across 40 plus locations. Liquorgate explodes in the dock for graft cases now. Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain now grilled by ED. SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। PM Modi in Samarkand, big bilaterals lined up. All eyes on the Modi-Putin meet. A proud moment for India, but Vadra Congress politics continues. Questions Prime Minister's photo operates off. From Agnipat to cinema, India's biggest voices live at India's biggest summit only on Republic. Arnab pledges India's largest media expansion, says will create biggest global news organization in the next 2 years.
It's a big win for Republic viewers. The suit against Republic has been dismissed after plaintiff has failed to appear before court. Failure to appear by complainant results in dismissal. Motivated defamation suit against Republic dismissed. Niranjan will get us more details on this big development. Niranjan. Well, I want to go across to Rhythm also. Rhythm Anand Bharadwaj joining us on the phone line. Rhythm, are you there? Rhythm, hi. This is a big news break because it's a big victory for Republic TV. And let me see if I can go across to Rhythm. Rhythm will tell us all the details. Rhythm, they tried to harass us. I mean, they tried to harass us, but they failed. Yeah. Rhythm, go ahead. Over to you. Niranjan, sensational news coming in from City Civil Court in Mumbai, where for the last year this petition had been filed. It's been filed. There was a fake defamation suit filed by one person who said that I am a former cop in the Mumbai police, and this was filed and saying that defamation needs to be done against Republic TV for whatever they've stated in the earlier TRP case. But today, that very case, the defamation suit filed by that man, has been thrown out of the City Civil Court on grounds that he himself didn't appear in this particular case. We had our lawyers, Mr. Pradeep Gandhi, along with Phoenix Legal, appeared in the court for us, and they kept telling the court, it's been 5 times this man has not appeared and he's filed this suit. Remember, it was filed possibly at the behest of the former police commissioner who was quite close to this man on his behest at the time when we were facing a lot of TRP charges by these people themselves. And then we saw the Trinity fall itself. We've seen Anil Deshmukh, the then Home Minister, jailed. We've seen Sachin Wage, the disgraced police officer, himself in prison for another case. And we've, of course, seen the disgraced earlier former Mumbai Police Commissioner, Parambir Singh, no longer at the helm of powers. So the people who tried to file a defamation suit against Republic TV maliciously and falsely have failed, because today a big victory comes in from the City Civil Court that says that we are dismissing this case. All the connected matters with this case are dismissed. Our lawyer Pradeep Gandhi told the court that the plaintiff hasn't been appearing on the last few occasions, and that's the reason this needs to be dismissed. So a plaintiff dismissed on grounds of the prosecutioner himself failing to appear. A big victory, a vendetta-driven suit, failed in the City Civil Court that had been filed against us and our editor-in-chief, Arnab Goswami. It's another big victory, Rhythm, because we remember the entire episode when it happened, and all the stunts that they tried, from calling our employees, our topmost management, to the crime branch, and then to their headquarters. I remember the crime branch headquarters, different police stations across Mumbai. And Parambir Singh also used a 1922 law, if I'm not wrong, against all of us. And some of those FIRs, Rhythm, are still pending, by the way. Those FIRs are open. Investigation has gone nowhere. Charge sheet has not been filed. It's a litany of judicial wrongs that they've tried to attempt, but it's all coming back to haunt them, Rhythm, one by one case after the other. And I would also say they tried every trick in the book to ensure that we don't get victory, but the law of the land is so simple that in each and every case put against us, victory after victory after victory is coming. In fact, this is a very interesting defamation suit that was filed by Iqbal Sheikh, the former police cop, who filed this stating that with our coverage of the news we were putting out on what was happening in the TRP case, we were in fact trying to cause mental harm, mental loss, mental pain, and repetition loss to them and the then Mumbai police. However, when they threw this out, the fact of the matter is, the moment the petitioner saw, the plaintiff saw that every one of those Mumbai police officials were accused who had tried to do cases against us, whether it's Sachin Wage, Parambir Singh, or also the former Home Minister Anil Deshmukh, it came down like a pack of cards. That's exactly what's happening with the false, vexatious litigation they started. It's all coming down, Niranjan. Absolutely. Rhythm, regarding this particular case, especially in the back of the Sushant Singh Rajput case, a lot of these police officials, of course, were under the pressure because we questioned them, and it appears, Rhythm, that they obviously didn't turn up in the courts because they knew. I think we have some reactions lined up on the phone. Swapnil is joining us on the phone. Swapnil,
Swapnil and Rhythm. Swapnil is also joining us. Swapnil, another win for Republic TV, Swapnil, and you've been with us in this entire journey. This former police officer, a senior officer that too, he's lost, and he was Parambir's sidekick almost, if I can call him that, his aide. He obviously tried to sue Republic on behalf of Parambir, and he just didn't turn up in the court so many times, and that plea has now been dismissed. Just proves, Swapnil, how they tried really, really hard to sort of hound us in those days. You remember those days very clearly, and how it's all coming back to haunt them now. Niranjan, heartiest congratulations. Those were the blackest days as far as the whole spectre of journalism was concerned, the sphere of journalism was concerned. And I distinctly recall each of those days because I was there with all of you at that time. And I'm not surprised at all that he did not show up, because the complaint was absolutely motivated. This clearly shows that. And if it was motivated, he knew that now that there is no background for that and there is nobody else at the helm of affairs to back him, there is no question that he's going to pursue that on his own. So given that situation, he would not be going to the court himself and put his neck on the block. So that is the reason why he has not turned up, and that's the reason the court, in the absence of the complainant, always dismisses a particular complaint, because if the complainant is the main person, if he is absent, then even if the witnesses are present, that doesn't mean anything. So technically, if the person who's lodged the complaint does not show up, it's called for want of prosecution, the complaint is dismissed, because there is nobody to prosecute. So that is what it is, and I'm not surprised at all. Even if there is any other case left anywhere else in this entire country, that also will be dismissed. So, all those cases have been motivated. Niranjan, you and I both know that. Those days are over, and it's absolutely a win-win situation. As Republic Bharat Summit is ongoing at the moment in Delhi, I'm seeing snapshots of that, and it is, as usual, I expected that to be another blockbuster. So that's going ahead, very smoothly, and it's definitely promising to be one, blockbuster. So I think we should just continue, doing what we have been doing, and do not worry about these things. These things are just, like the mosquitoes in a milk. So all those mosquitoes are being thrown out one after the other. Yeah, Swapnil, well said. Swapnil, never, not the kind of lawyer who would mince his words. Swapnil, but just one more question. Some of the charges that he had leveled against Republic included causing mental agony and loss of reputation. And can you imagine the kind of loss of reputation that these scamsters like Parambir Singh brought to the Mumbai police? I mean, can you imagine how much of loss of reputation they've caused to the Mumbai police? What a shame, Swapnil. What an irony and what a shame. And there's no question, as I said, that these cases are like mosquitoes in a milk for you people. And all the mosquitoes have been coming out. The cases have been flopping out all over. The earlier cases have also gone, for a toss. This case also has gone for a toss, just as mosquitoes go out for a toss. Likewise, as you said, that the reputation of the Mumbai police was in absolute shambles at that time. And it's taken quite some time, and I'm sure it's been resuscitated to a certain extent now with proper people at the helm of affairs. So the thing is that that is something which, and more so, see, I always do that somewhere or the other, the police will resuscitate itself. But what I was most aghast by and, shocked with and appalled with was the fact that the journalist spectre, the guild, or, your entire media space was absolutely silent on what was going on with you guys. That was the biggest shock for me, and it still doesn't sink in my brain that fraternity can get so jeopardized and so jaundiced with competition. And there is so much envy that people do not come out to protect even one of their own. Rivalries apart, we also have rivalries in our legal fraternity. But, when it comes to certain fundamentals, we lawyers will definitely back each other, because we know that at the end of the day, we still have a long time to fight our internal battles with each other. But when our fraternity as a whole is challenged, which was challenged when Arnab was going through, Republic was going through, and when Arnab was arrested, etc., and all those things, especially the fake TRP case, all of those things. So that time, the silence of the media was the biggest damper, in my opinion, and that is still the biggest shock. And Swapnil, on a lighter note, shameful. On a lighter note, I wanted to tell you that I am challenging you, and I can stick my neck out. Rhythm, are you there? Rhythm, are you there?
Okay, I don't have rhythm. But you know, Swapnil, I can challenge you that the same media will not cover this. I can challenge you. I can give it to you in writing. They wrote front page articles, Swapnil. These shameless people who we refer to as Latians wrote front page articles. They called Parambir Singh as a primetime guest on top of 9 p.m., on top of 8 p.m., on top of 7 p.m. I challenge you that they won't have the courage to put out a one-line article or a one-line tweet about this. And that's why we call them Latians for a reason. You know, Swapnil, they won't dare put one line of this anywhere. Yeah, I understand, Niranjan, but you know, it's still, when you look at the larger perspective, you know, rivalries apart, I believe you. I'm sure for the rest of the evening I will not see a single line across any of the channels. But this is something which hurts me, which pains me, because the journalism as a whole today, the press, the free press, is the fourth estate, is the fourth pillar of our democracy. And if there is only one channel which sticks its neck out for the truth primarily. I'm not saying that the others don't, but you know, the others are so envious of this Republic channel that they don't even mention some of these small victories. And you know, because this is a small victory in my opinion, because Republic was known to be victorious. So this is a very small victory. This was something which was expected. The bigger victory was when you got the validation from the people in terms of being number one all across since the time the Federer started. Those are bigger victories. Those are major victories. That is what matters ultimately, because the faith of the people is what brings the channel, you know, at the top of the, you know, the content, of course, but then the content which is being recognized by the people and the trust that is reposed today. Let me tell you something, Niranjan, that every single person that I talk to tells me that we watched you on Republic TV. It was enjoyable. You know, sometimes I feel like telling them, boss, even I come on other channels, but then I don't say anything to them because I know. I know that, look, this is what they are watching, and why should I dissuade them? You know, let them watch what they feel. It's free space, it's free will, and y'all have deserved that. So those are great victories, and even the silence today, I'm not surprised at all. And I think you should just let that slide and continue with the great work that y'all are doing. I'm sure there'll be a Republic Bangla Summit also at some point, and I'm sure that will also cover, you know, make big waves the way Republic English Summit has been making. And I think you all, you know, these I told Arnab a long time ago on national television, that all of these cases are absolutely gone. You should just put them behind you as, you know, those dark days. You know, just as we've had some dark days in the judiciary, you know, in our past history of 75 years, we've had some cases which have been absolutely dark days. Likewise, in days of journalism, journalistic history, this has never happened in the world where a free media channel was so terrorized or was so attempted to be terrorized that the attempt has failed so grossly, miserably, only because there were stalwarts like Arnab Goswami and his entire team comprising of all you people with him, standing tall and really sitting with him, standing beside him in the hours of crisis. That is what is the integrity of the channel. And we had you, salute to you people. No, Swapnil, we had people like you all along. We had people like you all along backing us up, and that's what gives us courage, Swapnil. So good to always speak to you, Swapnil, to have you as a friend of Republic. And I'll say that, a friend of Republic, and so grateful to you for all your support, Swapnil. I'll let you go at this point. We'll get you live on another story, because Swapnil is almost like a contributor at Republic TV. A friend. Let me go close to Kapil Sankla, another friend of Republic, joining us on the phone line. Kapil Sankla, a lawyer, a senior advocate of the Supreme Court. Swapnil, Parambir Singh's aide, a sidekick almost, had filed a petition against Republic, saying that we caused loss of reputation to him and the Mumbai police. What a shame. This person, who's a former police officer, a coward, who worked on behest of Parambir Singh, never turned up in court all these months, and that suit has been dismissed. A defamation suit has been dismissed. I mean, these shameless people thought they had political support, they could do what they want, get away with it, and such cowards didn't even turn up in court. Swap, can I get your response to that? Kapil and Deshatam Nigan also joining us, but Kapil, you first. Sir, congratulations. It's all to see the truth
this Paramveer Singh, a man guilty of so much corruption and illegal practices and taking law into his own hands. And when a channel like one decides to expose him and expose his criminal acts and activities and antecedents, under those circumstances, he thinks he can do by saying that it's not a defamation. No, Kapil, I have Kapil, stay with me because I also have Deshwata Nigam and KK Manan and thank you, all of you senior advocates. I still remember, and we're all at Republic TV. The entire newsroom is behind me, and we're so grateful for such moments. We really are grateful to our viewers and people like you, Kapil, people like Deshwata Nigam, people like Mr. KK Manan, who's also on the phone line. And all of you stood by us. All of you stood by us during our darkest hours when the press really was, going through a nightmare under people like Uddhav Thackeray, people like Nawab Malik, people like Anil Deshmukh. These same people who are in jail now, Nawab Malik and Anil Deshmukh are in jail. Their sidekick Sachin Vaze, who was one of the architects of this petition which has been dismissed, is in jail. 3 people are in jail. The architects against Republic are in jail. And then you have people like, Paramveer Singh who got away, but they won't go too far. But can I get your response to the Deshwata Nigam and then getting Mr. KK Manan as well? Deshwata Nigam, yes, petition against Republic dismissed. Yes, obviously, defamation case to succeed has to be based on truth and facts. However, the truth and facts were only being spoken by Republic at that point of time. And the entire operation, the underhand operation, extortion, everything was exposed by Republic TV. So any defamation, that will not be defamation, that would be investigative journalism. And through the entire process, it was genuine journalism that was put behind bars. So ultimately, this case had to be dismissed, and that person did not even have the gall or the guts or gumption to, continue that case also. He was not even going there, appearing also. He knew it was only a pressure ploy and tactic somehow to, again try to harm Republic TV. So ultimately, it was bound to be dismissed. It was all lies, fabrication, nothing else. And courts can see through. I mean, these people think that they can take courts for granted. No, they can't. And therefore, it was seen through and accordingly dismissed. That person himself knew it's a fabricated case. It's a false and lies. And therefore, he could not even pursue it properly. So, ultimately, the truth has won, and this is what strengthens Republic TV. And we all who participate in debates and take a stand. And take a stand, this also motivates and inspires us that our claims are vindicated at the end of the day. So, congratulations to Republic TV and keep it up. Thank you so much. Thank you so much. Deshwata Nigam means a lot when, people like you, advocates like you, stand by us. And let me go across to KK Manan. Mr. KK Manan, remember having Deshwata Nigam and you on so many debates when all of this was happening in Mumbai. On a lighter note, the newsroom behind me still faces that FIR. That FIR has not been quashed. When Paramveer Singh and his entire gang targeted journalists as young as 20, 21 years old, and some of them still have that FIR pending. We were made accused number 1, 2, 3, 4, 5, and that FIR remains. Charge sheet was never filed, investigation never happened. Obviously, it was to harass us. But one by one, the cases are falling like a pack of cards, Mr. Manan. Let me congratulate the viewers of Republic TV and congratulations to Republic TV, your staff. And if you remember that even at that time, I said crystal clear that this case will not stand in the eyes of law. It is a pressure tactics of this man who was indulged in corruption, who was indulging in rather he was now let him file a defamation against me. I will say the people like him, he was in fact robbers in a police dress, one can say. And today he has seen the room, he has seen the justice. Always will be with the truth, not with the people like him. So I will not elaborate much today because I have already elaborated and told at that time that Republic TV, if he was
taking or showing any story or any news, it was the true story. It was not the story which was fabricated or just manufactured by themselves, but it was the actual story which was being displayed by Republic TV. So truth has prevailed ultimately today, and I will say congratulations to the viewers as well as to the Republic TV, your staff, and to you as well. So thank you, Mr. Manan, and thank you, Mr. Deshwata Nigam. You know, I very fondly remember all the support that all of you gave. Many people, including our viewers, took to the streets in protest during those times, showing their solidarity. And so many people protested against Parambir Singh back then, holding placards in different parts of Mumbai. Some of them came outside the jail. Thousands of them were outside the jail when Arnab was released back then, after being arrested by this goon who was in uniform called Parambir Singh. This goon who faces cases against him. This goon called Parambir Singh, a disgraced IPS officer, suspended now, and his sidekick from back then, Sachin Vaze, is in jail. If anybody's reputation was tarnished, it was the Mumbai police's reputation, and that's because goons like Parambir Singh and alleged murderers like Sachin Vaze were in the police force back then under the MVA and the Uddhav government. What a shame. What a shame. All of those cases are collapsing. One of many such cases, and we'd like to thank all our viewers who stood by us all of these years. Thank you for being with us, ladies and gentlemen. I'm handing it back to you for now, Shivangi. This is we feel very emotional when we broadcast these stories, because, you know, we kept saying back then, and we continue to say it even today, that the truth always wins. They say Satyameva Jayate, and today is one such day when another case has collapsed, completely crumbled, and it means a lot to us, and we have nothing but gratitude for all our viewers. Back to you for now, Shivangi. Makes us stronger every day. Back to you for now. Well, thank you, Niranjan. And this news coming in, viewers, as Republic hosts the largest summit of the year. It's a big win for Republic. The suit against Republic dismissed after our plaintiff has failed to appear before court. And we will be continue to track the story as well. Big win for Republic. The suit against Republic is dismissed now. And we will continue to get you all the updates, including from India's biggest summit, from Agnipat to cinema to defense to education. India's biggest voices live at India's biggest summit, only on Republic. Women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal, Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal, Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सच सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया, और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by
by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. As a part of this Hyderabad Liberation Day, now we see that this bike rally all started from Bhagyalakshmi Temple in Charminar, and then it covered various parts in the city. Outside Bengal Assembly where the BJP workers they're staging a protest against Mamata government. जो सब सामने आ गया है सारे पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने, ये सरकार चोरी किया है माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में। 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने न सिर्फ इन 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया और गला दबाने के बाद और 2 लोगों को बुलाया गया। यानी कि किस तरह से पूरी साजिश रची गई उसके बारे में जो है कबूलनामा इन सभी अभियुक्तों ने जो है मान लिया है। Women's bike rally is being led by the Union Minister G. Kishan Reddy here in Hyderabad. Outside Bengal Assembly where the BJP workers are there staging a protest against Mamata government. 6 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्होंने ये बातें कबूली है कि उन्होंने 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि उनका गला भी दबाया। A massive bike rally, women's bike rally. Top headlines at this hour, viewers. Major victory for Republic. Court dismisses defamation suit and connected motions. ED news tightens in Liquorgate from Hyderabad to national capital. ED searches underway across 40+ locations. Liquorgate explodes in the dock for graft case. Aam Aadmi Party Minister Satyendra Jain now grilled by the ED. SCO को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। PM Modi in Samarkand, big bilaterals lined up. All eyes on the Modi-Putin meet. A proud moment for India, but Vadra Congress politics continues. Questions PM's photo. From Agnipath to cinema, India's biggest voices live at India's biggest summit, only on Republic. Will be the first organization to create a large global news organization, but with its heart and center in India. Big announcement by Arnab pledges India's largest media expansion and says that will create the biggest global news organization in the next 2 years. Viewers, big breaking news coming in at this point of time, viewers. Information coming in from Uzbekistan where PM Xi Jinping handshake has happened. Big moment there. No picture of that yet so far, viewers. But the Modi-Xi handshake has happened in Uzbekistan. And what we can also tell you is that this is the first Modi-Xi handshake there since Galwan. So this is very significant, viewers, where we can get you some more details on this story as it comes. We're getting you more details. What we can tell you is that the PM Xi Jinping handshake has happened,
And this is happening just after the Chinese president had congratulated India on assuming the presidency of the Shanghai Cooperation Organization for 2023. And he had said we will support India for its presidency next year. So this is a big statement which had come from President Xi. And what we can tell you so far is that the Modi-Xi Jinping handshake has happened. Now, we do not have a picture of that moment as of now, viewers. But we can tell you that this is a very, very big moment, because this is the first time that both the leaders have shook hands since Galwan. So this is making it a very, very significant moment. And this is what we're getting for you on Republic TV. Big breaking news coming in that the leaders of both the nations have shook hands on the sidelines of SCO Summit. Big news coming in at this point of time. All right, Srila Cholia is joining us on the phone line. Thank you for joining us here. This is a big moment coming in, and we have, in fact, were waiting that these two leaders would be meeting on the sidelines of the SCO Summit, and it seems like it has happened. We don't have a picture of this yet, but could you please explain to us that why this is a very, very significant move which has happened at the SCO Summit? Well, first of all, it's not a sit-down, it's a handshake, and there was a lot of speculation whether they will actually have a sit-down and a proper bilateral meeting. It's interesting that Prime Ministers met the Russian president and the host president of Uzbekistan, but not the Chinese president. And I think we are clearly signaling that things cannot be absolutely normal between us until and unless the Chinese restore the status quo ante of April 2020 as far as the Aksai-Chin Eastern Ladakh border goes. So we have pushed them back from 3 points now, but there's still one more outstanding one, which is Lepsang. And I think Prime Minister is very, very clear that we will not compromise on these issues and we are not going to yield 1 inch. So I think the Chinese wanted us to have so-called move on or move forward without this being settled, but we have been very firm. And probably the Chinese were looking for a bilateral sit-down, and we have not really committed, or at least not announced it in advance, just so that the Chinese know that there is outstanding business and it cannot be things as usual. But nonetheless, the Chinese model is based on top-down decision-making on national security and foreign policy. So if Xi Jinping if he even makes a gesture to his commanders and to the PLA to step back and to accommodate, then it can happen. So we must not give up the idea of